Welcome back, ladies and gentlemen. GGNation presents the Challenger Series. We are currently on the final day of playoffs. The first 2 days were amazing. First day, sheer domination coming in from Gravik Stickers. Second day, going with a completely unturned of events. And third day, I'm your Kastelika FTW, and with me joining on the desk is gonna be Bullet. And Bullet, how are you feeling today about the last final day of the playoffs? Well, thank you so much for the warm welcome. I'm pretty excited. I'm not gonna lie, the way the teams have really played in the first day and the second day itself, that's really comprehensive. Coming back to some of the teams which have really marked up in our minds their names, that definitely gonna be one of the names. That's gonna be Gravex Diggers. जिन्होंने मतलब almost on the first day itself they crossed the 100 mark. On the second day have already crossed 200 mark table. So it's kind of hard for some of the teams to catch them up. But as we all know, as the teams and the players already know that uh, only the 8 teams, so the top 8 teams, gonna go and qualify for the invitational series that's gonna happen later, probably sometime later. So of course we're gonna take a look at the overall scoreboard for the 2 days, and of course they are on the screens. And going from the 16th position to ninth, we have Team X Solo standing at the 9th position with position points of 44, 17 finishes, and total points of 61. Looking at the teams like from 9th position to 16th position, these are some of the teams, to be really honest and to be really frank, they are some of the teams जो fights नहीं ले पा रहे हैं. वो free frags basically इनको मिल रहे हैं. The players who are surviving duo, the players who are surviving solo, drop clash में जो कहीं ना कहीं Yes. फंस जा रहे हैं, जो उनके surviving प्लस बस चाहिए, उनके कहीं ना कहीं उनके सिर्फ और सिर्फ kills निकाल पा रहे हैं. तो ये चीज उनको ध्यान में Mm-hmm. रखना पड़ेगा कि आज इनके आखिरी 5 मैप्स होने वाले हैं. If they want to get in the qualifying top 8, they have to really show some kind of Yep. remarkable gameplay coming into the last 5 maps. Yes, I mean we saw the bottom 8 teams coming in, but look at the top 8 teams. Nothing changed. Gravik Sticker on top, but Team Sad has been pushed down to 4th position compared to yesterday's performance. They pretty much lagged on points, but the points difference isn't much between second, third, especially third and fourth position, 118, 112. But look at the draft. Look at the difference coming in from 4th and 5th position. Team Sad on 112, Skull on 82 points. Yep. But Gravik Stickers, third day, they're still putting out a one-sided performance, 205 points, and they've hit the mark of 100 finishes. Now, that is what I was talking about. Marvelous performance coming in from them. लाइक दिमाग में एक जो नाम है उन्होंने सेट करके रख दिया. अगर मैं कुछ प्लेयर्स की बात करूँ, कल जो बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखा रहे थे, वन वाज श्योरली फ्रॉम द साइड ऑफ टीम एक्स सोलो, आकाश गौड़ा, जो काफ़ी अच्छे इनिशियल्स आगे जाके फिनिश निकाल पा रहे थे, नॉक निकाल पा रहे थे. उसके बाद कहीं ना कहीं फिनिश ऑफ उनको देखने को उनकी तरफ से मिल रहा था. कुछ टीम्स लाइक कमिंग इनसाइड फ्रॉम द टीम सैड एंड स्कल, बेसिकली इनिशियल एग्रेशन काफी अच्छा है, बट आगे चल के जब वो फाइट में कमिट कर जा रहे हैं, तो उसके बाद उनका कोई अगर एक बंदा डाउन हो जा रहा है, नॉक हो जा रहा है, तो उसके बाद कम बैक नहीं कर पा रहे उस पर्टिकुलर फाइट में. तो दे हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. कमिंग इन फॉर द साइड ऑफ गॉड ऑफ वॉट एंड टीम फ्लॉसी, 2 बार इनकी फाइट्स हुई थी रैंगल पे प्रीवियसली. कल के अगर हम बात करें तो दोनों बार कहीं ना कहीं लगातार जीती थी टीम फ्लॉसी. तो गॉड ऑफ वॉट को, टीम सेट को, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इवन दे आर ट्राइंग टू टेक ऑन द फाइट, जब इंटेल पता उनको लग जाता है एक भी नॉक मिलने के बाद कि ये कौन सी पर्टिकुलर टीम है, अगर आप नहीं कमिट करना चाहते, आप देख रहे हो कि हाँ आपसे इस पर्टिकुलर टीम से फाइट नहीं जीत पा रहे हो, तो देयर इज नो कोई गलत बात नहीं कि आप उस फाइट से आप पीछे हटो. एक स्ट्रैट होता है, आप अपने डिफेंसेस वापस से कहने के लॉकिंग करना चाहोगे, आप पीछे हटोगे, विल ट्राई टू कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर लेटर ऑन द मैप. बट एक चीज जो कहीं ना कहीं हमने नोटिस की इन द बोथ ऑफ द मैप, कि जोन जो पहला हमारा बन रहा है, पहला सेफ सर्कल बन रहा है, वो काफी ज्यादा हार्ड शिफ्ट ले रहा है, probably towards the side of northeastern side, probably towards the southwestern sides coming in. कब कौन से मैप्स होने वाले हैं, it's going to be pretty clear. It's going to be the Irangal Marbar for the for 5 times. We're going to play the best of 5 format. And what do you, Elika? Yes, I think we've already finished 10 maps entirely compared to yesterday and day before yesterday, and today we are in the last 5 maps. Of course, we've got Irangal Mirabal, and it's gonna be pretty interesting because it's the same maps reputation, which means teams have much leverage to actually work more on these maps, work more on these rotations. If it was 4 different maps, then they would have, they would want to work on every map differently. But since it's Erangel and Miramar, it saves time for them and they can build up on a lot of stats. Compared to yesterday's gameplays, as you were saying, I think Team Sad and Vortex team, a lot of teams who carried
till the very end for their team. Like, there were last two players standing down, last one player standing down. They were still fighting till the last minute. I think Yeah, hopefully this yeah. time we don't see the entire squad breaking up, but instead all the four squad will be playing till the very last circle. And the man advantage when it comes to the last circle, the team with more players have better advantage and better chance to get the chicken dinner in my terms. Yeah, of course, the man advantage is surely over there, but we're gonna take a look at the point system. It's gonna be really clear the universal rule की जहाँ पे जो पहली टीम आएगी उनको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, जो सेकंड पे एलिमिनेट होंगी, जो सेकंड आएगी पोजीशन पे उनको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, थर्ड आने पे यू गेट अवे विद 10 पॉइंट्स, फोर्थ पे यू गेट 8 पॉइंट्स, फिफ्थ पे 6 पॉइंट्स, सिक्स्थ आने पे 4 पॉइंट्स, सेवंथ आने पे 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आप 8वें पायदान से 12 तक आते हो, you'll get eventually 1 सिंगल पॉइंट, बट आप 13 से 16वें पायदान पे स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो जाते हो तो शून्य आप अपने अकाउंट से टैली में लेके जाओगे। जो सबसे मेन बात रही है सारी ही टीम्स की, खासकर जो टॉप 4 की हमें टीम्स देखने को मिली है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं टॉप 4 में बने हुए हैं, दैट्स अबाउट द किल पॉइंट। हर एक फिनिश का आपको 1 किल पॉइंट मिलने वाला है। तो प्लीज मैं स्टार्टिंग किया जब मैंने 2 मैप्स कल देखे थे तो आई वाज प्रीटी इन द फेवर ऑफ बैलेंसिंग इट आउट, कि हाँ आपके पास पॉइंट्स टेबल भी आप बैलेंस आउट करके रखो है ना, आप फिनिश ऑफ को भी कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करके रखो। बट जब मैं तीसरे मैप पे गया, आई सॉ दोज एग्रेसिव प्लेज गोइंग रियली वेल। आई एम कंप्लीट इन द फेवर ऑफ ओके, अगर आपको आपके पास आप आगे जाके किल्स निकाल पा रहे हो, आपके लिए वो एग्रेसिव प्लेज आपके लिए सही साबित हो रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं, तो जस्ट गो अवे विद इट, यूज दैट काइंड ऑफ स्टार्ट, यूज दैट एग्रेसिव नेचर इन योर गेम प्ले एंड जस्ट kill them all. Yes, I definitely do agree with that, and I just can't wait for the first match of the day to begin, the map of Erangel. And today, it can't be much different because the difference between 8th and ninth position is just 2 to 3 points. So I guess if Yeah, bottom teams, they definitely have a chance to make it to the top 8. They have 5 maps. They can get they can concentrate more on finishes, more on the position points. But yeah, beating Gravix Stickers would be a big deal for them. But I guess apart from that, making it to the top 8, that is definitely possible. Seems like it. The difference between 8th and ninth position isn't much, even including the fact that ninth and 10th position. So even if you are yeah. in 10th or 11th position, you still have a good chance. If you concentrate a little more on the rotations, I guess it's gonna be easy for you guys. Yeah, we are seeing some many like the usual generic rotation that we see in the common rank plays. Like guys, you have to like really work hard. You're playing in a competitive lobby. You have to like try to cut off those generic rotations. कि हाँ अगर मैं probably कोचिंग पे जा रहा हूँ तो मैं या तो मॉन्ट्स नुआ नहीं जाने के बजाय या तो मैं लॉ बिल्दिया नहीं जाने के बजाय मैं सीधा कहीं ना कहीं एल्पोजो जाने की कोशिश करूँ. You have to get on that थोड़ा सा अलग तरह का आपको गेम प्ले दिखाना पड़ेगा if you want to get in the top 8. Coming in for you were talking about the kill points. Yes, I completely agree. बैलेंस Mm, रहे तो भी बढ़िया है, बैलेंस नहीं भी रहे तब भी बढ़िया है, क्योंकि जब आप फिनिश निकाल पा रहे हो, आपके पास स्किल पॉइंट सिक्योर हो पा रहे हैं, आपके लिए वो एग्रेसिव नेचर कहीं ना कहीं काम कर रहा है, तो हाँ आप उस चीज को भी यूज कर सकते हो. बट कल की अगर हम बात करें तो चिराग ओपी का जो 1v3 का कलच था, दैट वाज totally in the favor of Chirag, because two of the same guys pushed on the same staircase, same particular angle, and both got knocked away pretty easily from the hands of Chirag. तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप एक एंगल से blindly rush करोगे किसी एक प्लेयर पे तो that's not gonna work. Even the man advantage is not gonna work yes. that way. So you have to focus on have to imply कि when there's a single guy remaining, आप उसको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि चिराग के हाथ में अगर मैं गलत नहीं तो एक LMG थी जिसका थोड़ा सा स्प्रे थोड़ा ज्यादा horizontally थोड़ा whiff हो रहा था, to be frank, to be really honest. He landed those last shots in that magazine. That was a headshot and that resulted into a 1v3 clutch. हाँ, जो तीसरा बंदा उन्होंने मारा था वो थोड़ा सा एक स्टाइलिश में था कि एकदम रूफटॉप से जंप लगाया एंड स्टेयर से सॉरी जंप लगाया और वो फिनिश ऑफ किया. तो ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी. इवन यू आर इन द फर्स्ट सर्कल, इवन यू आर इन द सेकंड सर्कल, सॉरी द लास्ट सर्कल, आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते अपने अपोनेंट्स को. दीज आर द द सेम काइंड ऑफ लाइक द टीम्स व्हिच आर प्लेइंग. दिस इज नॉट द प्रोफेशनल टीम्स, आर द कॉलेज स्टूडेंट टीम्स. तो थोड़ा बहुत स्किल डिफरेंस है, उतना बड़ा गैप नहीं है. सबसे बड़ा गैप अगर हम स्कोर कार्ड की वजह से ही देखें तो ग्रेवेक्स जिगर का है. 200 पॉइंट्स ओवरऑल उन्होंने ऑलरेडी सिक्योर कर लिए हैं. दूसरी टीम्स के पास चांस है, क्योंकि कल ग्रेवेक्स जिगर्स की टीम ने कुछ खास नहीं खेले थे पहले 2 मैप पे. तीसरे मैप पे उन्होंने चिकन डिनर निकाला था. तो आज भी अगर वैसा एक पैटर्न बन जाता है कि कुछ 2 मैप से लूज आउट कर जाती है ग्रेवेक्स जिगर विदाउट गेटिंग दोस good amount of kill points, so maybe other teams have that time to make a comeback in the overall scoreboard. Yes, I definitely do that. Teams can make a comeback, but not maybe in the top position, but definitely in the top 8. Definitely in the Gravix top. Stickers do Yeah. not, yeah, definitely in the top 8.
And 205 points. I want to speak about Gravix Stickers a little more, like why the entire game is in then their favor. I think they're smart enough to play it control. As I told you previously, they're not only Yeah, concentrating more on position points, they're yeah, playing it like a storyline. When you get down in the yeah. map, you concentrate on the kills. But when you come to an end, very end, like in the last fifth, sixth circle, you concentrate more on the position. And I think that is one reason why Gravix Tigers is, separate from other teams and unique from other teams, and one of the reasons why they have much better points than anybody. And they feel like, I feel like they're a separate entity. They do not want to initiate fights or take fights. They have this standard of their that they only keep concentrating on the rotations and circle rather than go initiate a third party fight, because they know third parties can easily be formed once you start hearing the gun sounds and you can see the rotations clearly through the vehicles happening. Although that's one thing that players should mostly avoid, taking fights on vehicles. That is one big thing that is getting ignored in the entire game right now. And the meta has eventually changed. Now we are using more of rifles, which is to my surprise actually very, very good. Previously I saw grenades coming into the play, snipers coming into the play. Although I would appreciate more and more snipers, it just makes the game more easier and fun. And speaking that way, we are ready for the first map of the day and total map number 11 in the playoffs. That is going to be map of Erangel. We are looking at Gravik stickers. Speak of the devil. Here they are. Speak of the devil, we are able to see the observing the first place right now. Katil, Roy Godley, Paraboy, even SXK, they're pretty like इनका coordination में top level का हमें देखने को मिल रहा है. Split करते कुछ कुछ point पे कुछ fights पे हमने fourth number map और third number map पे देखा था. Both of the angle मैंने mark respectively map पे कि split करते हुए खेलते हुए नजर आ रहे थे. But कोई भी fight इन्होंने single handedly होते हुए split करते हुए नहीं किया था कि हाँ single handedly कोई अगर बंदा चला गया solo चला गया किसी पे rush कर दिया और वहां पे जाके knock हो गया. ये चीज देखने को नहीं मिली. तो that tells a lot about the overall team coordination. That tells a lot about how much of these guys are disciplined when it comes to this BGMI game. कि आप अगर किसी पे पुश कर रहे हो तो आप एक यूनिट बन के पुश कर रहे हो, आप नहीं पुश कर रहे हो, आप किसी पे कहीं ना कहीं फाइट नहीं लेना चाहते तो यू आर जस्ट इवेंचुअली टेकिंग द राइट कॉल. एंड वी हैव वेरी लाइक काफी जल्दी पहला सर्कल हमारे सामने बनते हुए नजर आया. स्कूल से एज पे आया है, रून्स भी है हमारे अंदर. कत का द वेरी द क्रूशियल प्लेस जहाँ पे काफी फाइट्स हमें देखने को मिलते हैं इन द प्रोफेशनल इन द अदर टूर्नामेंट्स, वहां पे Mm. शायद से एक टीम Yep. में जाते हुए देखने को Mm-hmm. मिल रही है लिखा. Yeah. And to my surprise, the circle has actually taken place over towards the southern western side, excluding George Pool, but including a little bit of Pochinki over there. So I think players should have the leverage, but most of the players seem to be right, seem to be in the right place. They are currently जी. they're currently over towards the northwest, I mean, southwestern side, and I guess most of the teams are, none of them are out of the circle, at least not very far. And the plane path was also pretty much in the favor of Pochinki and the southern side. And let me buy Ping, and he does not have any weapons, he's out in the open, and so is his team. They should have taken a drop, but Skull gets spotted out, Skull Hunter gets knocked, but don't worry, his teammates are ready to res him up, but unfortunately, that was too late. Jodawat already takes one of the players from Skull down, Yep. which means they already have one finish and one nail to the coffin from Team of Skull. या कल भी अगर हम इनके गेम प्ले की बात करें एल्का तो काफी बेहतरीन रहा था. अभी थोड़ी सी मैं बोलूंगा चूक हो गई कि साथ में नहीं ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया. आप साथ में कहना कि ग्रुप अप करके नहीं रहे, उसका ये मैं बोलूंगा एक गलती है, छोटी सी गलती की वजह से आप 3 मैन हो चुके हो इन वेरी अर्ली इन द गेम. टू बी प्रीटी ऑनेस्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रिंस गॉड हो क्या की टीम की, दैट्स गोइंग टू बी द टीम ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स गोइंग टू बी द टीम ऑफ गॉड ऑफ व्हाट. तो यप, थोड़ा सा लाइक एक अच्छा इनको एडवांटेज मिल गया है, एक किल पॉइंट जरूर मिल गया है. बट इसी चीज को अगर वो आगे चल के बेहतरीन तरीके से इसी मोमेंटम पे रख पाए अपने आप को, ज्यादा बेटर रहेगा. तो लेगा M4A1 का व्हीकल के ऊपर ज्यादा कुछ डैमेज नहीं देगा ईगल को. जॉबॉट में भी उस व्हीकल का प्रयोग करके, उस बाइक का प्रयोग करके शायद से जाना चाहे, शायद से पुश ऑन करना चाहे, वो चीज हमें देखने को मिल रही है. प्रॉब्लम ये होने वाली है उस प्लेयर के लिए, पर्टिकुलर पोजीशन के प्लेयर के लिए, कि आप वहां पे थोड़े से अकेले हो, कट ऑफ अपने टीम से. इट्स बेटर कि यू जस्ट गो विथ योर टीम rather than going in some other direction. Yes. Well, most of the teams are definitely sticking together, but a rough start for Team Skull. I think hopefully, they'll be able to recover the damage, recover the sacrifice that they've given, to get a couple of kills on one of the teams. And it seems like team Yeah. number 18 is going over towards school, and definitely not a good idea if you ask. Maybe we've already seen
Well, we've already seen few of the enemies going around, but it's just a regroup of teammates, which Yeah. should be good enough for them. And look at I mean, team number 14. They're standing very closely towards one of the teams. Yeah, they are. I don't know which player it is, but he's alone currently between two players of team number 14, and the slightest noise can actually be the biggest danger for him. Oh, that's Kerala Vasi, by the way. Yep, here he is. Yep, Kerala वासी he had like अकेले इतना अलग अपने टीम से रहना. That's also when you have like only three players dropping down into this particular map. थोड़ा सा गलत हो सकता है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा गलत हो सकता है. एक भी शॉट ऑफ फायर करोगे साउंड क्यों मिल जाएगा अदर टीम को, एंड दे कैन जस्ट डेफिनेटली चार्ज ऑन टू योर पोजीशन. Yes. Soul Spencer looks like he's having good time taking the loot out, but Kerala Vasi, he definitely seems very scared. One wrong mistake, like he can't even rotate, neither can he attack since it's a 1v2 situation, and it would be, of course, Yeah. really not in his favor. Soul Spencer speaking out, maybe this is a chance Kerala Vasi can take a shot, and he definitely will isolate the enemy and get the enemy. One of the beautiful strategies said by a wise man. One knock has Yeah. been finished. Now he's looking for the other rabbit to come out of the hole. But I'm not sure if the other rabbit is gonna peek because it's Prince God or yeah, but he will get spotted out. The spree won't be good enough. Prince does take a little damage. It's gonna fall back in the opposite house, but Vasi clearly knows where he is. Will the nade do him any good? Is my question. He's definitely running out of bullets in one reason though. A perfect nade, but I don't think it's gonna do any damage. Yeah, it's But it gonna get knocks Prince Godokya, and that means 1v2 coming in from Kerala lovely Vasi without grenade. any backup, all by himself. Yeah, that was a lovely grenade over there, Tanvi. Like he took his Yeah. time to cook that up, and definitely Devil God OP has committed to his backup. थोड़ा सा देर आए हैं बट दुरुस्त है. यहाँ पे आगे बढ़ेंगे. एक बंदा गॉड ओपी को नॉक कर दिया जाएगा. स्प्रे लगेगा. केरावासी थोड़ा सा डैमेज लेंगे उस तरफ से. ओपी डेविल गॉड ओपी को अपन शॉक करते हुए नजर आएंगे. केरावासी इज डाउन अलोन इन दिस एरिया एंड वो भी कहने के नॉक हो जाएंगे. जॉडा वॉच के हाथ में गॉड है. तुषार लेट आए, वापस हमने देर आए, दुरुस्त आए, बट वो चीज एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी. तुषार इज गोना बी द लोन सर्वाइवर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड बीस टोपी को एग्जैक्टली उनका पोजीशन तो नहीं पता है, बट साउंड की वजह से प्री फायर जरूर दे रहे हैं. दोनों कमी ज्यादा केमिस्ट्री पर पड़े हुए हैं, बट एक बढ़िया स्प्रे तुषार की तरफ से. ही गेट्स नॉक्ड आउट एंड देखते ही देखते इफ आई एम नॉट रॉन्ग दो बंदों को इन्होंने फिनिश ऑफ किया है. बट प्रॉब्लम ये होने वाली कि दो बंदे अभी भी और बाकी हैं दूसरे टीम के, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर प्रिंस और गॉड क्या जॉर्ड अवॉर्ड ये दोनों अगर आप पे पुश करते हैं तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाले हो. क्या आप 1v4 कर पाते हो इस ऐसे सिचुएशन में? बट आई डोंट थिंक सो ही कैन डू बिकॉज फिनिश ऑफ ऑलरेडी हो Yeah. जाएंगे मोलोटॉव के द्वारा. Mm-hmm. एंड एक और साइड पे हमें देख सकते हैं टीम नंबर 50 गोइंग अप अगेंस्ट टीम नंबर 6 एंड डेफिनेटली दैट्स गोना बी आरओजी की टीम जिनके Ouch. बदमाश हो चुके हैं इन अ वेरी ओपन प्लेस नॉक. Yeah, that was a rough start, I should say. But for Team ROG, I think they're gonna get Badmash back on his feet. Although, on the other hand, Phantom is trying to gatekeep the front porch. There you go. Badmash is down to very little HP, but he'll be getting back on feet with the help of Phantom. The opponents are a little far away, so there shouldn't be any problem. But the zone is coming down now. That is a problem. Badmash barely has any HP left in his body. Yep. He has to get the heal done, but gets knocked again. That goes down this Oh, time. Both of them going down SRZ Esports. That is Sparky making it all happen right now. Both of them are knocked. Nothing much to do, I think. The confirmation will be coming in shortly, but Sparky from the other hand will be getting knocked by 4v Cop. The legends are back. The backup is coming in for ROG. Phantom is back on his feet. He'll also be reviving Badmash shortly, I believe. And 4-Cop is trying to gatekeep for his teammates. Badmash goes down, unfortunately, but 4v Cop puts an end to Sudhit. Spider immediately taking the trade off. I think I really love the fight which is happening right now, but the only disadvantage is that they are fighting outside the zone the zone. in Yep. the damage Yep. circle. Yep. Yeah, outside the zone. Yep. So which is definitely gonna put them to a disadvantage that their HP cannot be controlled by them. But if it keeps going on, it's gonna get tougher for them to eventually survive and walk into the circle. So they have to take a move right now. It's either the circle or either the fight. Do you want the finishes or the placement position points? I think they should definitely go for the position points because at this point they've already lost two players. They cannot take the leverage of losing more and more players. But yet, Phobicop is going to do the same thing. He's going to stay inside the circle. He's going to wait till what is he waiting for, is my question.
I don't know. Maybe there's some kind of miscommunication going between Nova and Fovikov. Fovikov जहाँ पे अकेले भी बैठे हुए हैं, उस तरफ दूसरे उनके जो बंदे हैं वो ऑलरेडी व्हीकल निकल निकल चुके हैं सेफ जोन की तरफ में। इधर बीटीएस की टीम भी वही कहीं ना कहीं चीज अपना चाहिए, बगी का प्रयोग किया गया है। मेडकिट सही अमाउंट पे देखा जाए तो टीम मेट यहाँ पे 6 के पास है, जो कि होना चाहिए था Fovikov के टीममेट्स के पास, बट दैट्स द अपोजिट काइंड ऑफ स्टोरी व्हिच वी आर सेइंग। बात करें यहाँ पे दूसरी तरफ की, तो यहाँ पे स्कल, डेविल फ्लैंक, ईच सीगल, तीनों तीन बंदे इनिशियली उन्होंने एक बंदा खोया स्टार्टिंग में, ड्रॉप क्लैश तो नहीं कहना चाहूंगा, एक बंदा अलग की तरफ ड्रॉप कर लिया था, उसकी वजह से लोन आप अकेले वहां पे पड़े हुए थे, कोई टीम आपको आई जस्ट आपको पिक करके चली गई, तो अब आप 3 मैन कहीं ना कहीं कंटिन्यू करने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे रिवाइवल दे दिया गया है, रियली मिस दिस आउट तनवी, स्पार्की सॉरी स्पाइडर को यहाँ पे रिवाइवल दे दिया गया है, पुण्य, स्पार्की, स्पाइडर, तीनों अब एक ऐसा यूनिट बन के कहने के खेलना चाहेंगे साथ में। उनको ही पता है कि हम 3v4 फाइट नहीं ले सकते किसी और टीम से, सो इट्स बेटर टू गेट इन द सेफ जोन rather than getting in the water. I don't know what they just did right now. Hmm. Well, it definitely seems like that is not the way. And there you go. I mean, they shouldn't have really, held back so much time for Fovicop. Eventually, their team ran away, but it looks like Spider is in a huge trouble, but they'll be getting on the other side of the river eventually. Only vehicle can carry 2 players, so Spider has to use the feet right now, and he barely has any HP left. If I was in this situation, I would ask Punya to actually come by food because he has better HP. That should definitely work for them, but it's okay. I think the decision was taken too quick. DS team Blackout, they're currently camping at bridge. Not a bad idea, I would say. If you want more finishes, if you want more kills, and if you know that the circle's eventually gonna make everybody rotate through that bridge, it's a very good option to invest in. Although we still have 40 seconds before the next circle closes in, and Yep. just a few minutes into the game, barely like I think 10 minutes, and we are already down to 11 teams. डेफिनेटली लाइक इनिशियल फाइट जो भी हमें देखने को मिला वहाँ पे डेफिनेटली सक्सेसफुल रही है जो टीम वहाँ पे इनिशियल फाइट के लिए गई है। एक और हमें नॉक देखने को मिल रहा है टीम अदर टीम की तरफ से, आकाश गोरा की टीम, दैट्स गोना बी नन अदर देन टीम एक्स सोलो येट अगेन गोइंग फॉर 2v4 फाइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट इस तरफ हम अगेन देखें तो अभी भी हील बैटल चालू है टीम नंबर 6 का, बीटीएस एक्स स्पाइडर का, टू बी स्पेसिफिक इट्स गोना बी द टीम ऑफ डागोल। इस स्टार्टेशन आकाश गोरा को नॉक कर देंगे। ओके, अब वन ऑफ द मेन की प्लेयर्स मैं बोलूं टीम एक्स सोलो की तरफ से डाउन हो चुके, नॉक हो चुके हैं, तो अब किस तरह से फाइट ऑन लेते हुए नजर आएंगे टीम एक्स सोलो, वो एक बड़ा सवाल बनते हुए नजर आता है। विक्ट्री एलिश अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा हो गए हैं, जिंदा बचे हैं, एंड उस तरफ अगर देखा जाए तो हैक की टीम अभी भी जिंदा है, दैट्स गोना बी द टीम ऑफ प्रेडेटर्स टू बी स्पेसिफिक। अब यहाँ पे 3 टीम्स एक वॉर ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है, बट टीम शैड ईशान 2 कंफर्म किल्स निकाल लेंगे और बेसिकली उन्होंने एक पर्टिकुलर टीम को एलिमिनेट कर दिया है। आकाश गोदा भी नॉक पड़े हुए, देखना चाहूंगा कि उनके एक और प्लेयर कहाँ पे इस वक्त, क्योंकि ही इज जस्ट स्टिल डाउन, ही इज ब्लीडिंग आउट, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक प्लेयर अभी भी इनका बाकी है, बट मैप के किस पॉइंट पे है वो हमें बेसिकली नहीं पता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Hmm. Well, Team Sarishan, 2 finishes not bad to begin with. Is a team actually a team of three, or one of the players disconnected? I don't know. Even yesterday, have you noticed, Bullet? There were only 3 players coming in from Team SAR. And They which were also four creates a in, huge impact on their yeah. performance, from second position to down to fourth position. They were 4 yesterday, if I'm not wrong, in the first 2 maps. After Mm-hmm. they went, like, there were 3 guys probably. But yeah, there's the confirmation from the play zone. Akash Goda has been knocked out, finished off from the play zone. बात करें आईएनडी दानव की तो yep, he has that M4A1 स्कोप भी बड़ा बेहतरीन लगा रखा है इन्होंने। He has the intel particularly कि at that house there's a team, but he's not able to get that specific angle. Definitely अगर angle expose करते equity beast अपना तो शायद से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डैमेज लेते हुए नजर आएंगे दानव के साइड से। Yes. Well, Team Andy Danav only has him and his teammate. It's gonna be a deadly to your performance. But do you think they can survive through an entire, whole squad? If eventually, even if they end up in a fight, it's gonna be a 2v4, which can be quite risky for them. And currently, they're standing very nearby the enemies. They've got dangerous neighbors. And especially, they've got grave extickers who are one of the best fraggers, I should say, in this game currently. And they do hold a very good position. Yep. 100 finishes, man. The second highest finishes was barely like 670, I guess. Yeah, barely 70 70, finishes. yeah. The second highest is a difference of 20.
finishes. It just tells me like they are the better side, they are just the better side Yeah, when it yeah. comes to the overall gameplay. Final zone, I must say, not the final zone, one of the like second, a third zone, actually we are saying is gonna go towards the side of Query and Primosk, and we are able to see कि Grave Diggers की team already यहाँ पर position बना चुकी है. That's what I was talking Mm-hmm. about. This team knows how to rotate. This team knows how to work as a unit. Yes. This team knows how to take fights. So they are definitely the better side. Yeah. Mm-hmm. जिस भी टीम से फाइट लेने जा रहे हैं उनको एलिमिनेट करें. They get the Mm-hmm. finish off. They go into the center of the zone. I have seen in many of the maps I have casted कि जरूर ज्यादा ये नहीं होता है इंपॉर्टेंट, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है सेंटर ऑफ द जोन जाने का. उसके बाद आप किस तरह से फाइट बनाते हो, किस तरह से अपना एरिया होल्ड अप करके रखते हो, डिफेंड करते हो, वो काफी ज्यादा मैटर करता है. क्योंकि जब सेंटर ऑफ द मैप चले जाते हो, यू आर एक्सपोज फ्रॉम ऑल 6, 7, 12 जितने भी Yes. साइड्स बोलना है वहां पे बोल दे सकते हैं. पर प्रॉब्लम थोड़ी सी ये होने वाली है अगेन फ्रॉम द साइड ऑफ टीम दानव. बात करें स्पेसिफिकली फायर ब्लेडर्स की, यू आर टू मैन. मैं अगर इस पोजीशन में होऊंगा एलिका, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यू विल बी आल्सो एग्रीइंग एट दिस पॉइंट कि आई वोंट टेक अ फाइट विद अ 4 man squad. I will must take wait for Yep. that opportunity to grab on those downed opponents. कि आप जहाँ पे कोई बंदा आपको डाउन मिल रहा है आप उसको kill basically steal those kills and get in their account. And if you ask me, I would definitely use the start like how Kerala Vasi used, isolate every player and then get the knocks. If it worked for him, it can work for anyone. You just have to have half the firepower that the opponent team has. And currently, their team had like 2 players, but now I think they are taking a fight against some different team. Team Skull, who already lost one of their player that was Hunter through the journey. Now they Yep. are currently down with Flank. Flank also will be coming back on feet, I believe. Eagle, on the other hand, is trying to fight. Ouch, that is a lot of damage. But fighting off against someone like GT is also a big deal. Their position is revealed. They cannot peek and rotate. Even the smokes aren't gonna be lasting long. It's just 1 second until somebody Oh, else shows up, somebody else rotates, and there you go. It's the beast party. All of them, one after the other, walking into the crosses of Cartel. Zero finishes so far for JD, but after this fight, I believe they'll at least have one finish to their name. At least, I feel like it though. The range difference is also way far. They need long range guns in order to, even take Team Skull down. one thing Skull is definitely doing wrong right now. They're trying to rotate toward the left hand side and the right hand side. East of it, that's not the way. When you Yeah. put a smoke, it goes on horizontally. The area, the much of the wider space it covers up. You have to go the 90 degree beyond it. आप opposite side उसके जाइएगा तो आपको teams उतना specifically नहीं spot कर पाएगी rather than going towards the left hand side or the right hand side. सो जब आप स्मोक डाल रहे हो तो आप जस्ट उसके पीछे जाते हो. यू डोंट ट्राई टू लाइक कि आपके पास व्हीकल भी है, चाहे कुछ भी हो. इवन इफ यू आर डाउन टू योर बेयर फुट, यू आर रनिंग अवे, यू आर स्प्रिंटिंग अवे, यू शुड मस्ट गो टुवर्ड द अपोजिट 90 डिग्री ऑफ दैट एंगल. आप दूसरी तरफ जाना चाहोगे ईस्ट और वेस्ट, तो डेफिनेटली यू विल गेट स्पॉटेड, यू विल गेट आउट ऑफ द स्मोक एरिया एंड डेफिनेटली स्पॉट कर दिए जाओगे. सो दैट्स वन थिंग आई नोटिस्ड. Yeah. Well, on the other hand, RG just started a fight against Team ORG, if I'm not wrong, and I really love the way how Team RG, back themselves all the way from the zone, from outside the circle, and currently they're in the zone and in the circle. Yep. Beautiful setback, I should say. They've brought Badmash and Phantom on the way. They're fighting against SRZ, if I'm not wrong, when SRZ Spider and the team previously. Yeah. Hopefully even they made their way out of the circle. And ooh, look at this clash coming in through. They just threw Oh, onto the faces of enemies. Gubba trying to get some knocks, but I guess one of them is already knocked. That is Beast. Wiping Hyena will he go down in the first place is my question, because he's one of the most important players that his team needs. And it's just not one team, maybe more than 2 teams clashing out right now. We've also got Roy Godley's team a little far, and DS watching out for team number 4. So it's DS and Gravix Stickers, both of them rooting on towards Viping Hyena team. like भाई पिंगा is one of the key players when it comes down to this particular team. IGL की टीम, पार्थ की टीम जो कहना कि यहाँ पे होने वाली है. If I'm not wrong, it's going to be the set of team Furious to be specific. एंड प्रॉब्लम ये होने वाली कि डीएस ब्लैकआउट यहाँ पे अकेले पुश कर रहे हैं. पीछे भी थोड़ा सा डैमेज दिया. रॉय गॉडली जो ग्रेव एक्सिवेस के एक प्लेयर है उन्होंने उनको स्पॉट किया, बट गब्बर थोड़ा सा उनके पास नजदीक आना चाहेंगे. विंडो से शायद एक एंगल बन सकता है, बट डीएस ब्लैकआउट हैड टू रिलाई
मच ऑन द द साउंड्स कि आपको किस तरह से साउंड क्यों आ रहे हैं, उस तरफ आपको प्री फायर अपना एंगल बना के रखना पड़ेगा। एक भी अगर आपको शॉट लगता है, एक भी अगर आप डैमेज आगे पीछे से लेते हो, you will be in a very very bad spot, my friend. And there you go, like I said, he gets the angle from that window and he gets out. He has been eliminated, the team goes out. बट प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली कि अगर ग्रेव एक्स यहाँ पे थर्ड पार्टी अनाउंसमेंट कर देती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में, मतलब थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे वहां पे घर की टीम। Yeah. But that was one interesting fight, I should say. I should give it up to them. They did put in. As we are coming down to, I guess, the last three circles, the game will just get more tougher and tougher. Lucky for those who are in the circle, but hard for those who are currently still outside the circle. GD still trying to make their way inside, but we've already got Solo's team. Victory Alish and Solo. Both of them are inside the circle and are under a good cover, so they don't have to worry about anything. The only team that has to worry is team number 7, Danav and Ankur. There are only two players. They have one finish to the hand, which is impressive enough, but it is not impressive enough to fight other 8 teams just all by themselves. They need to pick a new strat. They have to make a different push, and I believe that Ankur is just behind Alish. And there you go. I told you, speak of the devil, and there comes the fight. Danav unfortunately gets taken down, and Devil will immediately get rated for it. Devil will also get knocked down and confirmed. All this chaos, and Team GD is having the fun. Team GD is finishing away the finishes. Team GD is stealing the kills. I won't say that was okay. Never mind. तो यहाँ पे भैंपिंग है कि कोई भी एक प्लेयर को स्पॉट कर लिया गया, शॉट्स लगाने की कोशिश रही है, एक बंदा कहीं ना कहीं नॉक होने की तरफ से देखने को मिला। उस तरफ आरओजी एफएक्स नोवा स्कल की टीम को चैलेंज करते करते हुए उन्होंने 2 बेहतरीन फिनिश ऑफ निकाल चुके हैं। 6 टीम अभी भी जिंदा है इस छोटे से सर्कल में। कुछ यहाँ पे टीम्स कहीं ना कहीं में बाहर सेफ जोन के देखने को मिल रही है, बट एक अच्छा, मैं बोलूंगा, एक प्रेशर बना के रखा हुआ है टीम में 4 ओवर पे। घर की टीम को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कोई लाइक दीज आर सम ऑफ द लाइक नॉट द रैंडम टीम जो आपको लग रहा है। दिस इज द टीम जो भी स्कोर कार्ड पे टॉप पे बैठी हुई है 200 पॉइंट्स, दो 200 ओवर पॉइंट्स के साथ। तो आप इनको ऐसे ही व्हीकल लेके सामने से आके चैलेंज नहीं कर सकते हो। वाइपिंग हाई इज ऑलरेडी वेरी लो ऑन एचपी। एक शॉट, एक नेड भी अगर उनको सही तरीके से पड़ गया, जो पड़ेगा थोड़ी दूर, थोड़ा सा पीछे, बाल बाल बचे वाइपिंग हाई वो दे, अगर सही तरीके से पड़ जाता है। स्मोक अप से अपने आप को बचाने की कोशिश उनकी जरूर जा रही है, बट जीडी एसके अगेन गोइंग फॉर द कुक। सही तरह से कनेक्ट होता है तो बाइपिंग हाई है, डेफिनेटली विल गेट नॉट। And he gets that nade. He gets that nade down to like almost 5 HP, down to 10 HP. I don't know exactly, but definitely एक यहाँ पे गेम को एक और नॉक मिला है, बट उस तरह यहाँ पे लॉन्ग रेंज से थोड़ा सा चैलेंज कर लिए जा रहे हैं टीम आरओजी के साइड से। यस, बट उनके साथ से जितना प्रेशर आ रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। उनके पास इतने फिनिशेस भी नहीं है, बट जितना वो दूसरे टीम्स को डरा रहे हैं, आई थिंक उसी से हमें बता सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस मैप हाउ मेनी फिनिशेस can they get. Their potential is much more than what they think, at least for me, because GD, they finished the fight against around 3 teams so far. They are in the top 6. Yeah. GD's SK is taking a solo fight against Bai Ping Hyena, and I'm very surprised that Bai Ping Hyena is still surviving. Did they have a fight Man, previously in the compound and they still managed to get away from each other? I don't know. I don't know how much smoke nades these guys are carrying. Like, Yeah. it seems like they are having more smoke nades than the ammunition right now. Yes. And you need a couple more when you know that rifles are just not at the entire game. You need some cover, and when it eventually comes down to the last circle, it's highly unlikely that you will find a cover apart from trees and bushes, and I don't think they are a very good cover, at least in my terms. So getting smokes will also block their vision, but sometimes if you spray through the smoke, yeah, there you go, you got the knock. As the circle's closing in, we've got Team Sat Ishan on a very good cover. GD is going to be the center of attraction for Team Solo, Team SRZ, but it's not gonna matter them anymore. They're gonna pull everyone who come in their way. SRZ is one of the players down. Punya is the last one standing. Solo's old dear is still outside the circle, gets knocked, gets confirmed. One team to watch out right now is team number 4 with all 4 men standing, and team number 3, that is GD, with 3 players. And Team Sadishan, he's just gonna be a spectator for the fight happening between GD and team number 4.
That's going to be really, really crucial, and that's going to be really, really gruesome fight to be very specific. Even Shadishan gets, a knock on SK or Katil, somebody from the GaveX digger, so story कुछ और हमें देखने को मिल सकती है. But सबसे बड़ा एक मैन एडवांटेज at this point of time मिलते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आईजीएल की टीम पे आ रहा है. Shadishan पे एक नेड आएगा from the side of Katil, काफी बेहतरीन नेड है मस्ट से. 3-4 का सिनारियो बनते हुए इस फाइनल जोन में. पोजिशनल एडवांटेज दो टीम के पास है, कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा, बट एक जो वर्टिकल एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है ग्रेव एक्सटिकल्स की तरफ से. बट एक नेट जाएगा, शायद से कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा. 28 48 एचपी, 48 एचपी, दैट नीड. But how these guys are connecting these nets so perfectly, I really don't know, Tanvi. बट प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी ये होने वाली है कि आई थिंक सो दैट टीम नंबर 4 आईजीएल पाथ की टीम यहाँ पे थोड़ा सा रिसोर्सेज में लैक कर रही है. यू कांट सी एनी ऑफ द काउंटर नेट्स कमिंग इन फ्रॉम देयर साइड, एनी ऑफ द स्मोक नेट्स कमिंग इन फ्रॉम देयर साइड. दैट्स गोना बी अ वेरी ओपन. बट यहाँ पे पार्थ को राइगॉर्डी पे फिनिश ऑफ देखने को मिलेगा. गब्बर यहाँ पे राइगॉर्डी को टेक आउट कर लेंगे. व्हाट एम आई सेइंग? इट्स डाउन टू वन सिंगल प्लेयर. 4v like 2v3 4v3 से कहना कहीं डाउन टू 1v3. एंड जीडी को कोई निकाली है यहाँ पे टीम. दैट्स गोना बी पार्थ की टीम. वेरी लवली प्ले कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ टीम गर्ग. एंड आई मस्ट से भाई पिंग हाई है. IGL Lucifer, IGL Gabbar, they have really showed their potential in this final circle कि अगर 4v3 होता है, we have the man advantage, जिस पे अलिका ने बात किया था मैच स्टार्ट होने से पहले कि बहुत ज्यादा मैटर करता है ऑफ कोर्स. बट बीइंग एट दैट कि उनके पास रिसोर्सेज उतने नहीं थे, इन्वेंटरी में उतनी उतनी ज्यादा अमाउंट में जितना कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था ग्रेव डिगर्स की तरफ से. नेड्स आ रहे हैं बार बार, स्मोक नेड्स भी प्रयोग किए गए थे, बट इवेंचुअली दैट स्मोक नेड्स वेंट ऑल आउट इन दैट पर्टिकुलर ओपन कंपाउंड फाइट. बट हाँ, बीइंग ऑन द द लोअर एडवांटेज साइड कि आपसे थोड़ा सा ऊपर के रेंज पे प्रेजेंट थे ग्रेवेक्स डिगर, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा गलती हुई है ग्रेवेक्स डिगर की तरफ से कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, पुश करके दोनों प्लेयर्स बैक टू बैक अपने एंगल्स एक्सपोज कर दिए गए. बट हाँ, आप इसमें कोई कमी नहीं आप दे सकते, क्रेडिट नहीं दे सकते तन्वी की. लूसिफर और गब्बर के पास जब मौका मिला, एग्जीक्यूटेड देम रियली वेल, एंड दे यू हैव टीम गर्ल taking that chicken in the first map itself. Yes, I think finally Bai Pinghai and they are coming back in action. Now they're gonna make everybody stand down. Even I'm not sure if they're in the top 8, but I think after this performance, they will surely be in. They've got total of 7 points and 15 placement points, roughly 22 points in their hands. Although I wouldn't be, even adding up to that, their score is more than Bai Pinghai and her teams. I don't know how they manage. These are the magicians, the score magicians, I should call GD. Despite of not getting the chicken dinner, despite of not having the advantage to be in the first place, they still managed to be on the first, at least in terms of points. They've got more than enough finishes, 3 finishes coming in from SK and Cartel did a beautiful job spraying through that. I think it was Team Skull who were isolated behind a rock and he took every chance he could. Roy Godley, best backup, and I believe the IGL is SK. Definitely ग्रेवेस डिगर्स को जैसे आपने बोला magicians on the scoreboard, I must say magicians on the finishers कि जब भी वो aggressive हो रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट मिलते हुए नजर आ रहा है कि जब भी किसी टीम से जा रहे हैं तो उनको किल्स मिल रहे हैं, वो नॉक्स मिल रहे हैं, वो फिनिश मिल रहे हैं. बट एंड ऑफ द जोन व्हाट वी सॉ कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा ज्यादा अपने एंगल्स एक्सपोज कर दिया, जिसका पूरा फायदा कहीं ना कहीं पार्थ की टीम ने उठाया, टीम गर्ग ने उठाया कि एंगल्स पे एक्सपोज हुए, उन्हें कोई भी शॉट्स नहीं मिस किए. अगर हाँ रिसोर्सेज शायद होते हैं कहीं ना कहीं दोनों पास, टीम इवन ग्रेवेक्स डिगर्स के पास या फिर टीम कहीं ना कहीं गर्ग के पास, तो थोड़े से और हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस देखने को मिलते हैं. बट ज्यादा कुछ नहीं हुआ. इवेंचुअली मैच एडवांटेज था गर्ग की टीम के पास एंड दे प्रूव्ड इट कि जब हमारे पास मैच एडवांटेज है तो वो चीज कहीं ना कहीं उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे बेसिकली. Yes. But I really love the efforts coming in from Gravix because they know they are on top of the table. They know that, no team has, no team can make up so many points that they can directly take Gravix stickers down all by themselves. Even though they know that, they're going to be one of the teams to move forward into the invitation, they're still putting that efforts. They know they're in top, but the efforts continue throughout the event. Now, that is what I was talking about. The consistency has to be maintained, and they're doing a great job. And Bai Pinghai and a team,
Yesterday they tried so hard, Bullet. You saw he got 6 finishes, the highest number of finishes Yes, that with that, any that player that also had solo. individually. That had Yes, solo, that being individually. surviving on the solo, like being on the solo, the guy for the team, he's getting there with the the third position place. So that was it for the first map, guys. We're gonna take a real short break and we'll be back with the scoreboard too. मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, इतना छोटा सा छोटा सा छोटा
Who's singing the intro? Okay, welcome back, ladies and gentlemen, to GGNation Presents Challenger Series. We are currently on the last day of the playoffs, as you guys been watching. And the first map was actually very quick bullet. I didn't even notice Yep. that we finished one map and we are down to the last four maps in the playoffs. Yep. And these last 8 teams who are gonna be on the top are gonna be moved to the invitational, which will be happening very Yep. soon. The details of the invitation will be uploaded on our Instagram. So make sure you follow us on our Instagram. That is at GGNation. The links are mentioned in the description. And you can follow us both on Instagram. I am Tanvi Jasmine FW. He is Billet the Crazy Namer. Crazy Crazy Gamer. what? Yes. What? What? And you're muted. तुमसे ना हो पाएगा तुम रहने दो तुमसे ना हो पाएगा guys we have already Oh, done with yes. just kidding guys we already done with the first map like Alika took it away but the problem is going to be for the teams who are at the bottom it's still we are some of the teams like Predator Most Wanted God sorry Team Flossy even like the teams of Team X Solo Akash Goda was playing really well in the first map first day itself second day itself but आज के दिन की बात करें तो पहला ही मैप हुआ है ज्यादा हम नहीं कह सकते ज्यादा जज नहीं कर सकते ज्यादा चीजें एनालाइज करने के लिए नहीं है बट लुकिंग एट द स्कोर बोर्ड looking at the the some teams we are playing really well against going to be Gravex Diggers but एक जो टीम बाहर निकल के आई है जो Gravex को चैलेंज किया है that's going to be another than team Gar last circle पे mad advantage था 4v3 था but Yes. Gravex Digger being the the superior side being the giant in this lobby की 200 ओवरऑल पॉइंट्स आप ऑलरेडी क्रॉस कर लियो ऑलमोस्ट 110 फिनिशेस आपके खाते में हैं तो शायद से 3v4 हो सकता था बट थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया कर दिया अपने आपको क्लियर एंगल्स मिल गए कहीं ना कहीं दोनों प्लेयर्स को पार्थ को सैड को दोनों को एंड इवेंचुअली गर्ग टेक द Yeah. फर्स्ट चिकन डिनर इन द फर्स्ट मैप ऑफ एन एंगल एज वेल एज द लास्ट and the last 2 days the last day the first day as we're Last. going to take a short look at the scoreboard एंड चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगी एलिका कि यहाँ पे जो वापस से टीम्स होने वाली है दैट्स गोना बी डार्क ग्लोरी विद 71 पॉइंट्स Yes. Well, speaking about the bottom 8 teams, we've got Team Celestial, like Solo, Dark Glory. Although not much of a points difference coming in through 71 points for Dark Glory and Team Solo has 63. So the difference between 9th and 10th position is much. Let's have a look at the top 8 positions, which I am pretty much looking forward to because that's where the changes happen. That's are the major changes I'm looking forward for. Okay, we've got 71 points in 9th position and 77 points at 8th position. Not much difference. We still have 4 maps to go. Anything can be changed. And Team Sad is back in action all the way from I think 80 points. They are currently standing top second position just below Gravix Stickers and Gravix Stickers they've got 11 points in the last game. I mean good number of finishes. I think they had 9 finishes and they were pretty good. Yeah. They're pretty good at that but look at team sad look at teams flossy आप डिफरेंस देखिए लिखा जी 72 कहाँ 66 कहाँ गॉड और व्हाट नाम जरूर गॉड है बट Yeah. चलिए कोई बात नहीं 56 स्कल के पास डेफिनेटली 23 तो फोर्थ के बाद भी एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है इवन सेकंड और फर्स्ट पोजीशन के बाद भी बहुत बड़ा गैप आ जाता है तो अब ये गैप क्या टीम्स यहाँ पे फिल आउट कर पाएगी या फिर वही स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलेगी कुछ टीम्स डोमिनेट कर रही है कुछ टीम्स आगे बढ़ के फाइट ले रही है दे आर बीइंग रियली सक्सेसफुल विद इट and I think so that's going to be the rest of the story in the last 4 maps as well. I just think so. Yeah. But although I'm very surprised to see that, remember the first time we looked into the scorecard before the first match happened, everybody had 80 points, 85 points, and all of a sudden we see 3 teams getting 100 plus points. Now that is definitely astonishing for me to watch. I hopefully feel that Team Skull, Avigar, Predators, and Most Wanted will eventually hit the mark of 100 Yep. points. Although 3 teams done and dusted, we've got 4 more teams who have to hit 100 plus points. And in the 9th or 10th position, we've got some very serious contenders with very short, points gap coming in through. I'm looking forward Yep. for the second map because once the map changes, the strategies, the rotation, and even the roles change eventually. Sometimes, you're better at Miramar, so you might be the IGL, you might give support, you might initiate fights, as the proportion of the map also differs. And since Miramar is way big compared to Erangel, the job is just gonna be more tough.
Yeah, that the in Miramar, the all thing already goes in the into the favor of the zone. If the first zone gets shifted really early, you have to take those rotations. You can't, just fight off out in the, the outer circle, basically, not in the not in the safe zone, to be specific. बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम सेकंड डे पे भी देखे थे, जब पहला हमारा टेलीकास्ट हुआ था कल अजन में, कि बहुत सारे प्लेयर्स प्लेस उनके द्वारा कहीं ना कहीं मरते हुए हमें देखने को मिले थे. तो दैट्स नॉट रियली द प्लेस यू वांना डाई. अगर आपको मरना भी है तो टेक दोस फाइट्स, टेक दोस, शो दैट काइंड ऑफ एग्रेशन कि हाँ आप आगे जाके फाइट्स दे सकते हो. यू विल जस्ट गेट एलिमिनेटेड बाय द प्ले जोन. तो आई गेस दैट जस्ट रियली शोस कि आपकी टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रही है. लाइक यू डोंट रियली हैव दैट काइंड ऑफ मैप नॉलेज कि आप इस पर्टिकुलर एरिया से रोटेट करके आप जा सकते हो जोन में. Many things come in inside of a mind of a caster, inside of an analyst, when you see just a random any team just going out and getting eliminated by the play zone. अब आपके पास रिसोर्सेज Yes. नहीं है हील करने के लिए, तो हाँ आपको लूटिंग अच्छी करनी चाहिए. यू हैव टू गेट इन द लूट्स इन दैट इन्वेंट्री. यू हैव टू मैनेज ऑल थिंग्स रियली वेल, बिकॉज अगर आप टॉप 8 में नहीं आते हो तो आप नॉट गोना गेटिंग यू आर नॉट गोना गेट क्वालिफाइड फॉर द इनविटेशनल सीरीज, एंड दैट्स वेयर द मेन क्वेश्चन इज. You have to get qualified, you have to get in the top 8. Yeah. Well, I think the fight for top 8 will go on for the next 4 maps. Although today is the last chance for all of these players to prove if Yep. they're worthy enough to be in top 8 and eventually move down to the Invitational. All few teams which I'm really looking forward is Team Sad, God of War, because their position points have been okay-ish, I would say, but they have to concentrate more on their finishes. And one team for sure, we know that, who are going into the Invitational is definitely Team Gravix Stickers. Their consistency is quite like a question for me. How did they manage to do it? Even in the last game, they did not. I mean, I should definitely say they were close enough to get the chicken dinner, but due to the man disadvantage again, SK tried his level best. GD's SK, he even knocked one before he went down, right? I think he even knocked one, got one kill against Piping High in a team, and then eventually the zone closed out. I hope fully think that yesterday's contenders teams like Vortex team, Beast OP's team who got a chicken dinner, I hope they all come back in the action. They eventually pick up, and as everybody says that the first game is still a warm up for everybody. I don't think so. Like it's gonna be the warm up for teams. I agree. I'm not agreeing with you. I'm Yeah, not gonna cut you. I yeah, completely agree with you. And I completely bow down to you. Bow down to what you're saying right now. But teams that shows on the scoreboard. आप 200 points cross कर चुके हो. आप ऐसी गलतियां करोगे कि आप ज्यादा aggressive हो जाओगे, तो हाँ maybe they're in the chill mode right now. They want to play it really cool कि हाँ हम already qualify कर चुके हैं. We don't have anything to worry about. But you cannot just underestimate like that. वो 12-12 15-15 पॉइंट्स रैक अप करके अगर ऐसी 3 मैप और चला गया और गर्ग ऐसे ही 8-9 फिनिशेस के साथ कहीं आगे बढ़ती गई, तो दैट विल इवेंचुअली लाइक मेक देम अ प्योर अपोनेंट इन द इनविटेशनल सीरीज. एंड दैट मेक्स कि आप अपने वीक पॉइंट्स दिखा रहे हो उनको, तो आपको वो चीज नहीं करनी है. mm, यू कांट जस्ट रियली अंडरएस्टिमेट एनी ऑफ द टीम्स आउट देयर. यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट काइंड ऑफ गेम प्ले, यू हैव दैट काइंड ऑफ स्किल. Just go and run and gun. Simple as that. yes. And do you have any predictions for the upcoming map, the map of Miramar? Although a lot of things are gonna change. I think yesterday the win on Miramar, the finishes on Miramar were quite different because we had around 5 to 6 teams till the very Five last to six. circle. Yep. So today I Yep. want to expect something different from all these players since they want to play it for the position points. I'm not expecting everybody to push in through the last circle. Maybe few of them can stay out of the zone and take the fight only in the last circle, guys. By the way, पहले सर्कल में भी जोन के बाहर बैठे होते हैं, वहां पे ही फाइट ले रहे थे. I do not appreciate that much because it's gonna take a lot of your time. Eventually the HP damage also increases the more you stay inside the zone. आई थिंक कि टीम्स जो कहीं ना कहीं टॉप 8 से बाहर है, उनको ड्रॉप क्लैश नहीं लेना चाहिए. बहुत बड़ा मैप है मिरामर का. आप प्लेन पाथ अगर आपका साथ देता है कि आप उस लोकेशंस पे जा सकते हो जहाँ पे आप टीम से स्कैटर्ड हो, यू कैन गेट दैट loot, you can get the kind of loot, the kind of inventory you want. Basically try to avoid drop clash. That's going to be the main key reason for getting into the top 8. आप drop clash लोगे, आप कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही मैन एडवांटेज खो दोगे, तो that's eventually bad for you when you go towards the end circle. एंड जहाँ पे जो टीम्स कहने के टॉप 8 में ऑलरेडी है, वो कहने के कोशिश में लगे हुए हैं टॉप 4 में टॉप 5 में अपने आप को सिक्योर कर पाए, क्योंकि वो उतना ज्यादा मिस्टेक्स नहीं करना चाहेगी टू लूज आउट देयर पोजीशन इनटू द बॉटम 8.
तो अपनी टीम्स को जैसा मैंने बोला ड्रॉप क्लैश नहीं लेना चाहिए, बट हाँ अगर ड्रॉप क्लैश लेते हो आप तो कहीं ना कहीं भैया देखना पड़ेगा कि आपको कैसे खेलना Yeah. Well, I can't wait for the next match to start. Although my predictions are a little bit on yesterday's teams. Yeah, I'm talking about yesterday's performance. Taking motivation and inspiration from yesterday's wins, I would like to go with Vortex and Beastopi, or actually, more importantly, Beastopi's team. Although I saw them with a three-man roster today, which was quite surprising. But hopefully, Beast OP will get along with the track and showcase once again their very vigorous performance in the map of Miramar. And I believe GD's best map is not at all Miramar. I mean, their entire gameplay changes so different when they take a drop in Miramar. Anyway, let's quickly jump into the map number 12 and the second map for the day. That is a map of Miramar with huge changes in the scorecard coming in through. We'll be taking a dive into the sand. And we have your MVP for this map. Okay. I think, players which have happened. We have Cartel, Paraboy, Roy Godley is not playing. There is a change coming in. या गॉडली इज नॉट प्लेइंग एज यू कैन सी उनके जगह पे रिप्लेसमेंट आया है तो वो है नियॉन एमवीपी एंड नियॉन एमवीपी इज वेरी मच ऑफ अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर आई मस्ट से काफी अग्रेसिव नेचर सारे ही प्लेयर्स का आ रहा है अगर हम गेम ब्रेकर्स की बात करें बट ये प्लेयर्स कुछ उमदा ही किल्स निकालते हैं काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं एग्रेसिव नेचर शो करते हैं अपना आपने बात की तनवी लेट्स फोकस ऑन द दैट पॉइंट की आपने बात की लाइक ग्रेव एक्सिगर्स Yeah. थोड़ा सा उनका गेम प्ले चेंज होते हुए नजर आया लाइक व्हाट रियली यू लाइक आपको ऐसा क्या लगा कि आपको लग रहा है कि हाँ गेम प्ले में इनके चेंजेस देखने को मिलता है व्हेन दे आर ड्रॉपिंग डाउन टू द मैप ऑफ मिरामर Yep. Well, the circle seems a little too divisive to be in the southeastern side. It is almost leaving half the map outside. And this, I think at least 30% of the circle is in the water. So the important areas are going to be La Bendita, Minas Grenades, and Impala, along with Los Leones. But look at the irony. Only three teams have landed inside the circle. Only three teams. like what should I say? Like probably they are just want to like there will be teams बाहर यहाँ पे सर्कल के बाहर इवेंचुअली काफी ज्यादा जल्दी शिफ्ट होते हुए नजर आए बट गॉडल की तरफ से शॉट्स हमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं उनके पास कोई भी वेपन नहीं है ओके अब आ चुका है हाथ में दैट वाज इवेंचुअली सम लैग एंड डिले दैट वी आर गेटिंग ऑन अवर बट हाँ गॉड ओपी के पास वहां पे किल नहीं था यूजी के प्रयोग से यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में शॉट्स लगाएंगे कनेक्ट भी होगा B2 के स्कल के पास प्रॉब्लम ये उन पे होने वाली है कि एग्जैक्ट जिस तरह की लूटिंग चाहिए आपको एक फाइट लेने के लिए वो आपके पास प्रेजेंट नहीं है वेरी रॉ लूट वेरी आई वुड से इनिशियल लूटिंग के बाद आप कहीं ना कहीं फाइट लेते हुए नजर आ रहे हो तो काफी ज्यादा एक रॉ गेम हमें देखने को मिलेगा दोनों टीम की तरफ से बट अगर स्कल यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही एग्रेशन दिखाती है टुवर्ड द साइड ऑफ गॉडल तो थोड़ी सी हमें स्टोरी में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि हाँ स्कल यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉक हो जाए और वहां पे रोनिक नॉक करेंगे स्कल हंटर को एक ओपनिंग यहाँ पे मिलते हुए अब क्या कार 98 से यहाँ पे शॉट लगाते हैं या नहीं लगाते वो आने कुछ सेकंड में पता चलेगा एंड ही गेट्स वन रॉनिक पे कहीं ना कहीं वापस एक रीट्राई लेते हुए देखने को मिल रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ स्कल फ्लैंक बट गॉड ओपी लगे हुए कि इस मार्क्समैन राइफल से लगातार कहीं ना कहीं डैमेज दिए जा रहे हैं और स्कॉर्पियो को नॉक भी कर दिया गया एज वी कैन सी टू प्लेयर्स आर वन सिंगल गाय इज नॉक 3v4 का सिनारियो है केरला Yeah. वासी वहां पे हिल करते हुए आ जाएंगे अब किस तरह की यहाँ पे मूवमेंट पोजिशनल प्लेस देखने को मिलता है वो सबसे बड़ा सवाल आता है अलिका Yeah. बट ये पोजीशन को मुझे देख के लगता है कि डेविल गॉड ऑफ इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन इट्स अ 1v4 ऑलमोस्ट for him, but don't worry, the backup has arrived, and Scorpios and Mickey are out in the open. Will the shots connect from Devil God OP? Scan is my question. I don't think they'll be, but running out in the open is definitely not a good choice since Ragnar and Skull, both of them are standing very close to Devil God OP. And खुले में घूमना इतनी अच्छी बात नहीं है, but Tushar, a very smart move, he pushes up, but Skull takes him down. Skull takes Tushar down, he knocks him out, and right now Devil God OP is trying to push in for Skull. I think before that, Skull भी knock हो चुका है क्या कर रहे हैं ये Tushar takes the revenge back. He's back on his feet. I think the game quickly changed for me. He took a rotation, okay, which is a good one. He also confirms Tushar, which means Devil God OP's hunt will move on. They have two Tushars in their team, to my surprise.
यप दैट इवेंचुअली लेड टू अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन कि क्या यहाँ पे दो डिफरेंट टीम्स है, बट नहीं, यहाँ पे दो डिफरेंट टीम्स नहीं है। चले कोई बात नहीं। की अगर हम टीम की बात करें तो मैं बोलूंगा कि एक काफी बैलेंस ओवरऑल टीम रही है लिखा हमने कल के। अगर हम इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी अच्छे तरीके से अपने को बैलेंस आउट करता है, जब किसी टीम से कहने के सराउंड करके जाते हैं, बट यहाँ पे मार्क्समैन राइफल का प्रयोग करके शॉट्स करने की कोशिश लगी है लगातार। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप ऑलरेडी गॉडल तुषार को खो चुके हैं, एक बंदे को ऑलरेडी यहाँ पे खो चुके हैं। एक और गॉडल तुषार जो इस टीम में प्रेजेंट है, आपको उनके साथ कहने के कहीं और रोटेशन लेनी चाहिए कि सिंगल हैंडली आप किसी एक टीम को चैलेंज कर रहे हो। अगर वो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं आपके तरफ चार्ज अप करते हैं, तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि आप सोलो प्लेयर अपने टीम की तरफ से यहाँ पे प्रेजेंट हो। Yeah, Devil God up on the other hand. Oh, they still have one player left though, Ragnar. I think they just left Ragnar over there, or they couldn't spot Ragnar. Couldn't spot Ragnar. But if there's a very good chance that Ragnar can take a shot on towards Devil God OP, I mean, if he's watching in case, and there comes a car, a very bad time for the rotation. And I think Devil God OP will be taking the shot, but that's just Scorpio trying to make a comeback for Ragnar, trying to take him back. And I guess the heal will be coming through. But there is Tushar on the other hand, the other Tushar, who's trying to do a lot of damage, but they're gonna get away in the car. A little damage has been dealt, but not much. They'll be on the run, and Devil got up his team. They've got two, I think one finish in their hands. Yep. Not bad to begin with, though. Two finishes, one finish is still good. लाइक वन फिनिश इज ऑलवेज ही नाइस रादर देन गोइंग फॉर द फुल एग्रेशन, बट यहाँ पे हम जैसा देखने को मिल रहा है स्पॉर्को की टीम की तरफ से प्रेडेटर्स जो नाम है, मतलब प्रेडेटर्स नाम है, आई एम जस्ट काइंड ऑफ लाइक जोकिंग लिटिल बिट ओवर द नेम्स, बट इवेंचुअली नो ऑफेंस, बट आप जिस तरह से कहीं ना कहीं सेकंड डे पे गेम प्ले दिखा रहे थे वो गोइंग इन फॉर द किल्स, वो आज आपके लिए नहीं देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी सिचुएशन भी डिफरेंट हो गई कि आप इनिशियली लूटिंग पे थे, ना ही आपके पास कुछ खास आर्मर, ना ही आपके पास कुछ खास इन्वेंटरी, तो उस टाइम पे फाइट लेना फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दैट्स रियली रियली रॉन्ग। Look at that M41 Glacier, एलिका। अब क्या बदमाश इस Yeah. बेहतरीन स्किन के साथ बेहतरीन प्लेस दिखाते हैं या नहीं दिखाते, वो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि Mm-hmm. यहाँ पे अपोनेंट में अगर कोई ना कोई टीम मौजूद है, दैट्स गोना बी द फायर ब्लेडर्स, Mm-hmm. जो काफी बेहतरीन कहीं ना कहीं एक प्ले हमें देखने को मिल रहा था उनकी तरफ से इनटू Yep. द ऑल ऑफ द मैप्स व्हिच आई हैव सीन फ्रॉम दिस टीम। की आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चैलेंज भी करते हैं, हाँ एक दो नॉक्स अगेंस्ट में जरूर आ जाता है, बट काफी बोलूंगा कोऑर्डिनेटेड अटैक्स या फिर कोऑर्डिनेटेड एक प्ले हमें देखने को मिला है प्रेडेटर्स की तरफ से, सॉरी फायर ब्लेडर्स Yeah. की तरफ से। Yeah, the last map, I think, Dana's team could not perform well since they only had Danav and Ankur. The entire match wasn't in their hands at all. They were trying to take a rotation. They both got knocked down. But hopefully, they have one more player, that is Jitesh from his team. Trio squad, at least not something bad to begin with, but they have to be very careful with ROG. In the last match, ROG fought against SKZ and they managed to come out of the circle and eventually make their way inside the circle and to the top five. So I think ROG is also one of the very aggressive teams who are trying to get to the up hand of the scorecard. They should be very careful. But look at Badmash positioning. I don't know if I should call it risky or I should call it a very good view, because Danav's team won't be running out in the open. At least I know, and the zone's coming down. So ROG, Nova and his teammates have to get down and go for a rotation, or at least make some move. I mean, as long as they're inside the circle, that won't be a problem. And look at the number of teams which are still in the damage zone. We've got CE, we've got Existence team, we've got Vortex team, that is MW. Both of them are in the blue zone, and it's gonna take some time. And there's one player over towards San Martin, north side of San Martin. I don't know which team is it, but they are the furthest from the circle right now. यप लॉस लियोनस पे हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है हमारा एंड जोन, आई मस्ट से अब किस तरह से शिफ्ट लेता है टोवर्ड इम्पाला के साइड जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा प्लूटो के निचले हिस्से पे। बट आप फिर से देखिए ग्रेव डिगर्स येट अगेन सेंटर ऑफ द सर्कल पहली जाके बैठे हुए, तो काफी जेंदिक स्ट्रैट यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम होने वाला है बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूं काफी ज्यादा सेलेस्टियल के टीम मेंबर्स को, कि कहाँ जोन बना है और आप किस तरफ पता नहीं अलग ही मैप पे आप रोम कर रहे हो। तो ये इस तरह का प्लेस से हमेशा मैं अगेंस्ट में रहता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नफरत है मुझे ऐसे प्लेस से, मतलब मी पर्सनली इस टीम से नफरत नहीं, सेलेस्टियर काफी अच्छा खेलते नजर आ रही है, बट अगर सेलेस्टियर को यहाँ पे आगे चल के फाइट्स लेना है, हील बैटल आपकी चालू रहेगी, आपको कहीं ना कहीं अंदर जाना भी है सर्कल के,
और वहाँ पे जो गेट कीप के लिए टीम्स वो बैठी रहने वाली है, वो तो कहीं ना कहीं बैठी रहने वाली है। तो सेलेस्टियल्स के ऊपर काफी ज्यादा ही एक बोलूंगा मुश्किल बने हुए, काफी ज्यादा एक अड़चन आने वाला है इनके चिकन डिनर के सफर में। या और सबर काफी अच्छा है, लो आई मीन काफी अच्छा है, बट इवेंचुअली व्हेन यू कम डाउन टू द लास्ट फ्यू सर्कल्स वो और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छी से ज्यादा। एंड आई फील लाइक दिस टाइम अंकुर का टीम कैन डू मच बेटर देन द प्रीवियस वन, एंड दे हैव आरओजी behind them. Wait, did they cross ROG and come in the front? How did that happen? How couldn't ROG even spot them out? And look at Gravex, Diggers. They're finally in the action, at least somewhere on the map. But why is Cartel alone? Is my question. Why are his teammates a little further away from him, knowing that there are few of the enemies between them? Like I don't really think so, like आप Yeah, सोलो ऐसे रोम it's okay. करोगे इन द मिडल ऑफ द फाइट तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो बना ही रहेगा। बट यहाँ पे देखने को मिलता है कि Hmm. गॉड ग्रेवेड डिगर्स के प्लेयर्स एक टीम को यहाँ पे स्पॉट ऑलरेडी कर चुके हैं। स्कॉर्पियो की टीम, दो प्लेयर्स एक हाउस में कवर लेके बैठे हुए, दो प्लेयर्स थोड़ा सा रिच के नीचे हैं, एंगल ढूंढने की कोशिश जरूर कर रहे हैं नियॉन। स्कोप निकाला है, सॉरी गन निकाला है, स्कोप जरूर एडीएस जरूर किया है, बट क्योंकि वहां पे जल्दी से ही स्कॉर्पियो में कि दोनों कवर के अंदर चले गए। साउंड आ रहा है नियॉन को, नियॉन को साउंड जरूर आ रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू गेट दैट परफेक्ट एंगल कि किस तरफ से कहने के साउंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे निकलेंगे जरूर कवर से। नियॉन ने कोई भी शॉट्स नहीं लगाए, तो डेफिनेटली वेट आउट करना चाह रहे हैं कि नियॉन की सारे ही प्लेयर्स का वो जो पोजिशनल इंटेल है वो उनके पास पहले आ जाए, फिर अपने टीम को कॉल दें और शायद फिर 4v4 का फाइट एक जो है वो इनिशिएट करें। थोड़ा सा ही मैं बोलूंगा काफी ज्यादा ही मुश्किल हो गई है अभी मिकी की टीम के लिए। और स्कॉर्पियो की टीम के लिए प्रेडेटर्स की बात करें तो कि आपने पोजिशनल प्लेस अच्छा दिखाया, आप पहले ही जाके जोन के अंदर बैठे हुए हो, बट प्रॉब्लम होने वाली कि आप ग्रेट डिगर्स के स्कोप पे आने वाले हो। नियॉन वीएमपी बहुत ही बेहतरीन स्प्रे, क्या ही प्यारा शॉट मारा है मेरे भाई ने। अब ग्रेड जाएगा, करेक्ट होता है तो शायद से हमें फिनिश ऑफ देखने को मिले। नॉक जरूर कर दिया गया है, नहीं पहले ही आधे हवे में आई गेस जस्ट उसके फेंस के जस्ट पास में कहीं ना कहीं ग्रेड एक्सप्लोड हो गया। एंड वहां पे शॉट जो डैमेज है वो जो डील करना चाहते हैं वो चीज नहीं है। मिक्की को चला जाना चाहिए जिस पॉइंट टाइम रिवाइल के लिए, क्योंकि 10 सेकंड का रिवाइल मेटा स्मोक लगा दिया तो थोड़ा सा और कंफर्म हो गए हैं नियॉन उस स्मोक के द्वारा। अगर उस गेम सेंस पे खेलते हुए नजर आएंगे तो कि एक और प्लेयर कहने के वहां पर मौजूद है। कवर से मिक्की निकलेंगे एंड डैमेज उनको भी पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई शी ओके रिवाइव हो चुके हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो, एक्सट्रीमली सॉरी रिवाइव हो चुके हैं। रैग्नारॉक उनके जस्ट नीचे बैठे हुए नहीं। एग्जैक्टली मुझे देखने वाली बात आ जाती है कि अभी तक ग्रेवेक्स डिगर्स के बाकी अदर प्लेयर्स क्यों नहीं आए हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी बैकअप करने के लिए। दैट्स द मेन क्वेश्चन दैट्स कमिंग इनटू माय माइंड राइट नाउ कि एग्जैक्टली वेयर आर द अदर प्लेयर्स ऑफ ग्रेवेक्स डिगर्स। अकेले सिंगल हैंडली क्यों ही मतलब यू नो आप ऐसे चैलेंज करने दे रहे हो। आरटीएस रैग्नारॉक उसी तरफ जो रिज है नीचे उसके ऊपर बैठे हुए। ओके ऑडेक्स जीडीएक्स पैराबॉय इज हियर टू हेल्प हिम। you know let's see what kind of the things goes on, things that gets probably किसी के भी फेवर में ये फाइट जा सकती है। पोजिशनिंग अच्छा है रैग्नारॉक का, अगर वो कोई भी हलचल ना करे, कोई भी साउंड क्यू ना दे नियॉन एमवीपी को, तो एकदम अलग हमें स्टोरी देखने को मिलेगी। ग्रेवेक्स टिकर्स को क्या यहाँ पे कोई और तीसरी टीम बनेगी जो कहीं ना कहीं चैलेंज करेगी इस तरीके के फाइट में, क्योंकि एक इनिशियल फाइट में देखने को मिला था बट ग्रेवेक्स के एसके पे बहुत लंबा एंगल मिला है। व्हाट उतने दूर से, तो मिकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सपोज थी। एसके को यहाँ पे मिला एंगल, वो डाउन भी करेंगे, नॉक भी करेंगे, बट फिनिश ऑफ अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। रैग्नारॉक को भी पता है कि अगर वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आगे चार्ज अप करके नहीं गए तो मिक्की और कहीं ना कहीं दूसरे प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा कहने के प्रॉब्लम है देखने को मिलेगा। आएंगे रैग्नार आगे एंड उनको स्पॉट कर लेंगे। नियॉन एमवीपी उनको नॉक भी कर दिया गया है। जीडीएस के यहाँ पे मिक्की का किल कंफर्म होते हैं, पैराबॉल उस तरफ रैग्नार पे किल कंफर्म कर देंगे। देखते ही देखते पूरी की पूरी प्रेडेटर टीम हो चुकी है फिनिश ऑफ फ्रॉम द नन अदर देन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ग्रेवेक्स ट्रिगर। काफी बेहतरीन प्लेस, काफी मैं बोलूंगा एक पेशेंस वाइज ट्रिगर डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन करके रखा और उसका फल यही मिला है कि आपको बेहतरीन फिनिशेस मिले हैं 3। cool, super cool and chilled kind of gameplay coming in from the side of Grivex Diggers. But एक वही जो एक गलती पॉइंटर करना चाहूंगा कि काफी लेट बैकअप आया
कोई और टीम होती जो अपने आप को ग्रुप अप करके अपने आप को यूनिट ऐसा बना के खेल पाती, तो शायद से ग्रेविस दिगर्स यहाँ पे मात खा सकते थे। बात करेंगे यहाँ पे डेवलपर की टीम की तरफ से भी द गॉड ऑफ वॉर, द साइड ऑफ गॉड ऑफ वॉर, उनका भी एक यहाँ पे शायद प्ले बनते नजर आया कि आप व्हीकल का प्रयोग करके रोटेट करना चाह रहे हो, फिर तुषार को काफी ज्यादा डैमेज मिला व्हीकल के इनसाइड। बेहतरीन शॉट्स कनेक्ट किए गए हैं फ्रॉम द टीम ऑफ भाई। पिंग हाई है, पिंग हाई हो चाहे लो हो सर, आपका शॉट्स तो बड़ा आप सही तरीके से कनेक्ट कर रहे हो। तुषार पे अगर वो कवर से निकलते हैं, अगर ये स्कोप लगा के हेड भी एक गेम सेट लग गया तो गॉड एल तुषार कहने के हमें नॉक हमें देखने को मिल सकता है, डाउन हमें देखने को मिल सकता है। ब्रेकिंग का प्रयोग करके काफी अच्छे तरीके से करके डॉज कर रहे हैं, एंड वही होगा कि वहां से टीम डेफिनेटली जो हमारी सॉरी गॉड ऑफ वॉर की है वो चुपचाप से वहां से निकल जाएंगे। Celestials on the other hand, they are also present on some of the larger proxy area, थोड़ा सा दूर है, बट प्रॉब्लम थोड़ी सी ये होने वाली है कुछ टीम्स को कि आप फिनिश ऑफ नहीं निकाल पा रहे हो, जहां पे जो टीम जो है तीसरे जोन के बाद ही मिरामर पे टीम्स लाइक ग्रेवेक्स जिगर्स एक एक टीम को फिनिश करते हुए नजर आ रही है। Teams are really looking forward, to work their way out up against Gravex Digger, जो उतना अच्छा साबित नहीं हो रहा है, बट इनिशियली हमने जब देखा पहले मैप पे, फर्स्ट मैप ऑफ रैंगल, दे वर रियली गुड व्हेन इट कम्स टू फ्रॉम द साइड ऑफ टीम कर, कि आपके पास मैच एडवांटेज था एंड आपने उसको कर दिखाया। Let's see what kind of plays we see get in from the side of अगेन आईजीएल का आईजीएल जिन्होंने लास्ट ही मैप पे अभी चिकन डिनर निकाला है। क्या एक और चिकन डिनर हमें देखने को मिलेगा इनके तरफ से? वो सबसे बड़ी बात आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होने वाली है नदर देन सॉरी मोस्ट वांटेड की टीम। नाम बड़ा बढ़िया है मोस्ट वांटेड, बट आप इतने ज्यादा वांटेड नहीं हो अभी स्कोर बोर्ड पे। यू हैव टू गेट इन द टॉप 8, सिक्योर योर प्लेस फॉर द इनविटेशनल। लेट्स सी। Let's see what kind of plays we get, man. What kind of plays we get, because other team Gravex Diggers अब उनके तरफ से जोन हटा था, थोड़ा सा ओपन में आया है, और लास्ट लियोन और इम्पाल के बीच में जो रिज है, जो सेंटर है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलेगा, वर्टिकल एडवांटेज मिलेगा, बट क्या वहाँ पे टीम सिक्योरली पहले जा पाएगी, वो सबसे बड़ा सवाल आता है। पूरी करने के स्कार का यूज करके असॉल्ट कर रहे टीम को नजर आते हुए नजर आता है। 20 भी किसने एक प्लेयर को नॉक कर दिया गया। एक टीम यहाँ पे शायद से कंप्लीटली एलिमिनेट होते हुए नजर आ रही है। एक और टीम है, दैट्स गोइंग टू बी द ग्रेवेक्स जिगर्स गोइंग अप अगेंस्ट टीम सेलेस्टियल। क्लैश ऑफ द टाइटन्स, आई मस्ट से, क्योंकि जानलेवा वजीर और एक्सटेंशन स्कल के मैप पे बड़ा ही बेहतरीन खेलते नजर आ रहे थे, और प्रॉब्लम ये होने वाली कि नियॉन एमपी भी थोड़े से यहाँ पे कम एचपी पे हील अप करना पड़ेगा जल्दी से। बट कातिल को देखिए, बेहतरीन एंगल फ्लैंक पोजीशन पे गए आई मस्ट से, और जानलेवा और वजीर दोनों को काफी हद तक डैमेज दे दिया उन्होंने। ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। अगर एक और एंगल बना, कातिल अगर उस पर सिक्योरली निकाल पाएंगे डैमेज, तो टीम सेलेस्टियल के वजीर और जानलेवा के लिए, दोनों के लिए जानलेवा खतरा बन सकता है मस्त से। इधर भाई पिंग हाई है, को एक ओपनिंग जरूर मिल गया एम्पियर ब्लास्टिंग पे, उसको नॉक जरूर हमें देखने को मिला है। डीएस ब्लैकआउट पे भी एक नॉक हमें देखने को मिला है। तो भाई पिंग हाई है, गोइंग ऑल आउट अप अगेंस्ट मोस्ट वांटेड की टीम, और देखते देखते अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोस्ट वांटेड की टीम की तरफ से एक और नॉक होता है, तो टीम वहां पे कहने के फिनिश ऑफ और एलिमिनेट हो सकती है ऑन टू द सेकंड मैप ऑफ मिरामर राइट नाउ, राइट अवे। बता दूं गाइस, आप देख रहे हैं गुड गेम नेशन चैलेंजर सीरीज, जहां पे सारी कॉलेज स्टूडेंट्स अपने लिए बैटल आउट कर रहे हैं। फुल प्लस उस तरह देख सकते हैं, अजय गब्बर को नॉक कर दिया गया। जॉर्ड अवार्ड गोइंग अप अगेंस्ट आरओजी की टीम, तो एक और फाइट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। उस तरफ पोलार्ड ने निकाल लिया रीफ्राइव भाइपिंग हाई पे, बट सामने जो हमारे सामने एक्शन चलते हुए नजर आ रहा है, लॉन्ग शॉट करने की कोशिश M4A1 से सक्सेसफुल होता है काफी ज्यादा मैं कहूंगा, बट वजीर एक व्हीकल के जस्ट पीछे मौजूद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। थोड़ा सा डैमेज जरूर मिलेगा वजीर को उसके अगेंस्ट, बट कातिल उनको पता है कि जो वर्टिकल एडवांटेज है उसको लूज आउट नहीं करना चाहेंगे। बट एक अगर स्नाइपर राइफल रहता इनके पास तो शायद से स्टोरी अब तक खत्म हो जाती वजीर की। प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी ये होने वाले कि आरओजी की साइड की टीम के लिए अगर हम बात करें OG XF4 की,
कि उनके 2 प्लेयर्स ऑलरेडी लूज आउट हो चुके हैं, नॉक पड़े हुए हैं, बट स्टिल यहाँ पे फायदा उठाते हुए नजर आ रही है ग्रेवियर्स की टीम। पर अब वो आगे बढ़े, सेलेस्टियल के एक्सचेंज को नॉक भी किया गया और इसके स्प्रे मारेंगे, बहुत ही बेहतरीन स्प्रे स्टार का, जाने पाएंगे, मूवमेंट दिखाई, यूएमपी का प्रयोग करेंगे एंड लेते ही लेते नॉक भी कर दिया गया है। बट एक्सिस्टेंस के बहुत, सेलेस्टियल के काफी 2 प्लेयर्स कहीं ना कहीं नॉक इन है। नियॉन पता नहीं लगा पा रहे कि जस्ट ग्रास के पीछे था बंदा, बट अब उनको कहीं ना कहीं दिखेगा, उनपे कहीं ना कहीं शॉट्स भी लेंगे, नॉक भी कर दिया गया, स्मोक ग्रेनेड डालेंगे, अपने आप को मेड किट का प्रयोग करके हील अप करेंगे। एंड व्हाट अ लवली प्लेस, व्हाट बट बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही ज्यादा मैच्योर, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्लेस दिखाते हुए वापस से नजर आ रही है ग्रेवेक्स जिगर। सर्कल हमारा श्रिंकन होने वाला है कुछ ही 24 सेकंड्स में हमें देखने को मिलेगा। 7 टीम्स आर स्टिल अलाइव, न्यू एमवीपी यहाँ पे एक और किल निकाल लेंगे जानलेवा पे। प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रही है, डेमिगॉड और वजीर अकेले बचने वाले हैं, डुओ सॉरी बचने वाले हैं दोनों, डुओ अपना साथ निभाना पड़ेगा। अब एक दूसरे का साथ कितना निभाते हैं, अप अगेंस्ट ग्रेवेक्स जिगर्स आने वाले कुछ सेकंड्स में क्लियर हो जाएगा तनवीर। Gravex Digger on the other hand, if you see, they are trying to run away. They're trying to take a rotation towards the inside of the safe zone. तो अब ये कितना ज्यादा अच्छा साबित होता है, क्योंकि यहाँ पे और भी टीम प्रेजेंट है सर आपके लिए अप अगेंस्ट गॉड ऑफ की टीम। यहाँ पे सामने स्पेसिफिक को यहाँ पे रैंडम शॉट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा स्प्रे गलत हो पाया, स्प्रे ट्रांसफर जो दूसरे बॉडी से तीसरे फर्स्ट बॉडी से दूसरे बॉडी करना था उस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उनके डेमिगॉड को भी नॉक कर दिया गया। नॉन में लॉन्ग रेंज यहाँ पे शॉट लेते हुए नजर आएंगे, मोस्ट वांटेड के अप अगेंस्ट थोड़ा सा डैमेज जरूर दिया गया है, 16-17 लगातार। बट प्रॉब्लम यही होने वाली है कि आपको सेफ जोन के अगेंस्ट नहीं जाना, सर्वाइवल जोन के अगेंस्ट बनते हुए नजर आएगा। अगले 1 मिनट के अंदर 21 सेकंड के गेम में इतनी ज्यादा में एक्शन देखने को मिले। पैराबॉय कंफर्म्स अ किल, डाउन द गाय ओवर केरला। वासी बिदाशुदी भी ने एक नॉक निकाल लिया है जैसा हम किल फीड पे देख पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम यही होने वाला है कि ग्रेवेक्स जिगर के 4 मैन स्क्वाड आर स्टिल अलाइव इन दिस लॉबी। शायद से यहाँ पे इंटेल जरूर मिला है एमवीपी को, जिस तरह से वो कहीं ना कहीं एडीएस लेते हुए नजर आ रही है मीस्ट बुस्ट और जॉर्ड वॉट के पोजीशन पे। अगर वो अपने अपने आप को कहीं ना कहीं साफ दिखाते हैं तो शायद से कहीं ना कहीं एमवीपी पे किल निकाल लेंगे। डेविल गॉड ओपी को भी स्पॉट कर लिया भाई, इनको इतना ज्यादा इंटेल मिल कैसे रहा है, जिधर देख रहे हैं उधर कहीं ना कहीं इनको सही स्कोप एंड सही इन्फॉर्मेशन भी है प्लेयर्स की। बट यहाँ पे ज्यादा ही एक्सपोज थे ओपन में, ऐसे ओपन में आप खड़े रहिएगा तो सुजीत भाई लगाएंगे मार्क्समैन राइफल से एक शॉट एंड आपको कर देंगे नॉक। श्योर वॉट ऑन दी अदर हैंड, ही नोज लाइक उनको भी पता है रिसोर्सेज अभी नहीं यूज करेंगे तो कभी यूज करेंगे, क्योंकि सेफ जोन आ चुका है। स्मोक ग्रेनेड डालेंगे, अपने आप को मेडकिट का प्रयोग करके हील अप भी कर रहे हैं, कंफ्यूज करना चाह रहे हैं एसके को जो उन पे कहने के एडीएस करके बैठे हुए। रैंडम शॉट्स लाने की कोशिश जरूर की गया बट कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा उस तरफ। जैसे जैसे शॉट्स कनेक्ट हुए बाकी 2 प्लेयर्स ने उन पे चार्ज अप भी कर दिया है। इट्स गोना बी पैराबॉय एंड कातिल जो जॉर्डा वॉट पे ऊपर चार्ज अप करते नजर आए। रिच के ऊपर जैसे आप जाना चाहोगे आपको काफी ज्यादा एफर्ट लगेगा ऐसे ऊपर जाने में। सामने से गए जॉर्डा वॉट यहाँ पे हो जाएंगे खत्म। कातिल एक और बेहतरीन किल निकालते हुए 8 फिनिश ग्रेवेक्स जिगर्स के नाम पे 8, तो डबल डिजिट फिनिश से ज्यादा दूर नहीं है। क्या यहाँ पे 11-12 फिनिश हमें देखने को मिलेगा ग्रेवेक्स जिगर्स की तरफ से, वो सबसे बड़ा सवाल बनते हुए नजर आता है। ऑन द अदर हैंड इज गोना बी द टीम ऑफ गॉड अवार्ड, जिनके गॉडर तो स्टार लेवल ओपी कहीं ना कहीं सेफ जोन के बारे में को यहाँ पे पिक भी कर लिया गया, स्पॉट किया, डेफिनेटली फिनिश ऑफ हमें देखने को मिलेगा। गॉड ओपी आए वो भी शिकार बनेंगे, तो ये कुछ 2 फ्री फायर मैं कहना चाहूंगा मिले ग्रेवेक्स जिगर को, क्योंकि एक अच्छी रोटेशन कट ऑफ एंड दैट रिजल्ट्स इन इनटू द हैंड्स ऑफ गेटिंग 2 kills। बट व्हाट एम आई सेइंग राइट नाउ, ग्रेवेक्स जिगर का 3 प्लेयर यहां पे नॉक हो चुके हैं, एक को फिनिश ऑफ भी देते हुए नजर आएंगे। अगर मैं गलत हूं तो इट्स गोना बी द साइड ऑफ डार्क ग्लोरी, जो अब एक उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कातिल को भी फिनिश ऑफ कर दिया, ओह माय गॉड। इट्स गोना बी इक्विटी बेस्ड जो कहीं ना कहीं अलाइव है स्टिल इन दिस लॉबी। 4v1 4v4 सिनेरियो आई मस्ट से, ओके एक प्लेयर को रिवाइव दे दिया गया। 4v2 सिनेरियो कमिंग इन राइट ऑन एंड अप अगेंस्ट पुण्य की टीम, आई एम गोइंग अप अगेंस्ट ग्रेवेक्स जिगर्स। वापस से मैन एडवांटेज में नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होने वाली है वो बाकी अदर टीम्स को कि भाई इनके पास फिनिशर्स स्किल पॉइंट्स इतने सारे हैं कि इनको चिकन डिनर की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी 200 क्रॉस कर चुके हैं, 250 भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है तीसरे मैप खत्म होते होते क्रॉस कर देंगे। इसके थोड़ा सा स्प्रे जरूर लगाना चाहेंगे M4A1 का पुण्य पे, जहाँ पे चार्ज भी करेंगे बट काफी ज्यादा लो है एचपी में, एक्सपोज होंगे, शॉट लगाएंगे बट ग्रेनेड आएगा, दोनों को लेके जाएंगे ग्रेनेड से, एसके और निक्स दोनों जाते हुए। And it's going to be a 4v1 scenario coming in right in front of us. A clear winner is here कि जब तक इक्विटी बेस्ड अगर एक बंदे को नॉक नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पुण्य की टीम को अप अगेंस्ट डार्क ग्लोरी की टीम को यहाँ पे कोई भी चिकन डिनर ले जाने से रोक सकता है। Oh, and there you go, as you say it.
As you mark the final words, here we are, SRZ, after taking a tough fight against Team GD the last game. They're back in action. They are gonna be getting the chicken dinner. Impressive enough. Also, GD still doesn't go down now. They are at least in the third position. Previous game, they were in second. This game, they're in third. MW on fourth position. And we've got Kerala versus team on fifth. Beast OP in sixth position. And it's very surprising to see them in only two-man squad though. But okay. CE, on the other hand, demigod existence was here and John Leva at seventh position with zero finishes in total. Okay, something that I didn't expect. We've got a total of nine finishes coming in from Team SRC, and we've got GD with 10 It's gonna be really, finishes. really, yeah, yeah. Like उनको चिकन डिनर की जरूरत ही नहीं है. मैं बोला ना तन्वी, उनको Yeah. अगर वो चिकन डिनर हाँ. नहीं भी निकाल रहे हैं तो इतने ज्यादा उन्होंने किल सिक्योर कर लिए, इतने ज्यादा फिनिश पॉइंट्स उन्होंने सिक्योर कर लिए हैं कि इट्स जस्ट नॉट रियली नेसेसरी. अगर वो आगे चल के दो और मैप्स Yes. पे 10-10 फिनिश और निकाल लेते, 10-10 किल्स और निकाल लेते, दैट रिजल्टेड 10 मोर किल पॉइंट्स. Hmm. देयर यू हैव 250 किल पॉइंट्स और ओवरऑल पॉइंट्स वो कहीं ना कहीं क्रॉस कर लेंगे. Yeah. Well, let's have a look at the stars of the match. We've got SRC Sparky, GD's SK, and BYR. So we've got two players from SRC Esports currently at top. Four finishes coming in from Sudhit, impressive, and the final elimination coming in from Sparky, and the best companion as GD's SK. Four revives, interesting, and a total of 1,338 survival time. That is currently the highest, at least compared to the top three we have right now as star of the matches. हाँ, लाइक आई मस्ट से, लाइक ग्रेवेक्स जिगर्स ने जिस तरह से एग्रेशन दिखाया रोटेशन करने के बाद जो पहला बना हमारा इम्पाला के ऊपर, दैट वाज रियली रियली कमेंडेबल. आई मस्ट से कि पहले थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि जिस तरह से रोटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, लमिता की तरफ से जा रहे थे लॉस लियोनेस की तरफ, बट वहां से चेंज हो गया उनका. जैसे ही सेकंड जोन बना, दे वर लाइक नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे इम्पाला के साइड में, पहले हम वर्टिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे. तो दैट वाज रियली कमेंडेबल. बट व्हाट आर योर थॉट्स एलिका? लाइक यहाँ पे हमें कुछ टीम्स वापस से कुछ अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है, बट दे आर नॉट अप टू लाइक ऑफ द टीम ग्रेवेक्स टिगर्स येट अगेन. Yeah, well, after that match, I have completely changed my views on Miramar Bullet completely because I wasn't expecting GD. Did if you watched properly the last few maps of Miramar in the Yeah. yesterday, you would have pretty much understood that Yeah. GD is not at all that good at rotating in Miramar. But the circle took a twist. Okay, I think the circle did a lot of favor to many teams. Even beginning there were only three teams which were inside the circle, but eventually I think through the zones a lot of teams fought though. For example, existence team, I think we were in second or third circle and they were still in the zone. It was a very long journey for them to make it inside the circle, but they eventually did. I think that's what vehicles are in BGMI, for easy rotations, and till the last second you can just wait before getting into the circle, and you get a vehicle, you easily get the switch up and you're in the circle, boom. But GD, nice performance, and I was a little upset not to see Vortex team doing very well. MW, that is, although they had like barely any kills, and Beast OP only two players, but still in fifth position. Now this is the kind of performance I was talking about. Only two players in front of squad, but yet they managed to be on top. लाइक आई एम रियली इन द फेवर ऑफ ऑल दीस टीम्स जिन्होंने बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला. बट गाइस, हम नेक्स्ट मैप पे जाएं वापस से. मेरा एंगल कहीं ना कहीं देखने वाले हैं तो आवर थर्ड मैप फॉर द डे. बट उसके पहले हम लेने वाले छोटा सा ब्रेक. आप देखते रहिए गुड गेम नेशन का चैलेंजर सीरीज एंड विल बी राइट बैक आफ्टर अ रियली रियली शॉर्ट ब्रेक. छोटा सा.
Guys, welcome back to Good Game Nation presents Challenger Series of the BGMI, and with me is gonna be again Elika FTW with my co-caster and my really good friend. And of course, guys, हमारे पास दो maps already हो चुके हैं. We have seen a roller coaster ride when it comes to overall positional wise gameplay, overall aggressiveness of the teams which they are playing to go into the side of Rangal and Maramar. बट थोड़ा सा बात करें अगेन इट कम्स डाउन टू द सेम टीम जो कहीं ना कहीं हमारे एकदम दिमाग में ऐसे एकदम नाम एक मार्क छोड़ दिया है. दैट्स गोना बी येट none other than ग्रेविक स्टिकर्स. यस ग्रेविक स्टिकर्स डेफिनेटली आई मीन अभी फिलहाल के लिए ना जितने भी एक मैप के बाद एक मैप जाता रहेगा ना आई थिंक वी शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट ग्रेविक स्टिकर्स बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट दे आर गोना retain that first position and no team Because will eventually reach them out. But if there is a chance, can we have a look at the second game scorecard please? After second game, how drastically everything has changed, because I was expecting team sad to go down a little bit since they did not perform very well. yep, After the first game, they came back to the second yep. position, but did they maintain the consistency? Are they still in the top three positions? Is Yeah, my yeah, yeah, question. yep. They if we like if you want to take predictions on our teams, let's take our prediction on the scoreboard. I'm pretty sure they are in the top two because 10 finishes and coming into the third place. That 8 point lead plus the 10 point lead. So definitely वो top three पे ग्रेव एक्सटीरियर्स. प्रॉब्लम थोड़ी सी वही आने वाली कि क्या वहाँ पे गॉड ऑफ वॉर जैसी टीम कम बैक किया उन्होंने एक दो फिनिशेस जरूर उनकी तरफ से देखने को मिले. क्या टॉप टू में हमें देखने को मिलती है टीम सेकंड पोजीशन पे एज वी नो. टीम फ्लॉसी भी हमें कहीं ना कहीं टॉप 5 में देखने को मिली थी. तो सबसे सबसे दिमाग में यही चीजें यही सवाल पैदा हो रही हैं कि क्या वो फिनिश ऑफ निकालने के बाद टॉप 5 में देखने को मिलेंगे या फिर कोई टीम बाउंस बैक की है फ्रॉम द बॉटम 8 टुवर्ड्स द टॉप 8. Yeah. Well, I mean, you pretty much finish all of my sentences before I even think of it, since you are covering most of the scorecard. I should definitely say there's not many teams that there are left to talk about. Just kidding. There's any teams that I would like to talk about is the bottom eight, of course, because they also had very little, score difference between them. Maybe this game should have changed them. Maybe we see top eight going down to the below eight, and below eight, one of the team emerging into the top eight. These are few differences that I'm looking forward to. But yeah, before we go down to the third map, that is a map of Erangel. A lot of changes are gonna be happening in the scorecard since this one game broke, I think, enough teams patience of coming out of their zone, coming out of their den and fighting. Har bar, if you ever noticed in a tournament, until the very last minute, the players don't actually understand that, yeah, they are coming to the end of the tournament, they need to be in top, they need to win. I've seen a lot of comebacks in the last few games in a lot of tournaments, and I hopefully think that even in this tournament we get to see something like that, since Grave Stiggers, is not going to be a hard downfall for them, but at least teams like God of War, small teams who are still trying to be yes, who are still fighting in terms of points to be in top 8, I think they can make a huge setback. And if any one of the bottom teams eventually makes their way up to the top 8 and qualifies to the invitational, then there you go, that's a big twist. Yeah, guys, let's take a look at the overall scoreboard and we can see Team Kambhari कुछ भी नहीं है इनके पास. नाम जरूर कामवारी है but they are not throwing their names. I must say, like Furious 000, Rog X4 official. I must say this is one of the teams like जो आगे बढ़ रही हैं, हमें अच्छे प्लेयर्स दिखा रही है but छोटे छोटे कोऑर्डिनेशन शायद ऑन पॉइंट नहीं बैठ रहा है इनका, कि जब इनके अगेंस्ट कोई एक बंदा नॉक होता है, इनके टीम का कोई बंदा डाउन होता है, तो उसके बाद रिटेलिएट उस फाइट पे कम बैक नहीं कर पाता है. मस्त से बात करें सेलेस्टियल्स की, तो हाँ, ये भी एक वो टीम निकल के आ रही है जो आगे जाके ग्रेवेक्स जिगर जैसी टीम को चैलेंज कर रही है टीम सैड जैसी टीम को. तो देखने में एक अच्छा एक लग रहा है कि अब दे आर इन द मूड ऑफ अ कमबैक, दे आर इन अ रियली रियली गुड मूड कि कुछ भी हो जाए, दे विल जस्ट गो एंड प्ले अग्रेसिव एंड ट्राई टू गेट दोस किल्स. Well, looks like Predators, Devil Quills, they just went down a little lower, especially Team Solo. Team Solo तो पिछले बार जब मैंने देखा था 9th position में थी, and Team Sad is still in the 2nd position. God of War at 4th, Team Flossie at 3rd. Abhigak pushed down to 8th position, a little disappointing, but Most Wanted has come back for to 6th position. Team Skull at 7th. Major changes happening. I think Skull was in bottom 8 the last time we checked, and now they are in the top 8.
a very good Yep. comeback coming in from them. And not many of the teams have hit 100 plus points. where पहले गेम के बाद मैंने तीन टीम को देखा था, बट दूसरे गेम के बाद ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं. Although God of War got 20 plus points, 24, 124 in their pack right now. And Grave Stickers, they're currently with exact 100-point difference between the first position and second position. I mean, how crazy is this? Oh, not 100, 97 to be precise. Like talking about team sad, talking about team flossy. अभी थोड़ा सा करीब आ रहे हैं, 136 पे आए हैं, 125 पे आए हैं. दे हैव दैट प्रोबेबिलिटी कि अगर एक भी मैप पे, जो कल हुआ, कल दो मैप से ग्रेवक्स जिगर्स कुछ खास नहीं खेले थे, तो अगर दो मैप्स लूज आउट कर देते ग्रेवक्स जिगर्स, दे हैव दैट चांस. बट कीपिंग इन माइंड कि आपके नीचे जो टीम्स मौजूद है, टीम्स लाइक प्रेटर, टीम्स लाइक डार्क लोडी, वो भी मौका नहीं छोड़ेंगी आपको ओवरकम करने का स्कोरबोर्ड पे. Yeah. Well, the scorecard, I think it states a lot, but not much different. Although I'm expecting the rest of the, fifth, sixth position teams to also be hitting the 100 plus points mark Yep. very soon. Yep. Yes. And without any delay, let's jump into the third match for the day in a total of map number 13 in the overall course of playoffs. Let's jump into the map of Erangel. We currently got GD, of course. And by the way, Roy Godley is back in action, but this time my NMVP is gone. We can only see Paraboy, SK, Cartland, Godley, Whitey. Why is it that the players keep switching for Team GT? Maybe they're playing in for rotation so that one player gets to. Oh, yes. I'm sorry, my mic was glitched, but yeah, I'm back in action as I was speaking about the circles. I was expecting, military base, no, in military base to be there in the circle since in Vortex team took a very bad drop to the toll. The circles formed towards the northern side, covering shooting ranges and much major area. We've got the northern side of Pochinki also got covered, but surprisingly, no team actually took a drop over towards Pochinki this time, which also triggers me a little bit. And Scorpio on the other hand already gets a knock, immediately gets crushed by Devil Tushars, and I think the confirmation will come within shortly. And I'm looking to have a toll over to the fight, but looking at Team Skull, I think they have been doing great. And ROG Phantom already goes down. Okay, Team ROG in a very difficult situation, they are taking the hard fight. Team 9 is somewhere over towards the northern side of Katka, trying to rotate, get a good loot. Not much action happening here, guys, but Gabbar and his team are having the best. SRZ's team, Spider gets knocked out. The confirmation will be coming in through shortly. And there you go. Parth, down to very low HP, might get finished very soon by Pingayana along with his teammates. Looking great. All Parth needs right now is a medic. Team existence. Last time, seventh position with
Absolutely zero finishes in their hands. Now, this is not the kind of gameplay that I was expecting for them. But hopefully, they've got all four men alive, up and running, so they don't have to be worried about it. Maybe this time they'll be able to finish off with few kills. Goat, on the other hand, Blaziken takes down Viping Hyena, but the revive will be coming in through smoothly within no time. Viping Hyena is back in action. Blaziken is still trying to get the distraction. Gabber is being the distraction. Meanwhile, Viping Hyena gets revived. Parthno gets knocked down by Warsier. I think it was a very bad idea for team number 12 to take a push over towards team number 4, but this is the last person standing by Pingai, and Gabbar has already run away. One man in a 1 versus 2 situation. Way too early, but the fight's worth it. Blaziken is tagged down to very low HP. Vazir jumps out of the building, knocking Piping Yep. Hyena down and confirming him at the same time. Two beautiful finishes coming into the hands of Team Existence. As I was speaking about them, the previous game, zero finishes, but 2 minutes into the game, they already have two finishes in their hands. Pretty impressive, but it was not appreciative the way how Gabbar dealt with the situation. He could have stayed back and helped his teammates. In turn, he tries to be the distraction, he gets away. Now, he's the loner over here. He's the only person. Like lone Well, surviving person in your yes, Alika. yeah, I was mentioning that, I think this time GD's team might not have a great chance at winning this map because Roy Godley is way far away from his team, and there is no way that he can regroup without getting caught in the eyes of ROG. And ROG, on the other hand, I think they've already lost the place, so they would be very, very angry. लाइक ऑफ कोर्स लाइक थोड़ा सा तो एक बोलेंगे ना एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर रहेगा बट अगर आप देखिए अभी के लिए क्रिएवर ट्रिगर्स के एक बंदे ने उन पे साइट अपनी निगाहें सेट करके बैठे हुए हैं ही जस्ट ट्राइंग टू लर्न आउट कि किस तरह से कहीं ना कहीं ये बंदे रोटेट करते हैं या फिर किस तरह से अपने आप को एक्सपोज करेंगे शायद उसके बाद से कॉल दें और उसके बाद हमें एक फाइट इन दो टीम्स के बीच में हमें देखने को मिलेगा बात करें सर्कल की तो काफी ज्यादा फेवर लग रहा है कि पूरा का पूरा नदन शिफ्ट लेते हुए नजर आ सकता है तन्वी व्हाट डू यू थिंक लाइक नदन शिफ्ट होगा या फिर एकदम से रुजनॉक या फिर स्कूल एकदम मिडिल ऑफ द मैप सेंटर ऑफ द मैप कहीं ना कहीं हमारा सर्कल बन सकता है लाइक द एंड जोन ऑफ कोर्स वेल सर्किल का तो पता नहीं, बट अभी जितने भी टीम्स है जो सदन साइड ड्रॉप लिया, स्पेशली पुचिंकी गटका के साइड, उनको उनको तो बहुत टाइम लगेगा सर्किल के अंदर जाने के लिए. एंड वंस अगेन दानव एंड हिज फ्रेंड इज बैक विथ ओनली डीओक्यू. व्हाई? I thought Danav's team was doing very well until the last game, but I guess Erangel map Erangel map में उनको कुछ शनि है कि only 2 player खेलना चाहिए, but मिरामर में 3-4 खेल सकते हैं. I really don't understand the logic. Yeah, of course. I totally get. It could be like हम उस phase से गुजरे हुए हैं. Like we of course you are still in college, right? Uh, बहुत सारी problems आती है while you're a student. Sometimes it's the device issue, sometimes it's the internet issues. तो शायद से maybe allow like कुछ ना कुछ problem होगा तभी कहीं ना कहीं वो 2 man squad हर map कहीं ना कहीं आज हमें देखने को मिल रहा है जो हमारा final दिन है. नहीं तो डेफिनेटली जिस तरीके से खेलते हुए नजर आई है मुझे अब फायर ब्लेडर्स की टीम तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है कि वो 4 man ड्रॉप डाउन करते हैं और हर टीम को कहीं ना कहीं एक अच्छा फाइट देते हैं. बात करें यहाँ पे जो एक फाइट बनते हुए नजर आ रही है काफी बेहतरीन बोलूंगा तरीके से फाइट बनते हुए आ रही है रॉक गोइंग अप अगेंस्ट ग्रेवेक्स डिगर्स बट मुझे नहीं लगता कि अगर ये 4v4 कमिट करते हैं तो ग्रेवेक्स डिगर्स को भी मौका छोड़ने वाली इनको एलिमिनेट करने का. आई एम प्रीटी श्योर ग्रेवेक्स डिगर विल एलिमिनेट देम विथ ईज. Yeah. I had a +1 on that, but उससे पहले कि उनको regroup तो होना पड़ेगा ना. Roy Godley is still away from his teammates. I don't know, but land तो साथ में हुए थे over towards the southern side of Pochinki, but I don't understand when or what happened that Roy Godley is away from his team. But anyway, Yep. coming back, team number 5, we've got all 3 players up and running. The Tushar and Kerala Vasi are together right now, but there is another Tushar who seems to be out of sight right now. Okay, they are actually going to regroup with him. They are going to give backup with him. And CE
Demigod on the other hand is taking a fight against Danav. Danav gets one knock, impressive enough. It's a 4v2 situation coming in through. Existence and Wazir are only both survivors. They have to pick up their both teammates, Blaziken and Demigod, and that is what exactly is happening currently. Both of them are getting revived, which means Danav and his teammate have a huge threat. Skull Hunter's car would be getting spotted out. Kerala Vasi trying to take a spray, but since it's moving, I think he won't take a shot at it. He will just watch the rotation go through. just like you know 1v3 या फिर आप ऐसे लॉन्ग रेंज पे शॉट्स पे आप कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ नहीं करना चाहोगे अपने सोर्स से उस तरफ कहने की शायद शान को हम देख सकते हैं टीम को असॉल्ट करते हुए नजर आया जैसा हमें किल फील्ड पे देखने को मिल रहा है आई वांट टू लुक एट दैट पर्सपेक्टिव कि वहां पे एक्शन किस तरह से देखने को मिल रहा है बट बात करें तुषार वासी और अब एक्चुअली दो तुषार सेम टीम है अगेन लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन हैपनिंग कि क्या यहाँ पे सेम दोनों बंदे यार लाइक थोड़ा सा हो जाता है ना तनवीर आप समझ रहे हो ना मेरी बात बट आरओजी एफएक्स 4 Yeah. दे आर दे आर काइंड ऑफ लाइक अभी भी आप जोन के बाहर हो स्टिल इन लेट और आपके उसकी वजह से 2 प्लेयर्स नॉक भी हो चुके हैं क्या वही सवाल आ जाता है क्या F4V कॉप एंड नोवा साथ में सेफ जोन के अंदर जा पाएंगे नहीं क्योंकि 700 मीटर दूर है ज्यादा भी दूर नहीं है बट ऑलमोस्ट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द सेफ जोन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा आपको चांस लेना चाहिए कि आप लेट रोटेशन ले रहे हो गेट कीप करने का मौका दे रहे हो टीम्स को Yeah. Well, but I don't know about gatekeeping, but time is a very precious factor, Bullet. And if they keep, getting comfortable with this kind of play, then it's going to be very hard for them to get into the circle. And I don't think Rozak is anywhere near to the circle. They have to go all the way to the northern side. Punya gets spotted out. On the other hand, since Spidey is down, we've only got Sparky and Punya. Sparky gets knocked out, and it's only Punya, the last man standing, who's trying to save his teammate, but will get finished. It's Devil Tushar's team who's currently attacking. Victory Halish found out the position of Punya. He's gonna put a beautiful grenade. Not gonna be doing much damage since the grenade has been dodged. The last man standing from team number 6. His position has been revealed away. He's trying to get the spray done. Get spotted out. And there you go. The finish off will be coming in. Team number 10. Victory Alish team with total of 4 finish clean sweep coming in for them. A very great start for the of game for Devil Tushar's team, I should say. लाइक प्रॉब्लम थोड़ी सी जरूर होने वाली है क्योंकि एक अभी देखिए इन्होंने टीम को फिनिश ऑफ किया मोमेंटम काफी बेहतरीन बना होने वाला है इस पूरी टीम का लाइक आई सेड आकाश गौड़ा की टीम टीम सोलो दे आर प्रीटिंग रियली वेल व्हेन इट कम्स टू लाइक टॉप 8 में भी हैं अपने आप को कंसिस्टेंट रख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द किल पॉइंट्स एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं सोलो एक्सपोजर की विक्ट्री हेलिस इवन आकाश गौड़ा वन ऑफ द सोलो प्लेयर्स लाइक नाम एक सोलो है टीम का बट वो एक ऐसे प्लेयर बनते नजर आ रहे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं अपनी टीम के लिए फिनिश ऑफ निकाल रहे हैं ही इज सेंडिंग द एग्जांपल फॉर द टीम कि अगर मैं ऐसा खेल सकता हूँ तो हम लोग भी आगे बढ़ के थोड़ा सा खेल सकते हैं बिकॉज दीज आर द कॉलेज स्टूडेंट गाइस थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है थोड़ा सा प्रोफेशनल लॉबीज में इन्होंने उतना खेला नहीं है जितना लाइक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है व्हेन यू गो इनटू द कॉम्पिटिटिव लॉबीज बट वही बात आती है कि जब आप एक अच्छा प्रदर्शन करते हो अपने टीम के लिए एग्जांपल सेट करते हो तो बाकी 3 प्लेयर्स भी वही कोशिश करते हैं कि आप भी उस तरह का गेम प्ले दिखाओ और आगे चल के अपने टीम के लिए किल्स निकालो और विजय प्राप्त करो उस मैप पे Yeah. बट फिलहाल के लिए ये पोजीशन देखे तो ऐसा नहीं लग रहा है एंड लेट्स हैव अ लुक एट द सर्कल इट्स ओवर टुवर्ड्स स्कूल एंड अ वेरी गुड पोजीशन ऑफ रोज also coming into play. Devil Tushar has been spotted out from RGFV Corp 4 week cop actually, and I think he gave a little damage to Devil Tushar's, but you also notice the fact that Devil Tushar took you know took a pause over towards the compound and he's going in there to take the fight, spots him out, sprays through the walls, and I think the backup is arriving from RG's team. And guess what? SOL Solo's team Old Year is also over here. 4 week ops in a big trouble. He does not have enough cover, and neither does he have his teammates to give him the backup he needs. I think pushing on to Devil Tushar's, pushing on to Devil Tushar's team was a bad idea. There you go. He goes down in the flames. One more finish. Clean and green. 6 total finishes. And Victory Alish will also be back on his feet. A nice try coming, although I should say, from their team. like you have to like give a very big credit a very big what should I say in the terms of casting a very big credit of course and very big like kind of like appraisal to this team ki
आप अभी जस्ट एक फाइट लिए, वापस से आप एक पोजीशन पर जहाँ पे टीम ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन पे थी, आप उसको भी एलिमिनेट कर गए। बट प्रॉब्लम यही था कि लाइक इट वाज द मैन एडवांटेज थिंग। बात करें यहाँ पे ग्रेवेक्स डिगर की, तो ये भी एक हाउस के लॉबी में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, एंड दे जस्ट वांट टू चिल आउट, दे जस्ट वांट टू प्ले द द लो की गेम। नाउ राइट ऑन की हम आराम से सेंटर ऑफ द मैप जाएंगे, काफी जेनरिक स्ट्रैट्स यूज कर रहे हैं, बट वही बात आ रही कि दे आर जस्ट बेटर व्हेन इट कम्स टू व्हेन दे आर टेकिंग एनी ऑफ दोस गन फाइट्स। एंड एलिका, यू मस्ट एग्री ऑन दिस पार्ट कि जहां से थोड़ा सा लॉन्ग रेंज यहाँ पे शॉट जरूर लगा है, Yeah. बट वही बात आ जाती है कि दे आर जस्ट बीइंग द बेटर साइड व्हेन इट कम्स टू द taking those gunfights straight away in a 4v4 situation. Yep. I mean, 4v4 still not a big deal because you've got, I think, good amount of hands to actually continue the fight. But what plays here a major role is how will both of the teams come into the fight. If you ask me, I don't think both of the teams will be committing to the fight. And have a look at GD's team. Currently, team number 18 is going close to GD's team. There's Roy Godley and his team is waiting up on the hill, and they are just gatekeeping and camping for if there are any rotations, they might get a piece of the fight. And right now, teammating going nearby, they are going to concentrate more in the circle. Although a lot of dangerous neighbors, we're down to the last 10 teams with 29 players alive. We're currently in the third zone. GD, they are currently at a compound. They are seeking much assistance than needed. And look at Parboy. I think he's already spotted CE's Demigod and his teammates, so they're just gonna keep an eye out on him. And Vritra is actually taking a fight against Demigod. Demigod is down to very low HP. Even one bullet can actually knock Demigod down at this point. And Paraboy, if he was lucky, the shot could have hit. And there comes Jordo, what out of nowhere. He's trying to take a fight, but little does he know that it's a 1v4 situation for him. He's walking into one of the dangerous team, that is GD. Like, to be really really honest right now, like most wanted की टीम को कोई भी फाइट में एंगेज नहीं करना चाहिए, बट डीपी का प्रयोग करेंगे, काफी लॉन्ग रेंज में डैमेज दिया और डैमेज लिया भी है। तो थोड़ा सा एक इशू हो रहेगा कि आप ऑलरेडी डाउन टू 2 मैन हो, आप ऐसे चैलेंज करोगे खुले में आके, तो कोई भी टीम्स थर्ड पार्टी करने का मौका या फिर आप पे पुश करने का मौका नहीं गंवाने वाली। यहाँ पे वैसे काफी बेहतरीन लॉन्ग रेंज, मतलब एक आप देख रहे हो लिखा पहले के दिन से आप बात करो अभी तक होते हुए, तो लॉन्ग रेंज फाइट्स हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ज्यादा हमें शॉर्ट रेंज फाइट देखने को मिलते हैं, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट्स कहीं ना कहीं देखना बोलूंगा। बट जैसे जैसे दिन खत्म हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे मैप्स को कर रहे हैं, टीम्स आर जस्ट नॉट गोइंग वे विद दैट क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। Yes, I mean, at this point, camping is not the position, right? At this point, we have to go get the points. We have to make a move. पहले तो हमको इनिशिएट करना नहीं पड़ता था, बट अभी इनिशिएट करना भी पड़ेगा और फिनिश भी करना पड़ेगा. So जब भी उनका responsibility बढ़ गया, they have to play it a little safer. And close combat fights काफी बढ़ चुके हैं. I definitely do agree on that point. And it also depends on the type of map we are playing in. And I think Sanok में काफी ज़्यादा ही cover है. So I'd rather suggest you to go for close combat fights than long combat fights, and you can easily rotate off in Erangel. It's not as easy as Miramar. Miramar में तो long range का काफी ज़्यादा scope है. But although look at this place, man, there are around 4 to 5 teams in the same cluster. हाँ, वो चीज आपने सही बिल्कुल पॉइंट किया लिखा, 100 और 100 मैं देना चाहूंगा आपके गेम सेंस को बीजीएमआई में। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होने वाली कि फुलार थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे उस पर्टिकुलर एज पे। आप देखिए किस तरह से एडीएस करके पिन पॉइंट करके बैठी हुई है उस तरफ से सोल्जर की टीम, वो बिल्कुल कोई मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। टीम एक्स सोलो दे आर जस्ट गोना लाइक बी लाइक, अगर मेरे को मौका मिलता है आई विल जस्ट एलिमिनेट यू राइट ओवर हियर एंड टेक दोस किल पॉइंट्स। They're just in that mood right now. Yes. But how long the mood's gonna go on, that's not for sure. But which team has the lead is its team sad. It is team sad because they're currently in the northern side. They don't have to fight with anybody. They're the sole contenders, at least for that area. And the other side of the river, the one we are currently watching, is full of teams. At least 8 teams are present currently, and they're fighting off each other. But before the next circle closes down, they need to take the rotation to the northern side. Now that is not gonna be possible for them unless
they, take few teams down. But don't you think this circle or this particular area is just so congested for too many सो teams to be जस्ट playing एग्जैक्टली around? या यप Yeah. यप यप और यहाँ पे जो टीम्स थोड़ा भी रिच का वर्टिकल एडवांटेज ले लेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ राइट नाउ, आई एम गोना जस्ट राइट आउट एंड पुट माय सिग्नेचर ऑन इट एले का, कि अगर वो टीम थोड़ा सा भी वर्टिकल एडवांटेज लेती है, सही तरह से शॉट्स एग्जीक्यूट करती है, वो यहाँ पे विजेता बनेगी, पर पैरा बॉय अपने स्प्रे मिस कर देगी, ही गेट्स नॉक्ड आउट। इस तरह का एक गलतियां मैं एक्सपेक्ट नहीं करेगा। कातिल भी उस तरफ कहना कि मुझे लगता है नॉकआउट हो चुके हैं। ओके, ही गेट्स नॉक बाय द वे, बट वहां पर रीफ्राई ले लिया गया, बट जाते जाते एक प्लेयर को जरूर कहीं ना कहीं नॉक इन कर दिए गए हैं, लेके गए हैं, एक्सट्रीमली सॉरी। बट अगर हम बात करें शाडिशान की तरफ से, तो यप जीडी कातिल जीडीएस के वहां पे फिर शेष को फिनिश ऑफ करेंगे विद दैट मार्क्समैन राइफल। प्रॉब्लम ये होने वाली है कुछ टीम्स के लिए कि जैसा अलका ने बताया, काफी कंजस्टेड एरिया है। अगर आपके पास कवर नहीं रहा, आपके पास पर्याप्त अमाउंट में स्मोक ग्रेड नहीं रहे, तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हो। बेहतरीन स्प्रे, विक्ट्री हेलेस ऑलमोस्ट डाउन टू 10 एचपी, 10% एचपी शुड आई से, पोलार नॉक्स। एक बात तो कहनी पड़ी, गन कंट्रोल, ओवरऑल रिकॉल कंट्रोल काफी बेहतरीन है सारे प्लेयर्स का, इन सारे कॉलेज स्टूडेंट्स का, जो कहने के इस में मुझे देखने को मिल रहा है। Yeah. And look at the amount of aggressiveness coming in from each team. मतलब पहले हमको पता भी नहीं था कि इतना aggressive हो सकते हैं. But now, when the situation calls for it, you have to go for it. Devil Tushar going in for the 8th finish. Akash got a old year back in coffin, but we've still got 2 more players. I can hopefully see at least 10 finishes coming in from Victory Alish's team. But look at FB Paula's situation. He's gatekeeping for Victory Alish. He's gonna spray through that. Victory Alish takes damage. It's gonna go back. He's got the backup right now. They're trying to concentrate on getting inside the circle rather than taking the fight. And Victory Alish, that is a very bad move to make out in the open. FB Polar will knock him out. There's just one more player. That is Devil Tushards. FP Polar is gonna be the end for team number 10. Vitriolish gets confirmed. Their team goes down with 8 finishes in their hands. FP Polar barely has any HP. Devil Tushars, I think he's standing exactly opposite to, you know, DS Blackout and his team. FP Polar, both of them have 2 finishes in total. I think by putting Devil Tushars to an end, they'll have a total of 3 finishes, which is still not bad. But they have to get inside the circle and look at Devil Tushars. They're just at this point they're ignoring the circle, and I think the only team to be having any advantage could be Blasty's team and Vortex team. लाइक मैं यही कहना चाहूँ कि जिस तरह का अभी टीम दिल शाह यहाँ पे आकाश गोरा की टीम, मोस्ट वांटेड की टीम दिखा रही है, टीम यहाँ पे सॉरी 5 ब्लेडर्स दिखा रही है, ऐसा एक्शन अगर शायद कल के अगर तीसरे मैप से ही हो जाता, तो क्या ही लेवल का मतलब एक हमें स्कोर बोर्ड देखना पड़ता है। देखिए कातिल वापस से विद दैट ब्लैक आइस कर देंगे, बच के निकलना चाह रहे थे, उनको जाने नहीं देंगे, बोलेंगे भैया कहाँ जा रहे हो, अभी 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 रुक जाओ, अभी तुम्हारा किल पॉइंट है जो हम अपने खाते में डालेंगे। और डेफिनेटली वहां पे नॉक इन कर दिया गया। वही देखने में बात आई थी कि बाकी अदर सेलेस्टियल के प्लेयर्स कहाँ पे डेफिनेटली कार और वेकिल लेके, वेकिल या कार जो भी कह लीजिए, उसको लेके अलग रोटेशन पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। Let's have a look at Demigod's team. Although I strictly, forbid. I mean, at least I strictly don't support the fights going on in a running vehicle. But Exactly. I guess it's fine when you have 3 more mates along with you to give you backup. This is the high ground area, very good way to start. But I guess FP Polar just spotted him out. A beautiful knock coming in through with the confirmation coming through. I doubt that because Polar is also down to very low HP. He has to get healed. Wazir is on his knees. Blaziken is also tagged down to very low HP. Existence still trying to survive. Blaziken goes down as well. 2 players are on their knees. It's just Wazir all by himself who has to pull out for 1v1 situation and get the revival for 2 of his teammates. Demigod gets confirmed. Skull Goku on the other hand gets knocked. Vortex will go down and so will Blasty get knocked down. 6 finishes for Gravix Stickers. This might be their map. This air angle might be their chicken dinner. We are in the very last few stages of the circle and there's only one player inside the circle and I believe it is GD's team. And look at Devil Tushar. I mean, he's in water. Once the circle start to close in, there's no way that he, there's no potential that he could climb up and, take the fight.
ऑफ कोर्स यहाँ पे कातिल के पास एक अच्छा एंगल जरूर बना हुआ है, लास्ट 5 रिमेनिंग टीम्स, बट वही बात आ जाती है, यू डाउन टू 3 मैन जो स्कैटर्ड है काफी। मैं बोलूंगा बीच में एक जो स्पेस है वो काफी ज्यादा है। डेविल तो शाउट ऑन द अदर हैंड पानी में भी स्विम करते हुए नजर आ रहे हैं, शायद से एज पे जाना चाहें, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ से ऊपर तो नहीं आ सकते, यू हैव टू गो टुवर्ड्स द एज एरिया माय फ्रेंड्स। जस्ट वहां पे जो बोल्डर बना हुआ है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। आपको टाइम मिल जाएगा, बट वही बात है कि अगर आपको कोई स्पॉट कर लेते हैं आते आते तो आप बहुत गलत पोजीशन पर हो। यहाँ पे एसके बेहतरीन मार्क्समैन राइफल का प्रयोग, गॉडल तुषार को नॉक देखने को मिल रहा है हमें चारों एंगल पे फाइट। बट वही बात आ जाती है कि 3 जीडी के अलग प्लेयर्स 3 अलग डायरेक्शन में और 3 अलग टीम्स को अकेले संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई एलिका। यस, बट अभी एक्शन खत्म नहीं हुआ, मेरे को लगता है लास्ट सर्किल है, बट एक ही एक स्मार्ट टीम है, वो है जीडी। सर्किल के अंदर ऑलरेडी पहुंच के बैठ चुके हैं, एक ही पर्सन बैठा है, बाकी सब यहाँ पे अपने फाइट ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सर्किल के अंदर पहुंचे। दैट इज केरला वासी एंटरिंग इनटू द डेंजर जोन। आई मीन डेंजर जोन मतलब अभी लास्ट सर्किल है ना, तो फिलहाल काफी सारे फाइट्स होने वाले हैं। Kerawasi being the only player from his team, Epipolar, currently the center of attraction. The last circle, we could barely even see any players. JDSK goes down. Not sure who's shooting him, but I think he's in a huge risk. Cartel takes down the car. It's gonna move back a little. There is no cover. Absolutely no cover. Devil Tushar gets spotted out. The door is open, and Cartel is gonna go around him. Devil Tushar barely any HP left. I think he's gonna get knocked down right now, and maybe even confirmed. And there comes the knock. There comes the confirm. GD with 11 finishes. I feel like they're gonna get the chicken dinner back. But Kerala Vasi, he's in for the charge. He's in for the change, but he has to pull up for one veto Oh my god, situation. never mind. Did Never mind. did did he pull off or did he get taken down? And there you go. He What a got taken. prediction was that? GD. Ooh. GD is back in action, guys, at Angle, and now they get the chicken dinner. You know, remember when I said you the predictions and I was like so confident about GD since they are When not did you very make a good at prediction on Miramar, but GD? yeah, You didn't make a then that's prediction on great. GD. I said it the In first. between map, I mentioned several times that GD wants to go in for that chicken dinner, at least, comparing to the number of finishes they had. And look at Roy Godley, My 5 finishes. co-caster, my co-caster is just trying to play safe, guys. Now I must say. I'm trying to play on the winning side. Anyway, moving forward, we have Tushar's team with only 3 players this time. I think it was Tushar, Vasi, and they still managed to be in the second position with only 3 squad. Victory Ali, Yep. Shakash Gowda's team, third position, 8 finishes, 7 finishes, all by Devil Tushars. Wow, that is the second highest we've seen after Biping High, and not much Yep. happening from rest of the teams. Team sad. They're in the 10th position with 2 finishes in hands and only 2 players. That's the least. And look at his team though. Jordan Wood only 1 player. Yep. You have to give credits to the teams like Devil Tushar, यहाँ पे जिस तरीके से उनकी टीम ने ओवरऑल परफॉर्मेंस किया है, आई मस्ट से लाइक टीम एक्स सोलो, टीम सेलेस्टियल, टीम गर्ग, दीज आर 3 ऑफ द टीम जो कहीं ना कहीं चैलेंज ऑफ करते नजर आ रही ग्रेवेक्स जिगर्स को, क्योंकि सवाल ये नहीं पैदा हो रहा है एलिका की ग्रेवेक्स जिगर्स को कौन हराएगा, क्योंकि 240 ऑलरेडी अब वो कहीं ना कहीं क्रॉस कर चुके हैं। एक और चिकन डिनर, एक और 10+ डबल चिडेट का उनको फिनिश ऑफ मिल चुका है, तो दैट मेक्स की इट्स नॉट जस्ट पॉसिबल, व्हाट पॉसिबल इज कि आप उनको सप्रेस कर पाओ, आप उनसे अगेंस्ट फाइट ले पाओ, उनको एलिमिनेट कर पाओ और उसके बाद फिर क्लाइंब अप करो स्कोर बोर्ड पे। And well, फिलहाल मुझे लगता है कि यही हुआ है. Beautiful performance. Although I was expecting a little, much from Team Skull, but since Goku or Baki players nahi the, there were only 2 players. And there comes Devtush as a total of 7 finishes. The best existence, although died out way too early before his teammates, has been the best companion, 3 times revive. And we've got the final finisher, that is Roy Godley. I think Roy Godley had 5 finishes. Yep, he did. And look at the distance traveled, 8,209. I think it's the distance between Yep. Earth and Moon. Or can be much more than that. Really, really good work putting in from my co-caster to get the proverbs right. But I must say, Alika, like I'm really impressed with your overall casting on BGMI. Like there are many things to learn from you.
बट कमिंग इनटू द मैप साइड, हम गाइस इसके बाद जो अगला मैप खेलने वाले हैं, दैट्स गोना बी अगेन द मारमार, एंड उसमें क्या एक्शन हमें देखने को मिलता है, वो सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि ग्रेवेक्स जिगर्स अरंगल पे उतना अच्छा, सॉरी मारमार पे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हुए नजर आ रही है जिस तरह से वो स्ट्रांगली खेलते हुए नजर आ रही है ऑन टू द मैप ऑफ अरंगल. Well, I have nothing much to say, but I should definitely believe in one fact. We still have two maps for the day, and well, अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ है जीडी को एटलीस्ट. I mean, what is the irony that जीडी is already in top, but they still maintain to be on the top. I mean, कल जितना मतलब मैंने इतना परफॉर्मेंस तो कल देखा नहीं था जीडी से. They were very very okay. They did not get one chicken dinner, but they made sure that they had good number of finishes. But today they have one chicken dinner and one second position and one third position. All three maps have been productive maps for them, and for the rest of the teams, they're barely making it to the top 5. They're barely doing it. And अक्सर ये होता है कि either the teammates missing or team just has 2 to 3 players, which in turn affects the gameplay. We will talk about the effects, the factors which are going to affect the gameplay after the break, guys. You are watching Good Game Nation Challenger Series. बने रहिएगा stream पे. We'll be right back after the short break.
Welcome back, ladies and gentlemen, to GGNation Presents Challenger Series, and we are currently in the last day of the playoffs, as I keep mentioning it, and we are down to the last two games. And the first three games, they went very great, with GD getting up a chicken dinner, which I completely did not expect until we got into the map. But the next two games are going to be Miramar, and we're going to be ending the playoffs with a Banjo map of Erangel. And anything that you want to say about say about the previous game, Bullet? लाइक क्या कल जो एक जो चीज़ देखने को मिल रही थी लाइक ग्रेवेक्स जिगर्स को उतनी ज़्यादा टीम्स चैलेंज नहीं कर पा रही थी राजस्थान की 2 मैप्स पे हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहे थे। आज वो चीज़ थोड़ी-सी उल्टी हुई है। लाइक ग्रेवेक्स जिगर्स ने लाइक बीइंग लेस ऑन द 3v4 सिनेरियो एक वहाँ पे चिकन डिनर लूज़ आउट किया। थर्ड मैप पे कहीं न कहीं उनका कमबैक ज़रूर देखने को मिला बट उतने ज़्यादा फिनिशेस डेफिनिटली वो निकाल पा रहे थे कंसिस्टेंट। बट हाँ, टीम्स आगे बढ़ रही है उनसे ज़्यादा अब डरी हुई नहीं है, उनसे ज़्यादा अब एक एक खौफ होता है ना, एक लॉबी में कुछ टीम्स का बनते बनते हुए हमें देखने को मिलता है, वो अब नहीं बनते हुए देखने को मिल रहा है एंड टीम्स आर रियली पुशिंग फॉरवर्ड टू टेक दैट टीम डाउन। बट वही बात आ जाती है कि जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो सबसे बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है व्हेन Yeah. व्हेन वी विल फिनिश ऑफ ऑल द 5 मैप्स जिसमें से अभी 2 मैप्स ऑफ कोर्स बाकी हैं। बट आखिरी के दो मैप है, इसके बाद आराम से हमें पता चल जाए कि कौन प्लेऑफ्स में जाएगा, सॉरी कौन इनविटेशन में जाएगा एंड हु इज गोना गो बैक होम. बट आई प्रीटी मच डू बिलीव कि there's been some major change at least in the leaderboard, I would say. And I did not expect that, bottom teams would be so sportive on the last day and make their way up all to the top, because whatever the core game, that only happens in the first 2 days. Eventually the last day is just for a luck game for you. If you Yeah. eventually find luck, then easily you can make it to the top table, or else you're just gonna stay at the bottom. Let's see if any of these bottom 8 teams will find any luck. Although the top 8 teams also have to maintain their consistency, it's not about luck for them. It's about their pure firepower game which they have to maintain. And GD, I think no team can even touch GD at this point after getting that chicken dinner, especially though. Yeah, of course, we're gonna go towards our next map, and the next map is of course gonna be again Marmar. And like you said, Alika, the GD is very, performing well on towards the map of Triangle. Struggles a little bit to rotate, struggles a little bit to take the gunfights one on one with another team when it comes to Marmar. I don't think so कि लाइक अगर कोई टीम उनको चैलेंज करती है Marmar पे तो लूज आउट के एक्शन में रहेगी यहाँ पे ग्रेवेक्स डिगर्स. Of course, काफी other teams like Team Flossy, Team God of War, Team Skull really have that chance to capitalize over them, converge over them for that chicken dinner. But let's see what the story goes in when we will go towards the map. Yes. Well, only few seconds until we see the With the scorecard, and I think scoreboard, it's yeah, already ready. Yeah, scoreboard, and here we are. card, The overall board. scorecard. I mean, it's fine. It goes both ways. But yeah, we've got Devil Souls, Predators, Team X Solo on 9th, 10th, 11th position with 81 points tied between Predators and Team Solo. Devil Souls at 87 points. So a last opportunity for Devil Souls and Predators at this point, if they want to make it top 8. Yep. And let's flip the card, watch at the top 8, although the first one being already taken by Gravex Stickers, I believe, and second should be Team Sat. But in the last map they came at 10th position, so I really doubt if they're still contesting in that second position. To be really honest, if we talk about Devil Souls and Predators, yes, I completely agree with your part. But Team X Solo, even Team Celestial has a chance to be frank. जिस तरह से उनका प्लेस लास्ट 3 मैप्स पे देखने को मिले हैं, अगर वैसे ही प्लेस आगे के 2 मैप्स पे देखने को मिल गया, 2 लगातार सेकंड डिनर्स हमें देखने को मिल गया, तो स्टोरी कुछ और रहेगी. बट व्हेन यू लुक एट टॉप 8, top 4 story is something else. Team Flossy already crossed that 133 mark. God of War with 142 points. Team Sad with 151, and OMG, or I say OMG yet again because I cannot say that By the the word. way, Apex figures 273. Yeah, please go on. yeah. A fact coming in through. Abigarg on the 8th position, Devil Souls on the 9th position are tied. 87, 87. Even Predators and the team below them are also tied on 81 points.
So it's a big deal. The last two maps are going to be big deal for Ravi Garg and Predators along with Devil Souls. It's their last two chances to make it up to the top eight. And I guess Team Flossie, God of War and Sad should be, comfortable enough right now because Dark Glory's Team Flossie team also has a huge difference. Even if they get 30 points in a game, they still can't, move past Team Flossie. I think so. The top four positions are fixed, or maybe Team Flossie can end up in the third position. Even second position looks pretty dominating for me. Team Sad, although they're not making major moves like getting chicken dinner or getting more number of Yep. finishers, Yep. but at least every map they're maintaining the same position, retaining the same position. Placement points also plays a huge role. Look at the number of position points they have, 76 and only 75 finishes. You see the balance. If one map if the one map they're concentrating on position points and the other map they're trying to concentrate more on finishes, which eventually balanced it out for them, and they're currently at 151 points. Yeah, let's see, what the storyline goes in for the last two maps. Again, guys, it's going to be the Marama last में हम खेलेंगे. देखेंगे इन टीम्स को बैटल आउट करते हुए तो the map of Wrangle. Of course, Marama पे थोड़ा सा ज़्यादा मैं बोलूँगा एक मैं बोलूँ like to be frank with last four maps or last eight maps that I have casted. सडन शिफ्ट उतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही टीम्स को, या फिर टीम्स आर नॉट इन रियली इन टू मूव टू मेक दैट सडन चेंज द पोजीशन, क्योंकि जैसे ही ड्रॉप डाउन हो रहा है, जोन अपीयर हो रहा है, तो दे आर जस्ट डूइंग दैट लूटिंग फेज, दे आर जस्ट फिलिंग अप देयर इन्वेंटरी की क्या चीज़ें चाहिए फाइट्स के लिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपके पास बेहतर इन्वेंटरी नहीं रहेगी तो व्हेन इट कम्स टू अ बीआर गेम यू आर हायर चांसेस है आपके कहीं ना कहीं फाइट लूज ऑन करने के लिए. तो आपको जो गन्स यूज करना है, जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको चाहिए, आप आप कॉन्फिडेंट हो उस वेपन्स को यूज करने में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है rather than कि जो भी गन मिल रहा है. जस्ट प्लेयर्स नीड टू बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल, टू बी रियली ऑनेस्ट, कि आपको जो भी गन मिल रहा है, जो भी चीज़ें आपके पास है ड्रॉप डाउन लूट में, आप उसको यूज करो और इनिशियली पहले जोन के बाहर किल्स निकाल लो. Yes. Well, वो strategy भी एक अच्छी strategy है, but if you ask me what is my, what are my tips for the last two games, stay calm, keep it normal, don't get overexcited or take hasty decisions, going for a class drop, and take initiate fights. This is gonna be a very huge attraction for all the teams. ये जैसे सोचूंगी हाँ Yep. आखिरी के दो टीम है, हमें पता है कि हम ऑलरेडी टॉप में, हम जाके फाइट इनिशिएट कर लेते हैं. You might not be in a bad position, but other team might get better. What if other team is doing something impossible that you didn't expect them to do? What if other team is making a comeback? So that eventually will affect your scorecard in one way or the other way. So that's why I'm saying teams, all the very best for the last two games. If you guys are hearing out, if anybody is watching the stream. But meanwhile, if you want to know more details about the invitation, you can go follow us on Instagram. The links are mentioned in description, and you can also see it on the bottom right of the screen. We are GG Nation. You can find us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram. And if you want to give us any tips, or if you love our casting, you can follow us on Instagram. That is Bullet the Crazy Gamer. And this is Tanvi Jasmine Finally, at the Pavilion. girls get my IG username right. Finally in the world. Finally. Of course, Yes, guys, finally. we're gonna go get straight into the game. Marma, it is last second map of the day, last second map of this Challenger Series. We're gonna be like a pretty much a decider map for all of the bottom eight teams. अगर वो चाहते हैं इनविटेशनल के लिए क्वालिफाई करना तो. Hmm. वेल मुझे तो लगता है कि क्वालिफाई होना तो होना ही है. ओह तो सरप्राइज, पिछले मैच में हमको 13 टीम्स दिख रहे थे, इस बार पूरे के पूरे 14 लग रहे हैं. एंड देखो ये जो ऑब्जर्वर था ना, इसने भी साइड बदल दिया. अभी पिंग हाई है ना टीम का. पहले तो हमको पूरा गेम जीडी का दिख रहा था, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन ओके नेवर माइंड, ही इज बैक टू जीडी. लेट्स हैव अ लुक एट द प्लेन पाथ. इट स्टार्ट्स ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न साइड डाउन टू द साउथ ईस्टर्न साइड. It's a lot, it's a lot tilted over towards the right side. So I think reaching El Pozo would be like an impossible deal. Even Valdelmar, Picardo is going to be a very interesting area for drops. Although I don't think teams are gonna take clash drops anyway. Los Ecos, I'm not expecting any teams to take a drop over there. Graveyard and power grid can be two most important things. GD on the other hand, we've got MVP, Paraboy, SK, Cartel, and once again
Roy Godley does not like the map of Miramar. Now I finally broke the code of Team GD. Why they don't make Roy Godley play in Miramar is that it's not where one of their strongest maps, and Roy Godley, I think he just believes that he's better off at this map. Yeah, of course. Like if you take a look about drop locations for team Gravex Triggers, तो like yep, उनके तरफ से भी कुछ मैं बोलूँगा. इनिशियल चेंजेस स्टार्टिंग में ऑन द फर्स्ट सेकंड डे की बात करें, कल उतना ज़्यादा नहीं देखने मिला था, बट टुडे इटसेल्फ दे आर लाइक प्री कंसिस्टेंट विद देयर किल पॉइंट्स और आई मस्ट से द फिनिशर्स, क्योंकि वो रिजल्ट कर रहा है एक एक किल पॉइंट पे. अब हर मैप पे आप ऑन एवरेज दे आर टेकिंग 8-9 फिनिशर्स, तो they're just pretty much secure with that 200, almost crossing 250 overall points. बात ये आ जाती है कि क्या टीम सैड जैसी टीम, क्या गॉड और वॉर्ड जैसी टीम, क्या टीम फ्लॉसी जैसी टीम कम बैक कर पाएगी, और क्या यहाँ पे फिश फाइट हमें देखने को मिलने वाला है. Yes. And there was a way too early fight coming in from Jordan Watt's team. A beautiful knock coming in through battle. Will the opponent team react back? I'm quite not sure about it though. But a beautiful finish, first blood within the very 1 minute of the game. Impressive. I hope they keep continuing the entire game like this. But keeping that aside, Punya and his teammates should be very disappointed because even in the last match, I think there were only 3 players, and Punya got taken down very abruptly, and so did Sparky. Ah, there you go. Sparky walks into the crosses of Jordo Watt, leaving Punya the last man to be standing for his team. Yep, and this is not the position what they want to be in. Dark Glory. आप ऑलरेडी 3 मैन कहीं ना कहीं स्क्वाड आप ड्रॉप डाउन किए थे इस मैप पे. यू आर डाउन टू द सोलो सर्वाइविंग गाय पुण्य ऑलरेडी. एंड लाइक अभी पहला जोन स्ट्रिंग लाइक बना भी नहीं है, लाइक ऑफ कोर्स लाइक बन गया बट स्ट्रिंग होना स्टार्ट नहीं हुआ है. एंड initially we can say a bad decision to drop down in the same place where these guys were. If we take a look at the zone जो हमारा पहला फॉर्म हुआ, again taking a very northern shift towards the side of Toria Buhama, or maybe you can say Al Azhar. पर प्रॉब्लम ये होने वाली है कि कुछ टीम्स जो अभी अल्जहार के साइड पे है, अगर वहां से जोन शिफ्ट होकर एल्पोजो चला जाता है या फिर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट ले लेता है, तो कुछ टीम्स को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा अराउंड देयर रोटेशन, एंड मे बी दे कैन गेट अ रोटेशन कट ऑफ from some of the key teams like uh, uh, teams like which is the Celestial Esports, Team Celestial Esports. Yeah. Well, Team Celestial, I don't think they have a very good start because they're in the bottom, I guess. And Team Sad, on the other hand, again, Sad, only 2 players, if you want to literally say. I don't know why would teams like what's the entire creativity behind putting names like Team Sad, Team Solo? I understand, Uh, Gravix stickers. no, That's no, a no. very great initiative. Good. Achha, what do you think? Why did I keep my name Bullet? Do I look like a bullet? No, it's just a name. It just looks cool. Sounds cool. Sorry. Yeah. Well, Team 5, on the other hand, Team TR Jatin, they're going in for a quick rotation. We've got Vishesh and Team Sad Ishan. And since they're only the duo, I'm not expecting them to go for longer lengths, but at least keep it safe. Like how previously we saw a 1v2 coming into their situation, and this time maybe they can do much better. 2v4 is still possible. I wouldn't say it's impossible. But let's go. Team Sarishan, they're going to be taking the vehicle. They will be making their way into the circle. Although I want to have a look at the map right now. Where exactly is the circle formed? Where are the teams? Is there any team, like multiple teams contesting at one place? GD, over towards a very risky position. They've also got Scorpio's team around, so they have to be very, very careful. Like they have to be really really careful, but वही बात आ जाती है कि अगर वो 2 मैप्स लूज आउट भी कर देते हैं तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है स्पेसिफिकली ग्रेवेक्स जिगर्स के लिए. इफ यू टेक अ लुक एट द स्कोर बोर्ड तन्वी, प्रॉब्लम ये होने वाली है कुछ टीम्स के लिए कि जो उनके जस्ट बॉटम 8 में जैसा हमने देखा वहां पे कि एकदम 4 टीम्स का एकदम सेम है, बैलेंस है पूरा ओवरऑल पॉइंट्स. तो वो चीज काफी ज्यादा मैटर करने वाली है कि कोई भी उनमें से कोई टीम पहले एलिमिनेट हो जाती है तो जो उनके नीचे या उनके ऊपर टीम रहने वाली है स्कोर बोर्ड पे
उनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्वालिफ़ाई करने के लिए इन्विटेशनल सीरीज़ के लिए। Yes. Well, फाइट्स तो अभी दिखेंगे नहीं सिंस लास्ट 2 मैप पे तो काफ़ी सेफ खेलने वाले हैं। बट जब फाइट या इनिशिएट होगा तब तो कोई रोक नहीं सकता है। B2K Skull, we've got this time all the four man. Cartel is down to very low HP. I think it's been spotted out and he's taken quite some damage. B2K's Skull gets spotted out in the open, gets confirmed. A very quick kill coming in from Escape. Beautiful start for the day. I mean, for the map for them. We've still got 3 more players from Skull's team. Yep, yep. And of course, they have got one finish from coming in from side of getting Stickers, and they will be looking forward for more of that. But B2K Skull, not really a good way to start this particular map because you don't want to take that initial damage, that initial disadvantage of the other manpower. क्योंकि ये जो मैन पावर का डिसएडवांटेज हमने देखा ग्रेविक स्टिगर्स को सेकंड ही मैप पे कितना ज्यादा अफेक्ट किया था। जोन हमारा श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है एंड दिस गाय राइट हियर रैग्नार is probably almost like a little bit away from the zone. अभी just in case इस पास में zone गया vehicle इनके पास जो मिनी बस मिनी वैन and or should I say in the देसी part ओमनी टाइप vehicle जो इनको मिली है उसका प्रयोग करके डेफिनेटली कहीं ना कहीं जोन के अंदर जाना चाहेंगे एंड जो टीम्स पहले से यहाँ पे जोन के अंदर है डेफिनेटली दे विल बी ट्राइंग टू गेट कीप दीज ऑल ऑफ दीज टीम्स जो कहीं ना कहीं जोन के अभी भी बाहर है। Yeah. Well, at this point, as the circle's moving further, Team GD has to make their way inside the circle. Loss is not gonna be one of the places for circle. So I think it's probably not inside of Miramar again. Thing which did you if you look at the probability of statistics, the most of the times the circle ended up in the northern side of the Miramar itself. I think it has more potential. Also got Punya all by himself in a 1v versus 13 teams. But if he has to take the rotation, he has to be very careful. There's Team Soul, Spencer's team, and another team rotating nearby them. And he's on feet. He especially does not even have the vehicle, and the damage is going too high. Even if he gets knocked down, no teammate to revive. It's a one-man game right now. CSR's Gyro team currently will spot out MX Vortex team. Are they gonna take a drop? Are they gonna wait and take fire at Vortex? Yep, they're definitely gonna do that. But Vortex, I think they've already made their way inside the compounds. With very little HP left, Team 14 will be using feet to get inside the circle. Although it's not a very ideal position to start the fight, Bullet. लाइक लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ फाइट जैसे जोन के बाहर यहाँ पे पुनिया अकेले लोन पे होने वाले उनको भी पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी साउंड क्यू दूंगा जो भी पर्सनल पॉइंट्स मैं सिक्योर करना चाहता हूँ अपनी टीम के लिए वो मैं लूज आउट कर सकता हूँ एंड दैट्स गोना बी नन अदर टीम्स फ्रॉम द साइड ऑफ सोल स्पेंसर। ये एक ऐसी टीम रही है जो आगे जाके दिस गोना बी द टीम फ्लॉसी जो टॉप 4 पे अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं। बट वही बात आ जाती है कि जो मिनी वैन वो लेके बैठे हुए हैं इसका कितने हद तक वो प्रयोग करने वाले क्योंकि आप इससे ऊपर इतना वर्टिकल तो आप डेफिनेटली ड्राइव नहीं कर सकते। इतना फिजिक्स तो डेफिनेटली मुझे भी आता है। नहीं पैदल पैदल ही मत कर यार ज्यादा दूर थोड़ी शिफ्ट मारता तेरे से तो। Yes. Well, team number 14, not much happening over there, but we still got Ankur and Dana once again. The deadly duo is back, but this time hopefully for a good one, and they do not have to start the fight against Team Ragnar. And I guess Dana is going in for the kills. 400-500 मीटर थोड़ी मार देंगे तुझे। Yep. लेफ्ट से भाग लो, चेक के लेफ्ट से भाग लो। Things happening over here are pretty basic but pretty slow. but यहाँ पे एक spot करेंगे रैग्नार को, गोरेग्रोड को knock भी कर देंगे, ब्लिट्जकिन भी आगे नियॉन एमवीपी को knock कर देंगे। Oh my god, I'm this happening right now कि one of the strongest teams in this lobby getting knocked out, battleground का बेहतरीन shot लगेगा उनको भी नॉक कर दिया जाएगा। पर प्रॉब्लम ये होने वाली है मिकी की टीम के लिए कि सारे के सारे प्लेयर्स खत्म हो चुके हैं। मिकी को भी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा फ्रॉम द हैंड्स ऑफ गारगॉड एंड व्हाट अ लवली प्ले कमिंग इन फ्रॉम द साइड ऑफ सोल स्पेंसर। पूरी की पूरी टीम देखते देखते फिनिश और 4 बेहतरीन किल पॉइंट्स उनके खाते में लिखा। हेलो हेलो ऑल पे हेलो ऑल और कहां पे चल रहा है? Things are just not really going in for the side of Tushar's teams. If we take a look at God of War,
में, अभी मत जा जोन में, लास्ट बट चाहिए जोन का बट डैमेज लेके यू नो चाहिए। पोजिशनल भी आपको खेलना है, और फर्स्ट आपको थोड़ा सा किल्स भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि टीम फ्लॉसी नोज दैट कि आप अब हो चुके हो एलिमिनेट। आखिरी जो आपके पास चांस होने वाला है वो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट मैप पे। बस फर्स्ट एड रखियो अपने पे दबा के, और चीजें थोड़ी सी हाँ बता ही रहा हूँ। ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट होने वाली है, cause they have the right amount of क्या loot बोला नहीं है? देखने को मिल रहा है। चलो ऑल पर बात करो, दो तीन बार खोल कर चले जाते हैं। चल एक स्क्वाड वाइप हो गई, अब निकल ले, बस निकल ले। खूप नको राइट में थी, राइट लेफ्ट भी नहीं पता क्या। Things are just not अरे really going भाई to the sides of the Godel team। पेडवेल गॉडपी ने मेडकिट जरूर लगा लिया अपने लिए, उनके जस्ट पास में ही टीम होने वाली है ROG FX4 की। थोड़ा सा एक मैन एडवांटेज जरूर है, पर प्रॉब्लम होने वाला है कि ROG FX4 की टीम अपने आप को पोजिशनल वाइज काफी अच्छे से लेके बैठी हुई है। दो बंदा किसी और हाउस पे फोकस करके बैठा हुआ है, टू प्लेयर्स आर हैज देयर पोजीशन टुवर्ड्स अनदर साइड। अब डबल गॉडोपी पे एक शॉट लगाएंगे प्लास्टिक के ऊपर, डैमेज दिया थोड़ा सा, आर्मर जरूर करने के रिप ऑफ जरूर कर दिया होगा, बट बोल्डर के जस्ट पीछे और उसके उनके जस्ट ही जोन भी अगेंस्ट आने वाला, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से कहना कि आगे चल के वो फाइट लेना चाहते हैं। गॉड के तरफ भी शॉट आएगा, ही आल्सो गेट्स अ लॉट ऑफ डैमेज, ही टेक्स अ लॉट ऑफ डैमेज। मेड किट लगाएंगे, पीछे जाना पड़ेगा, उनको कवर में रहना ही पड़ेगा किसी भी हद तक, बट वॉर्टेक्स देखते देखते गॉड को नॉक कर देंगे। मोस्ट वांटेड की तरफ से बेहतरीन गन गेम प्ले देखने को मिल रहा है हमें इस पर्टिकुलर एरिया पे, बट यहाँ पे अगर हम बात करें काफी सारी टीम्स प्रेजेंट है, तो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है उन टीम्स के लिए जो अभी भी हाउस के अंदर कवर लेके बैठे हुए हैं। अगर जोन उनके अगेंस्ट गया तो पूरा पूरा गेम चेंज हो जाएगा, देखते ही देखते। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ प्लेज FX4 बदमाश हमें दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास बेहतरीन M4A1 की राइफल प्रेजेंट है, स्कोप भी बहुत बढ़िया प्रेजेंट है, मस्त एकदम। लाइक कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि अगर थोड़ा सा भी एंगल्स एक्सपोज करते हैं गॉडल की टीम तो डेफिनेटली उनको चांस मिलेगा। बट उसका देखते देखते ओपनिंग निकाल दी FX4 ने, चांस है, मौका है, बदमाश थोड़ा सा रशियन के मूड में, बट नहीं रुक जाएंगे। यहाँ पे एक और नॉक देखने को मिलेगा MW वॉर्टेक्स की तरफ से, तो शायद से थर्ड पार्टी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिले टीम आरजी के साइड से, बट उधर तुषार कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिए जाएंगे। देखने वाली बात आ जाती है कि ROG X4 कितना ही ज्यादा आगे अग्रेसिव जाएंगी या फिर वेट आउट करेंगी कि बंदे हमारे ज्यादा सामने आए, तब हम कहीं ना कहीं कवर में रहते हुए उनको एलिमिनेट करें और किल पॉइंट्स निकालने की कोशिश करें। बात करें यहाँ पे कुछ अदर टीम्स की, तो इट्स गोना बी केरला वासी की टीम। डेविल गॉड ओपी, गॉडल तुषार, पिया जतिन, दे आर जस्ट खत्म हो चुके। गॉडल तुषार एंड पिया जतिन हैव बीन एलिमिनेटेड। गॉड ओपी एंड द अदर गाइस जस्ट स्टिल राइट देयर सर्वाइविंग। बेहतरीन ग्रेनेड गया, मुझे एक सेकंड लगा कि अभी यहाँ पे किल फीड जो आया वो आया, यस नेट आया, पे डाउन हो गए गॉड ओपी। FX4 को थोड़ा सा आगे चार्ज अप करके शायद से किल कंफर्म कर लेना चाहिए, बट उसके पहले एक और ग्रेनेड कुक करने की कोशिश, शायद इसी ग्रेनेड से वो कहीं ना कहीं उनको फिनिश ऑफ भी करना चाहेंगे, बट मोस्ट वांटेड का एंगल बना हुआ था। बेहतरीन नेड, ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली ग्रेनेड दैट वाज, एंड इतने दूर से आपने कुक किया, एंगल आपको पता चला, एंड यू गेट दैट नॉक, यू गेट दैट फिनिश टू। What a lovely plays coming in from the hands of these teams की जब भी ग्रेनेड प्लेस देखने को मिल रहा है, जब भी एक लॉन्ग रेंज असॉल्ट राइफल का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है, काफी बेहतरीन। दैट टेल्स these guys like how much really they are experienced in this particular game, particular map, particular overall strats। बट यहाँ पे जोन बनते हुए नजर आ रहा है, जोन अगेंस्ट हो जाएगा टीम में 50 और टीम में 5 के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि ये है हमारा तीसरा जोन, थोड़ा बहुत ज्यादा डैमेज आपको देता है। प्रॉब्लम ये होने वाली कि जो आखिरी बंदा बचा होने वाला है वो FX नोवा को नॉक कर देगा। कैला वासी क्लोज क्वार्टर है, अगर शॉटगन है तो सीधा आई विल रिकमेंड कि आप आगे जाओ और उनको स्ट्रेट अप फ्रंट पे ही दो, बट एक्स नीड आएगा वासी की तरफ से। ओ माय गॉड, एम आई विटनेसिंग, लाइक मेरे आंखों के सामने ही हो रहा है ये, बट वो जोन को मिल गया किल। बेहतरीन क्लच आई मस्ट से, फाइनली एक जो नॉक था उनको फिनिश में कन्वर्ट करेंगे, बट क्या ही बेहतरीन 1v3 क्लच। केरला वासी मान गए साहब। Still
Gravex Diggers on the other hand, they're still trying to, struggling to find those openings, struggling to find that. But opening की बात की, Paraboy को मिला head, दे दिया सीधा, and वहां पे Paraboy हो जाएंगे knock. Paraboy and God XKK, they are the duo survivor of this teams right now. दोनों अकेले बचे हुए हैं, तीसरा और फोर्थ मैन they are finished, they have been eliminated. सेलेस्टियल को इस तरफ कहीं ना कहीं दानव की टीम से कहीं ना कहीं फाइट लेते हुए नजर आ रही है. काफी आसान होने वाला है इनके लिए कि वो दानव को आगे जाके नॉक कर दें और फिनिश भी कर दें. Heaven Thakur on the other hand, he's a solo player surviving now. दानव का फिनिश ऑफ भी कहीं ना कहीं जल्दी से निकाल ले, डब्ल्यू कार्ड यूएमपी का प्रयोग करता बेहतर रहेगा और देखते देखते निकाल भी लेंगे. चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है. हेवन अंकुर के लिए स्मोक जरूर लगाया गया उनके तरफ से, शायद गलत नहीं हो तो कोट ब्लेक एंड उनको भी फिनिश ऑफ कर देंगे. सेलेस्टियल की टीम काफी बेहतरीन तरीके से दोनों प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हुए अपनी जगह बनाएगी, अपनी रास्ते पे प्रस्थान करेंगे कि वो जोन के अंदर जाएं एंड काफी अच्छे तरीके से आगे खेलें. ऑन दी अदर स्कॉर्पियो स्कोल स्पेंसर पे यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे और एक सेकंड उनको फिनिश ऑफ भी कर देंगे. ग्रेवेज डिगर की मैं बात ही कर रहा था कि दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड दोस ओपनिंग और यहाँ पे देखते ही देखते किल्स की बौछार देखने को मिले. नॉक्स अभी इट हैजंट टर्न्ड इनटू फिनिश पॉइंट्स, बट यहाँ पे 2 नॉक्स कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले एसके एंड पैराबॉय की तरफ से, जस्ट इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स टू बी प्रिसाइज. चीजें उतनी ज्यादा मैं बोलूं तो फेवर में नहीं होने वाली है अगर मैं मैन एडवांटेज की बात, क्योंकि अगर हम सेकंड मैप पे जाएं दैट वाज अगेन द मैप ऑफ मिरामार, तो उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं खेल पाए थे, बीइंग 3 मैन ओनली. पैराबॉय ऑन द अदर हैंड यहाँ पे नॉक कर दिया गया. देखना चाहूंगा किस तरफ से नॉक किया है. जी क्लच की निगाहें इनकी स्कोप गड़ी हुई है ग्रेवेक्स डिगर की ओर, तो काफी ज्यादा मैं बोलूंगा आसान नहीं होने वाला है कि अगर वो चाहते हैं आगे बढ़ के किल निकालना और नहीं चाहेंगे कि वो ओपन में जाए, अपना पोजीशन दे दे अदर टीम्स को किसी सिर्फ एक किल निकालने के चक्कर में, तो डेफिनेटली उनको ऐसा नहीं करना चाहिए. सिंगल हैंडली सोलो प्लेयर बचे हुए अपनी टीम के लिए व्हीकल का प्रयोग करके जाना चाहेंगे, जितना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, बट उधर जानलेवा गायर गॉड को कहीं ना कहीं नॉक इन फिनिश ऑफ करते हुए हमें सामने से देखने को मिलेंगे. बट भाई पिंग हाई की टीम ऑन दैट है 4 मैन स्क्वाड, दे आर स्टिल सर्वाइविंग, बट कोई भी किल पॉइंट्स, कोई भी फिनिशेस इनके नाम पे अभी भी नहीं है. जानलेवा यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे निंजा क्लच को, डेमी गॉड यहाँ पे करेंगे, जॉर्ड वॉर्ड को खत्म करेंगे. पैराबॉय गेट्स अ रीफ्रैग ओवर द स्कॉर्पियो. आकाश गौड़ा वहाँ पे विशेष को कहीं ना कहीं फिनिश ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं किल फील्ड पे. तो एक्शन काफी ज्यादा ही अब रोमांचक होने वाला है. पतला सा सर्कल, छोटा सा सर्कल आई मस्ट से, एंड 8 टीम्स अभी भी बची हुई है यहाँ पे, 23 प्लेयर्स अलाइव है. लुक एट दैट कॉम्पिटिशन, लुक एट दैट द स्पिरिट कि आप सोलो प्लेयर सर्वाइविंग हो तब भी अपने टीम को पोजिशनल पॉइंट्स दिलवाने के लिए सर्कल में जिंदा हो. दैट ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द वे. केरलावासी बहुत गलत पोजीशन में है, अगर कोई भी उनको स्पॉट करेगा तो काफी आसान तरीके से उनको एलिमिनेट कर सकता है. चीजें उतनी ज्यादा फेवर में नहीं होने वाली लाइक आई सेड केरलावासी के, क्योंकि उनको भी पता है कि लाइक आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे अकेले, एंड ऑल यू हैव टू डू जस्ट वेट एंड वॉच कि किधर से टीम्स यहाँ पे पुश करने का डिसीजन लेती है आपके तरफ, एंड बस आप वेट करो. आप अपना पोजीशन ना दो, आप अपना जो है एक आपकी जो इंटेल सिक्योर्ड है वो आप ऐसे गिव मत करो. बट यहाँ पे एक बंदे को आगे बढ़ के थोड़ा सा लाइक कवर से निकल के, यहाँ पे बंस का उनके पास कवर बना हुआ है, उससे निकल के आगे बढ़ के एक बंदे को नॉक भी किया था. सेलेस्टियल अननोन सोलो सोल्जर को नॉक इन करते हुए नजर आएंगे. आकाश गोरा को नॉन करते अननोन फिनिश ऑफ भी कर देंगे, एक और प्लेयर को फिनिश ऑफ करेंगे. Oh my God, Celestial Unknown going on a rage right now with some really good gunfight action. But Gravex Diggers on the other hand, they're still duo players surviving. देखने वाली बात आती है कि किसके खाते में ये मैप का चिकन डिनर हमें देखने को मिला. Wicked on the other, getting that LMG kill over Devil Tushar. स्कल की भी टीम यहाँ पे जिंदा है. देखिए 7 टीम्स बची है, तो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स वी सी, क्योंकि काफी ओपन है सर्कल, काफी ज्यादा खुले मंच पे आ गया है ये गेम, और जो टीम के पास थोड़ा सा वर्टिकल एडवांटेज रहेगा, थोड़ा सा भी कवर रहेगा, ज्यादा अच्छी यूटिलिटी रिसोर्सेस होंगे,
वो डेफिनेटली अपने गन स्किल का प्रयोग करके मैप पे चिकन डिनर लेके जा सकती है. But let's see. The Yeah. things are not really sure. And I am back, guys. Sorry for the little technical issue, but I'm back in action and Bullet, thank you for the carry. But I think we are down to the top 7 teams, and seems like Team GOAT, I mean Team CE, Celestial is making all the difference over here. Demigod, Janeleva, doing the most major backs over here. Demigod's team, on the other hand, is still struggling a little bit to find cover on GD. Already lost 2 players. Oh, to my surprise, GD doesn't have more finishes, and it is Celestial taking all the reins in their hands. 12 finishes and 4 players are still up and running, all in good condition. Wow. Yep. Mm-hmm. And well, currently, if you ask me the positioning, I think Higher Ground has a better positioning, and Skull's team is still getting a little in an uncomfortable position. But speaking about GD, they are doing fine, and Celestial a very good position. Unknown, although he's a little far away. Kerala Vasi once again the last member alive from his team. Vritra is also alive. On the other hand, Skull's team Goku has been taken down and confirmed. I think Skull's team gets eliminated. On the fifth, on top five, we have GD, Keраlavasi, Vritra, and Celestials Unknown. Celestials Unknown is also still fighting. Kerala Vasi's position has been found out by GD's SK, and I think SK will be keeping an eye out for him till the next circle starts to close, and that's still 50 seconds to go. Kelavasi has to make a quick rotation, but cannot since he does not have any cover apart from the good backs. Yes. GD with only 2 players left. They're trying to push against Celestial, although they should know that the man advantage is more for Celestial. GD SK is tagged down to very low HP. Jan Nilava is trying to push in. But Jan Nilava, will he get the knock? Is my question. JD's SK barely has any HP left. And there you go. GD SK going down. It's Celestial currently, and they currently won the chicken dinner for this map, the map of Miramar. Well, although I'm quite surprised, Gravik Sticker still put on a very good performance at third position, and we have second position of Kerala Vasi. And look at this man, 5 finishes all by himself, gets the team to the second position. Now, this is what I was talking, Bullet. You don't need an entire team to play for the Yep. position points, but you need an entire team to play for the kill points. And Kerala बिल्कुल. Vasi, the man, made it all happen for his team. Second position. लाइक वो अपने टीम के लिए जितना ज़्यादा Hmm. मतलब मैं बोलूँ एफर्ट डाल के जितनी भी ज़्यादा चीज़ें कर सकते थे, जितने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थे उन्होंने कर दिया गया, उनके तरफ से हो गया है. बट अगर एक बंदा सिंगल हैंडेडली गॉड ऑफ वॉर को सेकंड पे ला सकता है, तो सोचो 4 मैन प्लेयर जब वो ऐसा यूनिट बन के खेलेंगे लास्ट मैप पे, तो क्या ही एक्शन देखने को मिलेगा उनके तरफ से. Yes. वेल एक्शन तो अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और आखिरी मैप बचा हुआ है, मैं उसके लिए काफी इंतजार कर रही हूँ. एंड टीम सैड, अनफॉर्चुनेटली देयर परफॉर्मेंस हैज बीन डिक्रीज्ड ड्यू टू द lack of players. But anyway, let's have a look on the brighter side to all the teams are making it to the top Yep. 8. And I really want to know if team, Predators, Solo, and what happened to the 8th, 9th, 10th position teams. On the last, we have Ronic, DS Blackout, Beast, and Polarix team. Let's have a look at the start of matches. We've got Blaziken, 6 finishes once again. Reminds you of Viping High, and we've got Gordon Tushar with the best companion, 2 revives, and the finisher is God E. Blaziken again. He's got 6 highest finishes and the final elimination. I think this man went all in. या एग्जैक्टली लाइक बात करिए अब जितना भी ज़्यादा तारीफ करिए उतनी ज़्यादा कम होने वाली है. ब्लेज़किन हो गए वहाँ पे क्लच हमें देखने को मिला एक प्लेयर से 1v3 सिनारियो में, जिस तरह से दैट वाज केरालावासी ओनली. यस, दैट वाज केरालावासी गोइंग विद दैट क्लच कि जिस तरीके से वो फिनिश ऑफ उनको नहीं मिल पाया क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेशन हो गया था जोन के द्वारा. जोन भी आ रहा था एंड जस्ट वो रोल डाउन कर दिए एक ग्रेनेड स्टेयरकेस के नीचे, और जो क्लच किया उन्होंने दैट वाज रियली कमेंडेबल. दैट इज डेफिनेटली गोइंग इनटू द हाईलाइट रील.
अगर गुड गेम नेशन यहाँ पे डालना चाहेंगी तो बट जिस तरीके से यहाँ पे कुछ टीम्स परफॉर्म कर रही है, आई मस्ट से सेकंड डे से पहले दिन से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। बट वी आर डाउन टू अवर लास्ट मैप एंड ऑफ कोर्स उसके पहले हम छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं। बट व्हाट आर योर प्रेडिक्शन फॉर द लास्ट मैप, एलिका? The last map, I guess, I would pretty much say Celestial and GD, somewhere, from both of them. Although our new team can come up, but let's see. Let's find it out in the last map. Till then, we're taking a short break and we'll be right back.
guys, welcome back to Good Game Nation Challenger Series, and with me it's gonna be definitely Elika. अब एक मैप के लिए तो दूसरी कोई आएगी नहीं और दूसरा कोई जाएगा नहीं. Of course, it's gonna be Elika. But yes, it's gonna be the final map for the day, final map of the Challenger Series, final deciding map कि कौन सी अब teams जो है Invitation Series के लिए qualify करेगी. But उसके पहले we're gonna be taking a look at the scoreboard for all these maps which has happened with these past 2 days. क्योंकि अब काफी ज्यादा क्लियर है कि अगर ये लास्ट मैप पे आप कम बैक नहीं करते हो, it's gonna be now or never and do or die for the situation it is. Yes, well, I'm excited for the scorecard because after the last game, I think major changes must have happened in the scorecard, especially in the 8th, 9th position. I already mentioned it previously before we went on for the break. I'm really excited for the last match. मेरे को एक काम कर दो, आप ना 4th मैप का छोड़ के सीधा 5th मैप के बाद जो scorecard आएगा वो दिखाते हैं ना, so that directly हम jump कर सकते हैं. But since we are still not done with the game. But a huge jump for Team Celestial over at 9th position, 91 points. Devil Souls or Predators 10वीं और 11वीं position में पहुंच चुके, which means I think their chance of going into the invitational just decreased. But don't worry, ladies and gentlemen, we still have one map, and Good Game Nation is going to keep bringing more and more tournaments for students like these. To stay updated, follow us on social. But let's quickly jump to the first 8 teams. क्या changes हुए is my question. I'm pretty sure team SAD and team Gravik Stickers will be pretty much in the same position. I want to see who are in the 8th position, who is in the 7th position, what is the score difference. And okay, team SAD has been pushed down to 3rd position with minor point difference. God or What is definitely God or What at 2nd position. Team Flossie at 4th, Scarlet 5th, Most Wanted at 6th, and Avigarg at 8th, Dark Glory at 7th. And again, not much of points difference between 8th and 9th position. 93 for Avigarg and 92 points for Team Celestial. I think Celestial is making a comeback. After the previous map, I should definitely say that they have to go forward and get just one more game in their favor. And they are in the top 8 bullet. They will get qualified to the Invitational. Of course, like it's pretty easy for the some teams like Skull Most Wanted कि अगर एक chicken dinner निकालते हैं, not that easy, but अगर एक chicken dinner निकालते हैं, अगर double digit का kill points ratio लेके जाते हैं, तो maybe they can make a comeback. But क्योंकि like already top 8 में है, तो they just want to play really safe in the last map, or maybe like टीम्स यहाँ पे पूरा लाइक डू और डाई सिचुएशन में रहे कि हम पूरा ऑल आउट वॉर करेंगे, हम खुद भी क्वालिफाई नहीं होंगे ना दूसरे को क्वालिफाई होने देंगे. ये भी चीज हो सकती है, टू बी रियली फ्रैंक. Yes. Well, I think just few more seconds before we jump into the last game. Yep. Well, don't worry. Just a little mistake that I did it from my side, but don't worry. I guess Bullet doesn't have to listen to me say twice, and I figured that why Bullet was looking so confused and I was confused, so astonished at the same time. I was just thinking about the the strats that the team will play the last map of Erangel. Okay, tell me few of your best hot drop applications in Erangel and Miramar. What do you think are the best, at least in Erangel, since we are gonna end the playoffs with Erangel? I think school, maybe the side of apartments. I will prefer that. Maybe going toward the center of the map, I will prefer personally. But as the talking about the teams, talk about these quality teams which are like preferred location. I'm seeing a lot of movement around Gatka. I'm seeing the movement a lot of toward the side of the shooting range. पहले उधर जाते हैं, but क्योंकि पहला जोन काफी हमारा जल्दी शिफ्ट लेते हुए नजर आ रहा है इस पूरे टूर्नी में, तो then उसके बाद से teams have to like move their like पोजिशनल चेंज आता है, काफी सडन चेंज आता है. तो लूटिंग फेज पे काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका जोन जो है वो सडन शिफ्ट लेता है, तो यू हैव टू थिंक फास्ट, यू हैव टू एक्ट फास्ट टू गेट इन द जोन एंड गेट दोस किल्स. Yes, well, I definitely do agree, but few of my favorite spots in Erangel, I would say, was George Pool, but I don't know. पहले तो इतना ट्रेंड था जॉर्ज पुल का, बट नाउ सर्कल इज ऑल्सो इज लाइक अब जॉर्ज पुल कौन जाता है, मेटा चेंज करो, लेट्स गो टू मिलिट्री बेस और लेट्स गो टू नॉर्थन साइड, लेट्स गो टू गटका. आई थिंक गटका इज वेरी फेमस नाउ. जॉर्ज पुल पे पहले
बहुत सारे टीम्स उतरते थे. Yep. I don't know, has the loot changed in George Pool? I don't think so, right? It's still the same loot, and maybe teams just grew up eventually. They adapted through the game in the updates, and now we are at a different meta situation in Miramar. Although I feel like shooting range is completely fine, graveyard is fine in Miramar, and मिरामर में तो काफी साउथर्न साइड ही सर्कल बनता है, नॉर्थर्न साइड एंड नॉर्थ वेस्टर्न side is completely ignored, I feel, in Miramar. I haven't seen a single circle from yesterday. I think we've casted over 4 maps of Miramar, and I haven't seen one single time also the circle forming over towards the west side. It's just because of the circle. You said in the last sentence, last wordings. It's just because of the circle. Circle उधर नहीं जाएगा तो players why would like take the risk of going far away from the zone कि एकदम मैप के कोने में जाके लूटिंग करें, उसके बाद इतना बड़ा रोटेशन ले ताकि उनके पास चांस हो जाए कि वो कोई उनका रोटेशन कट ऑफ कर दे. तो हाँ, जैसा सर्कल जाएगा वैसा ही कहने के मूवमेंट, वैसा ही पोजिशनल प्लेस यहाँ पे दिखाने पड़ेगा टीम को. Because if you go against the circle will turn on you. Yeah. Well, what I just wanted to mention, what are the key points that you took away from your BGMI casting, or at least few, since we won't get time after the post match. So I just want to ask pre-match, what are a few takeaways? At least, what did you find interesting in BGMI? Tell me that. Compared to all the other battle royal games. They aren't much kind of sudden shift. If you are holding a vertical position, if you are good at that, gun gameplay overall, gun fight, that is more better rather than there are no like अगर मेरे और तुम्हारी टीम के बीच में fight हो रहा है particularly until and unless I get a knock against you or you get a knock against me, even after that there's a very less chance क्योंकि अगर मेरी टीम experience है तो like of course that happens every other BR game, but yeah, they are not kind of that sudden shifts which we see in other BR titles, of course. Yeah, the gameplay is kind of slow paced toward the first circle, but जैसे जैसे shrink होता है, it's mostly dependent on the overall gunfight and overall the positioning of your team. Yep. But overall, I think jitna bhi maine sikha, at least in my eyes of BGMI, I felt like action is very much there in BGMI, and well, the aim also precisely matters, since you can't just spray and pray. You need to have accuracy and precision to what gun you're using, and then Yep. again, every different track has different control, different recoil control, I believe. And pistols Yep. are rarely used. And I was told there was flare gun, but I rarely saw any teams using flare gun. I think maybe once or twice I've seen them using it in the last circle to use the box as a cover, to use the drop box as a cover. Yeah. That IQ was played by BGMI players. Now, this is something I find different from other battle royal games. Apart from that, Yep. same good amount of weapons, although the meta is different. Maps are highly differentiable. We have Erangel and Miramar as only the largest map, then Vikendi, Sanok are very small. Sanok being the smallest map actually in BGMI. Yeah, but let's focus on the side of Triangle because that's gonna be our last Yeah. map for the day, the last map for our series. What do you think? Should the teams go in for the drop clash, do or die situation, Yes. या फिर जो team stop I think they should complete have this fun. This is series the है? last map. Yeah, they should have fun, Yeah, since it's please a please go on. student organized tournament. I think since it's a Student student organized organized tournament, tournament, I mean, student student के लिए organize किया है audience. tournament. Yeah, There are only college yeah. students playing over here. But without any delay, let's jump into the final map of Erangel. I think our production is ready. The teams are ready. The lobby is ready, and hopefully, I'll be seeing the plane flying, cutting the screen into half. But यार बहुत अभी वो खराब हुआ नहीं, टाइमिंग था. हुआ बहुत नहीं, खराब बहुत टाइमिंग खराब था. टाइमिंग. And you took the throw हाँ, away, but not नाइस. like देखो जब मैंने वो बोला पार्ट स्टार्ट किया वो वैसे ही आ पार्ट गया. कट कर लो, बाकी का चला लो. हाँ. स्ट्रीम हो रहा है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है. But anyway, I guess team this time Nigel Path, the lone survivor. Okay, I think teams काफी लड़ चुके हैं, गुस्से हो चुके हैं, and of course it's 10 p.m. and everybody must have already been tired enough. And here they are, Path, the single sole survivor, jumping into the map of Erangel, and the plane path looks pretty eastern side for me. And maybe this very high potential of players taking a drop at Pochinki. Yep.
And as we can see, the plane plaza has gone from the side of Novopronya going towards the side of the middle of between Starman 70. काफी ज्यादा ही मैं बोलूंगा स्पेस ओरिएंट हो चुका है टीम्स को कि जो एक फ्लाइट पाथ है यहाँ पे जो बनी है रैंगल के ऊपर कि आप पूरा एरिया जा सकते हो। हाँ, थोड़ा सा जॉर्जपुर जाने में आपको डिफिकल्ट होगा, क्वेरी जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट यू कैन इजीली गो टुवर्ड्स द साइड ऑफ गटका, यू कैन इजीली गो टुवर्ड्स द साइड ऑफ रून्स, एंड शायद से कुछ टीम्स यहाँ पे रून्स पे जाना डेफिनेटली पसंद करेंगे। Yes, yes. Well, the map is gonna be a little longer this time. I mean, I feel like the last chance is the longest chance that you're gonna have. And I believe that all of the teams are ready. 14 teams in the lobby, total of 47 players, and Parth has to quickly grab guns because there's Sambhav coming in from Aqua's team who is also nearby. So there can be a very early 1v1 fight coming through. He's found a Scarl, and he's found a shotgun helmet. He doesn't have to worry anymore. And the circle is over towards the northern side, covering shooting range in most of the areas. I think we've also got okay. Parth finally gets a shot. I thought Parth was the one who will get taken down, but he finally takes a shot. He also will be getting the confirmation shortly, which means Parth has taken the first bullet. But he definitely has guts bullet because since he's the only player from his team, he still managed to do Yep. that. Like हमने देखा अभी अगर हम केरला वासी की बात करें, he was a lone surviving guy. When you got into a little bit of technical issues, that guy clutched nearly 1v4. Yeah, that was 1v4. One kill got away into the zone. He couldn't secure the other two because yeah, that was also in the zone. He secured only one. So जो बंदा 1v1 कर सकता है तो उसकी टीम को ये देखना चाहिए कि जब वो अकेले इतना एफर्ट लगा रहा है तो लाइक आप भी उसका साथ दो बेसिकली। Yep. वेल फिलहाल के लिए तो पार्थ ने एक अच्छा शुरुआत किया हुआ, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है. लेट्स सी हाउ फार इज गोना गो. बट ऑन द अदर हैंड Isazi is getting beaten by Team Sad Ishan. One of the player is already down, but the backup is going to be arriving, which means Team Sad Ishan has to be very careful. How many players are left? There's only 2 players left from Isazi's team. Yep. Okay, one of them is already been killed. So that is now waiting. Vishesh is walking over to the dead bodies. I think they are trying to spot Isazi's team. We've got Amir and his teammate, both of them regroup eventually. It's a 3v2 situation, so I believe Team 11 has a better advantage unless, Team 6 is trying to isolate every player, play some brain game. या ब्रेन गेम का तो पता नहीं, बट डेफिनेटली एक नॉक इन उनके अगेंस्ट आ चुका है. फिनिश ऑफ भी हमें देखने को मिला है. ऑलरेडी एक उनका बंदा पीछे भी नॉक इन पड़ा हुआ है. डेफिनेटली इज गोना बी द लोन प्लेयर सर्वाइविंग फ्रॉम द साइड ऑफ टीम नंबर 6. बट ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ डार्क ग्लोरी यहाँ पे कर पाए, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जस्ट नॉट इनटू द टॉप 8 एंड आप ऐसे ही आके अब एलिमिनेट हो चुके हो. तो इट्स टाइम टू से गुड बाय फॉर यू इन दिस टूर्नामेंट. Yes. And the fight begins between Scorpio, but I think Scorpio ने थोड़ा जल्दी ही spray कर दिया है. Devil Tushar immediately got the cover, but not only the cover, but also the backup of his teammates. So if they want to go for a fight, yes, they can. But again, they're on a man disadvantage. Scorpio has a 4-man team currently. And it was actually a good way to give warning off. So even now, even if they want to rotate, they'll use very safe ways. On the other hand, Vishesh gets that confirmation on to Sudit, which pretty much tells us the team number has left with only 2 players, and Skull's team just scared away team number 10, taking the entire area to themselves. 0 finishes, but Devil Tushar's team is doing great. Oh wait, didn't he get a confirmation? But no, I think it That was was some other Tushar. yeah, it was the Golden other. Tushar. Yep. So many Tushars, yeah. नो माइंड. सो गाइस प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस यही है कि जोन जो है हमारा थोड़ा सा शिफ्ट करना अब स्टार्ट हो चुका है. जो टीम्स जो भी डेफिनेटली बाहर होने वाली है सेफ जोन के, दे हैव टू लाइक रियली मूव इन, गेट दोस लूट्स एंड स्टार्ट द फाइट. क्योंकि teams like Gravedigger, teams like a Flossy, teams like Sad, they have already marked their position with securing 100 plus points. कोशिश यही करनी चाहिए उनको कि ना फाइट लें,
rather than goes for those bottom 8 teams. आप उनसे ट्राई करो फाइट लेने का, उन पे इंटेल बनाओ और फिर उनको सप्रेस करो, because that is the brainy gameplay that you can do. If you go to challenge Gravex Digger, if you're gonna challenge someone from God of War, you're gonna suppress nonetheless. That's gonna be vice versa for you. So it's better to challenge the weaker teams in this lobby rather than going for the Titans. Yes. Well, I don't know. I don't find anything interesting certainly about these fights. They seem pretty normal, but I do want to end the note with a very good, interesting clutch coming in from any one of the players. Well, let's see if my dream will come true or not. But Scorpio is trying to look a shot onto its Devil Tushar set. Devil Tushar को भी इतना confidence खुले में से कूदना नहीं चाहिए उसे. Oh, dekho. That is just the literal meaning of it. But I think he's just trying to distract the enemies. If they get, if even if he gets shot, his teammates will immediately take the cover. He has his entire team behind him. There's nothing to worry about. Team number 14, on the other hand, taking a lot of damage. Chirag OP. Jordan what gets knocked on the other hand. But will they get the confirmation? Is my question. But despite of that, SK definitely goes down, which means Gravex Diggers are in huge trouble. SK with very low HP, Cartel is trying to cover him up. It is Team CSR, Jod or what? Who are currently inside the smoke trying to make this work. Do you think that they can make this work? SK is already down. It's an MVP, Paraboy, and Cartel. There's no godly here. यहाँ पे आएंगे गॉडेस कार्ड, यहाँ पे ड्रॉप शॉट का प्रयोग, दोनों एक दूसरे को नॉक करेंगे। अगर मैं गलत नहीं तो इट्स गोना बी ट्रेड, नो इट्स गोना बी द साइड ऑफ टीम एमवी जोन पे चार्ज अप करके किल कंफर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। बट चिरागो पे भी उस तरफ किस तरफ वहां पे फाइट लेते नजर आ रहे हैं, सामने ही एक्चुअली फाइट लेते नजर आ रहे हैं। स्मोक का प्रयोग किया गया, व्हीकल सेंट्री जरूर मारने की कोशिश रहेगी, उनके निकलेंगे बट ज्यादा damage nahi deal karenge. Neon MVP taking that 1v3 in his hand, saving every inch of his team. Gravex Digger proving yet again why they are the titans of this lobby. Ah, it is GD. A beautiful clutch. As I told you, इतना मजेदार नहीं लग रहा था, but इसने मजेदार जरूर बना दिया हमारे लिए. A crazy game coming in through. Although we're gonna enter into the next circle. Currently, I think it will close down to Stalber or shooting range. Not Kamishki, though it's already out. So there are very good chances it can be school or yes, a school or shooting range. But keeping that aside, team number 16, let's have a look at them. All 4 players up and running, all in one piece. We're down to the last 11 teams. Although these team 16 have to go for a long journey. I think they are currently rotating from military base to Pochinki, and they have to go all the way to the north side. Now that is a very big journey. I think distant travel would definitely count for them. They have to get the need for speed, my friend. Anyways, that was a lame joke, and Elika didn't responded, so I will take that as she is laughing right now with his mic mute. No, don't cover it up now. Of course, there's a a very big rotate coming in from their side, क्योंकि zone के आप safe zone में जाने की पूरी कोशिश कर रहे हो. Almost पहुंच चुके हैं most wanted की team, and Vortex is already here. देखिए, like I'm never in the favor of कि आप solo किसी तरफ जा रहे हो, आपके 2 players किसी और तरफ जा रहे हैं. ये थोड़ा सा मैं बोलूँ तो मेरे पर्सपेक्टिव से गलत होता है। हाँ, माना ये यहाँ पे टीम्स उतनी ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, टीम्स उतनी ज़्यादा मैं बोलूँ एक स्किल गैप नहीं है टीम्स के बीच में, बट स्टिल प्ले एज अ यूनिट, प्ले गेट दोस कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, गेट दोस एक्सेप्शनल प्लेस, जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आप एक्सेप्शनल प्लेस दिखाओ, अपने लिए एक नाम बनाओ, rather than just lurking here and there going for those single and dual kills. Yes. Well, what matters more than single duel kill is able to take down an entire squad, which merely seems possible for us at this moment. But let's see. Are there any fights happening? Nope. Not anything interesting though. But Skull Flank gets spotted out in the open using a vehicle. Not much damage can be done for him. Let's have a look over this position. Ragnar getting damaged. Scorpio is also getting damaged. Devil the Shard from a distance is trying to take shots, and it's definitely working. And there are the last 2 players of GD also just below team number 10.
Although we have enough time to go, 49 seconds until the next circle starts to close in. And I believe with 11 teams, we're going to go a long way, at least till the very last circle. 35 players alive, 11 teams. Devil Tushas is down. I think he'll be back on his feet before he even realizes. Bind OP, on the other hand, spots out Vishesh, who's going out all alone in the open. Gets spotted out, goes out for the fight, gets the knock. Will he get the confirmation? I pretty much believe Doom. And Skull Flank, on the other hand, is trying to go for the backup, give the backup. We know the OP is down and he is out of the server. Sam, OP, and Flank are the only two players left for their team. Flank has spotted out Amir and Vishesh, both of them sprays at them. Vishesh although takes some damage, but Amir does not. A beautiful grenade coming into the play, but will it affect? Will it knock the players? Is my question. Yup, it does some damage, but not good enough. Another nade coming in through. Any damage? Nope. Still the same. Vishesh could have almost got knocked out, but the cover seems to be way too good for them at this point. Skull has two players. Team Vishesh has three players apparently. And BTC Spider, on the other hand, getting pushed, got shot. A beautiful knock and a confirmation will be coming in through Team Sadishan. He's gonna spot flank out, I guess, within no time. Okay, Team Sadishan in turn gets spotted out. Now this is gonna be a little tough. Will they be able to do it? He's trying to push to the smoke. He finds out Team Sadishan again. Doesn't find the rest of the two players, but he gets the backstab. Flank gets taken down. Vishesh and his teammate to build too much damage. The last man to be standing from Team Skull is going to be Sam OP, team number 9. Vishesh, although on the other hand, is also down with very less HP. 3 players for team number 11. They are trying their level best to keep the game. But let's see what happens until the next circle closes in. 31 players alive and 10 teams. Okay, that is a lot of players. Although, as the group has regrouped and Team Vishesh was just waiting for the last player, Sam OP, to show up, and Sam OP reveals his position away in the nearest compounds. But can he get away from the eyes of team number 11? Can he rotate off? Is my question. Team SAT, they already have 5 finishes to their name, which means they're currently in the top second. Or maybe if they can outplay, they might also even cross team Gravik stickers, but you need 100 plus points. There's a 100-point difference between the first and second position. So I am definitely not gonna be giving you false hopes. So you have to fix it that Gravik stickers is in first position, and we have Team Sad in the second position. Although Gravik stickers have been doing great, they've had a great start as well. They have 4 finishes to their names. Prabal, on the other बिल्कुल. hand, takes GD's Startle down, which means Gravik stickers are in a trouble, and they comes Team Sarishan making back-to-back finishes. Just a 3-man, just a trio, trying to make it all happen. 6 finishes and going for more. Yep, and they're just not looking in. But what I just saw, GraveX going to get eliminated. Oh my god, now there's going to be a change of pace coming right up. And if we talk about goal to Sharti, make लंबी rotation उनके तरफ से हमें देखने को मिले toward the side of BR Skull. BR Skull is not one of the teams that कि आप ऐसे सामने से जाके उनको challenge off कर सकते हो. जतिन अब rotate करने की कोशिश रही, क्रिट के पीछे जाने की कोशिश रही, केलावासी अपने साथ ग्रुप अप करना चाहेंगे अपने टीम के साथ, बट प्रॉब्लम ये होने वाली कि साउंड क्यों मिल चुका है यहाँ पे BR Skull को, स्कल की टीम को, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम डेफिनेटली रहने वाला है कि अगर वो चार्ज अप करके इनके पे आके पुश करते हैं तन्वी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. बट उस तरह प्रबल ने ऑलरेडी वहां पे धावा बोल चुके थे, दिल तुषार को वहां पे नॉक कर दिया है. अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके पास वर्टिकल एडवांटेज है, तो ये किस तरह का शॉट लिया गया उनकी तरफ से जरूर देखना चाहूंगा मैं. Yeah. Well, Kerala Vasi, last time he made it to top all alone by himself with 5 finishes. So yeah, this man definitely can carry his entire team. Let's see if we can do that in this map as well. But before we go any further, these are the last 8 teams. These Yep. are the last 8 teams in the map of Rankin.
And look, they're so close to each other. We've got B2K Skull's team, we've got Dave's team, that is team number 10 over to the left side, and team number 4 on the very northern side, and one team player of team number 5, that is TR Jatin's team, over to the bottom. So many teams in just one area. When the circles start to close in, what kind of chaos will be happening? Imagine that. Definitely a lot of that, man. Definitely a lot of that like इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वी एस कास्टर्स वी वोंट बी नोइंग दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इज गोइंग ऑन, कौन किसको Yeah. मार रहा है, किधर नेट जा रहा है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आने वाला है एंड सर्कल में, खासकर ये क्योंकि पूरे सीरीज का लास्ट मैप है. Yeah. Look at Biping high now. Although he has his two of his teammates right now and two finishes in their hands. He's looking for enemies, but I don't think he'll be finding anyone. He got Kerala Vasi on the other hand, gets spotted out by Blaze again, who had the most number of finishes, and the last final elimination walks into the wrong trap. Oh, not yet actually. He still can get away with it, and he definitely gets away with it successfully. Team Celestial, the only opportunity they had to get few kills. Now they've lost lost it. They only have one finish to the hands. But top 8. There's also another player going up, but I guess Celestial is not gonna shoot at them. You know, ammo is I think much better than firing a moving vehicle. एग्जैक्टली यू हैव टू लाइक सेव योर रिसोर्सेज, क्योंकि आप सर्कल देखें तो बिल्कुल टीम्स के फेवर में नहीं है. सारी कोई भी टीम मैंशन के उस ओपन एरिया में नहीं है, जो जस्ट उनके मैंशन के राइट हैंड साइड में हमारे है. एक भी मतलब लाइक कोई भी एक टीम नहीं, तो जो जाते जाते फाइट होने वाली है वो शायद वेहिकल पे हमें देखने को मिल रहा है. आमिना प्लास्टिक और बढ़िया स्प्रे जाएगा, उनको नॉक भी कर दिया जाएगा बेहतरीन डीपी की तरफ से. वो एक जो सिंगल लाइक आखिरी का बुलेट रहता है दरवाजे एक और प्लास्टिक के ऊपर कंफर्म कर लेंगे. केरला वासी ऑन द हैंड काफी मैं बोलूंगा अग्रेसिव एक नेचर में खेलते हुए नजर आ रही है टीम. मैंने बोला था केरला वासी सिंगल हैंडली अपनी टीम को सेकंड पोजीशन में लाए थे तीसरे मैप पे, तो सोचिए एज अ यूनिट बन के खेलेंगे तो कैसा हमें एक्शन देखने को मिला. टीम सैड ईशान के भी प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर देंगे गॉडल तुषार, एंड देखते देखते दो बेहतरीन फिनिशर्स केरला वासी की टीम के नाम हो चुका है. Yes. Well, अभी आगे जाके और देखेंगे तो पता नहीं कितने कितने एक्साइटिंग फाइट्स हमको देखने मिलेंगे. ऑल द लास्ट मैप है इसलिए एवरी टीम इज एटलीस्ट ट्राइंग टू सरप्राइज अस, आई शुड से. आई मीन इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी गेम प्ले नहीं देख सकते, बट समथिंग बेटर देन व्हाट वी सॉ इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द प्लेऑफ्स. इम्प्रूवमेंट तो पाके काफी हुआ है आई फील. डू यू एग्री विद मी बुलेट? कल से आज का गेम कितना इम्प्रूव हुआ लग रहा है मुझे प्लेयर्स का. यस यस द ओवरऑल पोजीशन, द ओवरऑल लाइक कब कल कोई जी ग्रेव डिगर को जाके चैलेंजिंग कर रहा था, एंड देयर यू हैव लाइक डेफिनेटली 200 प्लस पॉइंट्स हैं, बट कल तो उनको डेफिनेटली कोई जाके चैलेंज ही नहीं कर रहा था. ऐसा लग रहा था कि उनका एक खौफ, एक उनका डर बना हुआ है कि अगर हम इस टीम से चैलेंज करेंगे फाइट लेना तो विल एंड अप रिजल्टिंग एंड गेटिंग एलिमिनेटेड. तो हाँ, चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई है एंड डेफिनेटली लाइक आप आज अपने पहले लाइक बहुत सारे यहाँ पे टीम्स जो अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे हो, जब आप पहले टूर्नामेंट में इतना अच्छा खेल रहे हो तो डेफिनेटली व्हेन यू प्ले मोर ऑफ दीज टूर्नामेंट्स, मोर ऑफ दीज स्क्रिम्स, मोर ऑफ दीज जीजी नेशन ऐसे अच्छे टूर्नामेंट चल रहा है जहाँ पे न्यू टैलेंट्स को, यंग टैलेंट्स को अपने अपने एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का. तो या दे विल इवेंचुअली गेट मोर बेटर फॉर श्योर. Yes, definitely seems like Mick, on the other hand, is not having a very good day. Can't do much since he'll be getting taken down by Gabbar and will eventually get confirmed. B2K Skull also goes down on the other hand, putting it down to the top 6 teams with 17 players alive. Team Celestial still 4-man standing. Vritra, Vortex, and Ryzen Bot are also together playing nearby. No threats for them from Team Celestial. Although if Celestial wants to rotate, they have to take the longer way because they need to eliminate team number 16 if they want to take the short way, right? And I don't think Yeah. it's a very good idea for them to initiate a fight against team number 16, that is Vortex team. Oops, on the other hand, Ami gets spotted out. Vishish is the only one alive from his team, and I think Vishish will also be slowly getting spotted out. Who's on the other side? When they are traveling to a car, why can't they both be just using one vehicle instead of two different, so that the backup is also nearby? At least if what the opponents are trying to kill one of your teammates, the other one could help.
Because तरीका it's a very common sense वाली बात. अगर दो players दो अलग like you know दो अलग vehicles में रहेंगे तो अगर एक vehicle को ये opponent बंदा destroy कर देता, then you have the time for the other guy to थोड़ा सोच पाए कि हुआ क्या और फिर retaliate कर पाए, come back कर पाए उस position पे. Anyway, coming back to the game, Vishish, the last man standing for his team, is in a big trouble, but Viping Hyena does not bother about his troubles. He's gonna push on towards Godly Tushar. He's gonna take him down. The confirmation comes in, and somebody's attacking on towards Team Celestial, the only 4-man team standing right now. Kerala Vasi also goes down. The last person, Vishish, also goes down, leaving it team number 16 for a clear way to rotate. But neither did team number 16 know that, it's gonna be Team Celestial in their opponents. It's the top 4. The last 4 teams, and look at the circle, how small it has formed. And there's currently no team inside the circle. Yep, like Circle is taking a very unusual shift in the last map for sure. Circle भी चाहता है हमें बेहतरीन gun gameplay देखने को मिले, but Viping आई की एक team, yeah, just not stopping, just not like they are not into like आज हम 10 finish निकालेंगे इस आखिरी मैप पे. It's like a do or die situation for them, and वैसा ही हमें प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है. बात करें उधर टीम सेलेस्टियल की तो yep, they can still have the look just a little bit of chance. बट प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी करने वाली है 2 टीम. या तो एक कमांडर टीम, एंड यहाँ पे देखिए सेलेस्टियल असॉल्ट करते नजर आ रही है मोस्ट वांटेड को. एक बंदे को नॉक भी किया गया है, स्मोक लगा के अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश रही है, बट वोर्टेक्स के पास ज्यादा कवर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वजीर के वो इस असॉल्ट राइफल के रेट से बच पाएंगे. Yeah. Well, I guess we are in the last 1 minute of the action. Direct fight coming in from Vortex team and Celestial's team. After the performance coming in from Celestial's team in the previous game, I want them to get the final chicken dinner of the day. Let's see if they can potentially do it or not. Wazir trying to make his way, moving forward. Only 2 players left, Wazir and his teammate. It is a man disadvantage, although there's still one more player of 10 team alive. Actually, 2 players, Victory Alish, who just got taken down. Oops, I take his name and it's down. There's Akash Gowda, RGE, and Team Celestial. Can Celestial do something? Blaziken is still... as long as Blaziken is there, I think it's gonna be very hard for Team Celestial to move forward. Like Celestial have been like हर मैप पे एक similar kind of event देखने को मिल रहा है, तो I guess this could be the map जहाँ पे बेहतरीन फिनिशेस के साथ वो पोजिशनल पॉइंट्स भी लेके जाएं. कुक्स जगह शायद Viping पे अच्छे तरीके से कनेक्ट हो, स्मोक लगाया है, अपने आप को बचाने की कोशिश रहेगी, नहीं कनेक्ट होगा, बचेंगे बार बार. पीछे से आकाश गोवड़ा भी उनको फ्लैंक करने के लिए आने वाले हैं, तो अगर साउंड क्यू नहीं मिला है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है सीई के लिए, दोनों प्लेयर्स के लिए. एंड आई डोंट थिंक सो कि Viping हाई है कि जो उनके पास वर्टिकल एडवांटेज है उसको छोड़ के ये दोनों प्लेयर्स जो भी बचे हुए हैं उन पे आने वाले हैं. तीनों players actually. Yes, and I guess we are in the last circle and the last minute way. RGE, they're gonna be fighting off against Wazir and Blaziken teams, and there you go. कभी कैसे कि मैंने बोला है कि कभी कभी ड्रॉप को बुलाते हैं लास्ट सेकंड में फ्लेयर गन से, just to take the hide, just to seek cover from it and not to actually get something. I mean, आखिरी मोमेंट में आप स्नाइपर थोड़ी यूज करोगे, AWM and stuff, but anyway, coming back, it's gonna be still 3 teams hai. There's a heavy advantage for Viping in our team. Celestial is basically the center of attraction, the patty in the burger right now. If Akash Gowda chooses to push, they are in huge trouble. But if they can take Akash Gowda before Akash Gowda even spots them out, then it's a win-win for them. Viping it's down to very low HP, but it's Team Celestial who are currently inside the circle. I believe Blitzkrieg gets spotted out, gets confirmed. Akash Gowda is still playing it safe. There are only 2 teams, Akash Gowda's team versus RG with 2 players alive, I believe, and Viping Hyena as well. What do you think? Is it going to be a 1v2 situation? I mean, Rebel Luke just got spotted out. Akash gave his position. Yep.
And the Oh, match has ended. There you go, Prabal Noob Gate taking that victory, the last victory from the side of Hyping Higher. मतलब ये टीम आप like हर मैच पे कोशिश कर रही थी, like हर मैच पे चिकन डिनर से 10%, कभी 20%, कभी 30% की वजह से चूकते हुए नजर आ रहे थे. But finally, this team has proven their potential with 11 crucial finish points and a बेहतरीन chicken dinner coming their way. Should I say a very good one coming in their way. थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स कर देता हूँ, क्या करूँ, इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है मेरी अलिका जैसी. yes, a very good day, a very good match coming in from Team RGE, Prabal Noob, Piping Ayana, Gupper, and the last person. 11 finishes, 5 finishes coming in from Prabal, 5 finishes coming in from Piping Ayana. Great efforts being put into on the second. We have Victory Eilish, Akash Gowda, Devil Tushar. So on the third, we have Team Celestial, and I think Celestial already made their way into the top 8. I have a very strong feeling. What do you think? I guess I also think so. Like Devil Tushar ki team, Akash Gowda ki team X solo, and here if you talk about like Celestial, they've made their way to the top 8. But until unless we take out the overall scoreboard, like I just want to keep my fingers crossed. Yes. Well, I guess this is it. Let's have a look at the star of the match. We've got RGE Prabal Noob. It's the going all out with 5 finishes and also the finisher, the final elimination. We've got Victory Halish to be the best companion. A nice try coming, I should definitely say. And look at RG's the amount of distance they've traveled, 7,384. Well, that was the next highest we have. And that is it, gentlemen. We have the last chicken dinner of the game, and that goes to Prabal Noob's team. But Yep. we still have the scorecard. And before we switched on to the scorecard, let's wrap up and talk about what has been happening since yesterday. What Yep. what is the one thing or few things we noticed that has drastically changed from yesterday to today? I think the speed was changed. Yesterday it was slow paced gameplay. All the Yep. teams were taking their time to at least even come out of the compounds and take the fight. But today I've seen every team go ahead, take the fight, build up their strength, firepower. Especially, I think they went all in today. All the teams went all in today. Except for the few ones, like if you talk about teams like Devil Source, DX Scott की team आज कहीं में play में देखने को ही नहीं मिले. They're dropping 3-2 guys and then getting eliminated from some other teams. They have some, the bottom 2 teams or the 3 teams. They really need to work on their coordination. They really need to work on their game if they want to pursue the game professionally. But like I said, कि यहाँ पे कुछ teams like इस पूरे tournament कराने का, इस पूरे series कराने का यही मकसद रहता है कि of course they are gonna get to the invitational series, but कि जो नए टैलेंट से उनको एक मौका मिले वो अपने आप को प्रूव कर पाए. तो आई गेस दैट मिशन हैज बीन प्रूव्ड एंड मिशन हैज बीन सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप की 2-3 टीम्स है वो काफी एक्सेप्शनल प्लेज उनकी तरफ से देखने को मिले अगेंस्ट होल ऑफ द ब्रैकेट, होल ऑफ द लॉबी. अभी तो काफी टाइम लगेगा बिफोर वी गो डाउन टू द स्कोर कार्ड. एनी प्रेडिक्शंस ऑन टॉप 5? पहले तो ग्रेविक्स टिगर्स होगा, सेकंड पे तो टीम सैड होगा, थर्ड पे आई गेस टीम गॉर्डन. No, that's not going to be team sad. I'm really sorry, I'm not going for team sad. So you say that team You team tell sad is your- going to be third position. Okay. Let's guys, let's do one thing. Let's take a break. आप भी सोच के हम भी सोच के आते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. Guys, we'll take a short break and we'll be right back. छोटे से ब्रेक के बाद. Peace.
Welcome back, ladies and gentlemen. GGNation presents you the challenge, Yep. the Challenger Series, and we are finally done with the playoffs. And we are in the last resort where we'll reveal you the scorecard. But उसके लिए तुम्हें wait करना पड़ेगा. इतना जल्दी नहीं है. But although we were speaking about the first three positions, I was expecting Gravik Sticker's team, Sad and God of What, along with few other teams. But it's us who really will find out, I guess, that who are going to be the top 8 teams moving forward to the invitation. And of course, I believe that Bullet here is going to reveal it to us. What do you want me to reveal? Reveal the scorecard, waiting for your call because it works very No. well. The timing is just very well. No, we haven't. We don't have the exact time with the scorecard. Before we get to the scorecard, like I want to ask, क्या like आपके क्या expectations थे from these college teams and क्या like आपको मजा आया इनका gameplay देख के? अली का मैम बताइए हमें. Yep. Well, I guess we have to wait a little longer, but don't worry. Yep. Bullet, although meanwhile, I just want to give out a very good, information to all of the audience sitting out there that GG Nation is actually focusing on student-based tournaments where they go to university level tournaments, we have college tournaments, and right now all the players which you've seen playing are a part of a college or a university right now. So this is a very good platform for all the students to showcase their talents and a very good opportunity for them to grow in esports, get premature experience of how it is actually to be there, and how it feels to be there on the ground, how it feels to be there on the server, taking those fights, making it to top. And I believe that all these players have also carried out at least few experiences with them. They might have learned, adapted their gameplay, the way they have to look after through handle pressure. That is one of the important things I would like to mention, because students बस पढ़ाई में भी नहीं, whoever is trying to grow more into esports, they need to understand how to handle the pressure of game and their mental health along with their teammates behavior. I think that plays a huge role. In short, I just want to say that GG Nation is a great platform for all the students to showcase their talents. You can go ahead, follow them on Instagram for more and more updates, for more and more tournaments. This is just BGMI. They will be Valorant and other games coming up soon. So the links are mentioned, not links, but the details are mentioned on the bottom right corner below Bullet. And we have Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn. You can go ahead and follow them. And you also can follow us. That is Bullet the Crazy Gamer on Instagram. This is Tanvi Jasmine FTW on Instagram actually. So you can go ahead and find us on. And also go ahead spam which team do you think is gonna be in the top 5. Go ahead and spam it in the chat if you know. Or also Tell me your prediction. Tell me your one bet, prediction. Bullet. One Wait. bet. Do you think Team Celestial qualified? No. In the top Are you 8, sure? sorry. We are talking about top 8. Yeah, they have qualified. It's top 8. Extremely sorry, they are qualified. I just suddenly came in my mind some other format right A now. clear example of noticing that Bullet का mathematics काफी weak है. हाँ, मेरा mathematics weak है थोड़ा सा तो. What's new about Oh, it? by the way, I'll be even my maths is like super weak. I haven't studied maths in my 11th and 12th, but since I am a business student, मुझे जबरदस्ती सिखाया गया है, You are a although I don't business understand student. anything. She's saying she's a business student, but she's weak at maths. ठीक है भाई. Yes, I haven't studied maths. I have like statistics and stuff, but they are pretty tough. मैं तो बस रट्टा मार के जाती हूँ. Mathematics भी रट्टा मारने का talent है मेरे में. Nobody has that talent though. Also, so top We 3 we- तो we मैंने were बता talking about दिया the है. top 5. Celestial, like the top 8. We were talking about top 8 teams which are going to get qualified for the Invitational Series. So definitely Celestial is qualified. But yeah, tell me your top 5 teams and name those top 5 teams which you think gonna be in that in top 5. Well, I told you, Grave Executor's Team Sad, God of War, and after that, I just go blank. 3. He's like literally counting. You've got 3 teams. Okay, maybe Team Celestial in 8th position, and नीचे से reveal करते हैं हम. 7th position में अभी हो सकते हैं, अभी का team, but not sure.
7 अभी position का में हो सकता है या ओके yes, don't know the full name. That's amazingly short form. Abhi. ठीक I है think they अब might be ninth position. I don't think they अब got qualified. अभी आप इशारे समझ जाओ बट नेवर माइंड जोक्स असाइड if like for my prediction I'm gonna just go it because Elikar मेरे से पूछने वाली है it's gonna be Gravex Tigers, it's gonna be Team Flossy, it's gonna be God of What, it's gonna be the Team Skull, and it's gonna be Team Celestials in the top 5 Yes. is my predictions. This can go wrong by the way guys. This is not something like I have like rigged this whole tournament. मेरे को इंस्टा पे मत बोलने आ जाना. It's just completely my prediction, random prediction. थोड़ा बहुत calculated. 19-20 का फर्क. Yeah. Well, abhi bhi thoda time bacha hai. I guess we are gonna make you wait for a little longer. But meanwhile, you can go ahead, type in the chat which team do you think is gonna win it. And although we Yep. don't have much teams, speaking about it, I've got Celestial. I mean, Celestial बोल के लिखा है Priyanshu, Barthola, and Wazir Gaming. I think Wazir is also a player of Celestial, if I'm Wazir not of wrong, Celestial. right? Yeah, Wazir is from Celestial. Yeah, even I forgot the name. Okay, but yeah, Wazir is also a part of Celestial, if I'm not wrong. Just Yep. one more minute until we go around with the scorecard. And anything you want to add on to that? Overall, this tournament experience, how has it been for you? Your first time in BGMI? Who told me it's my first time in BGMI? At least officially. I mean, I saw your Instagram story. That's how I got to know. Somebody's stalking me, la. No mind. Jokes aside, guys. The thing is, like, we have the scorecard ready, and the scorecard will be on your screen anytime soon. Now, Wavex stickers with that 270 total points. God Award with that 167 points. Team Sad at 143 points. Team Flossy with 130 points. Team Celestial with 123 points. I only missed out Skull, so my prediction was right. There you go. Oh, yes, there we are. First is Gravix Stickers, second God of War, third Team Sad, fourth Team Flossy, Abhi Garg is also there, Team X Solo, and Skull. And Celestial, wait, what a jump! They were in 9th position. How Ninth did position they when manage the third to... map ended. That's all because of the balance between the position points and the kill points. Finish points, sorry. And I am Finish it. personally impressed by Team Celestial making it to 5th position. Team Skull Didi and impress हो its, गई. Just joking. yes, yes. Solo also made it, and successfully all the 8 teams have reached the mark of 100. Yeah, ऐसे हम yeah, भगवान yeah. के मंदिर जाते हैं ना, ऐसे चेन से डालना होता है 101, ऐसे स्कल ने भी एकदम प्रॉपर 100 प्लस पॉइंट्स 101. हम ना Yeah, कभी 100 रुपए का 101. नोट नहीं डालते, 101 डालते हैं. हाँ, तो वो एक छोटा सा एग्जांपल आई यूज्ड. बट कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दिस टीम्स, टीम एक्स सोलो, स्कल, Yep. अविगर, सेलेस्टियल, फ्लॉसी, टीम एक्स, Team Sad, God of What, and Gravix Stickers. Although, huge congratulations to Gravix Stickers to win the entire playoff on the top with 100 points 100 difference. massive. That is a massive thing. And if we take a look at the the bottom 8 teams, I'm not gonna use the word bottom 8. जो teams qualify नहीं कर पाए, unfortunately, दो teams कहीं ना कहीं play ही नहीं खेली. But talking about the most wanted, 70 positional points, finish off at 99 पे, तो just 2 points से miss out कर गए. Okay, just 2, like 110, like कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, 2 पॉइंट से मिस आउट, लाइक कोई बात नहीं. आप इस टूर्नामेंट में ऐसे आप इतनी चीज सीख के जाओगे कि आप प्रेशर हैंडल कैसे करते हो, आप कॉम्पिटिटिव लॉबीज में कैसे पुश करते हो, आप किस तरह से बेसिकली एंड सर्कल में जो एक प्रेशर बनता है उसको कैसे हैंडल करते हो. तो कोई बात नहीं. ड्रैग ग्लोरी विद दैट 63 पोजिशनल पॉइंट्स, फिनिश ऑफ विद 29 पॉइंट्स एंड ओवरऑल पॉइंट्स ऑफ 22. उसके बाद हम देखें तो डेविल सोल विद 73, प्रेडेटर्स विद 62, टीम आरओजी XF4 जो काफी अच्छे प्लेस निकाल रही थी बट सक्सेसफुल नहीं रहे उस चीज में, 39, फायर ब्लेडर्स सेम थिंग, सेम सिनेरियो, बट स्कोर कार्ड में उतने तरीके से अच्छे तरीके से अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, एंड दैट मेक्स एन ओवर ऑफ 37 पॉइंट्स. ह्यूज कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दीस टीम्स हु हैव बीन क्वालिफाइड, एंड ऑफ कोर्स लाइक जो टीम्स यहाँ से हार अब लाइक क्वालिफाई नहीं करके जा रही है, लाइक प्रैक्टिस बेटर, गेम को ज्यादा जितना आप समझ सकते हैं समझिए, गेम की नॉलेज बढ़ाइए. द मोर यू प्ले द मोर यू गेट बेटर, द मोर यू गेट प्रैक्टिस द मोर यू गेट बेटर. And I guess with that we come to the end of the playoffs of Good Game Nation's Challenger Series. Although we still have the invitational phase, all these 8 teams are gonna move forward into the invitational series.
which you guys have to look forward, which means you have to follow us on our Instagram. And I guess this is it. This is me and Bullet. We are going to be signing off for today. Hopefully, we see you in the invitationals. Till then, tata, bye bye, good night. Thank you so much.